Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, please take your seats as the Youth 20 Consultation Summit is about to start. Good morning, everyone. I request everyone to please be seated. On behalf of Professor Abhay Karandikar, Director, IIT Kanpur, Y20 Summit Committee, and the entire institute community, I, Shweta Kumar, your host for today, would like to welcome you all for this motivating, exciting, and inspiring event called U20 Consultation Summit that is gaining momentum all across the nation and among the youth. It's a platform for young people to come together, share their ideas, and shape the future of our nation. Y20 is inspired by G20, which brings together the world economies. For India, G20 presidency also marks the beginning of Amrit Kal, the 25-year period beginning from the 75th anniversary of its independence on 15th August 2022. India is playing a significant role in finding workable solutions at the international level with the idea of Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. It's a testament to the power of the youth and the importance of their involvement in shaping the future. So let's give a big round of applause for the Y20, the Ministry of Youth Affairs, and the young leaders who are making a difference. Thank you. I now humbly request our chief guest, Dr. Rajshekharji, along with Professor Abhay Karandikar, Professor S. Ganesh, Professor Anna Bhattacharya, and Professor Samir Khandekar to please come forward for the ceremonial lighting of lamp, which symbolizes knowledge and wisdom. करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. At the commencement of any auspicious occasion, Jyoti has been observed as a symbol of life and hope, dispelling all darkness and replacing it with energy, vivacity, and optimism. Another beautiful custom that we have in India is to invoke Ma Saraswati, goddess of learning. I call upon Mr. Pathak to kindly come up on stage and recite the Vandana. वरदे वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे
काट अंध उर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे. Thank you, Mr. Pathak. Now I would humbly request Professor Anna Bhattacharya to please come forward and be seated on the dais. Requesting Professor Abhay Karandikar and Professor N. Ganesh to kindly accompany Dr. Rajshekhar ji and please join us on the dais. I would now request Professor Anna Bhattacharya, Coordinator Y20 and Faculty Computer Science and Engineering, IIT Kanpur, to kindly introduce our esteemed guests and say a few words about the event. Thank you all. It gives me immense pleasure to introduce our chief guest today, Dr. Rajshekhar ji, who is the Divisional Commissioner of Kanpur. With us, we also have our Director, Professor Abhay Karandikar, and our Deputy Director, Professor Ganesh. I welcome all the participants, panelists, speakers, attendees, media people, all of you to this Y20 summit. As you all know, the Y20 brings together young leaders from different countries, backgrounds, and fields to discuss pressing global issues and propose solutions. So it's a unique opportunity for young people, and I can see many young people here. I'm very glad that they're taking part. So this is a unique opportunity for these young people to actually have a voice and to influence the decision making. So we will be having panel discussions, and where all of you should be taking part, all of you should be asking questions and having discussions. So it's a powerful platform, no doubt, and it has generated already policy recommendations on different topics such as climate change, education, employment, future of health, etc. So we will be having throughout the course of the day 3 panel discussions. The topics are future of health, then number 2 is technologies for a sustainable future, and then number 3 is innovation in future of work. So we kept this format in this way because a panel discussion is a very valuable tool for generating new ideas. Rather than a one-way communication, this actually generates ideas and can have discussions. So the panelists are very eminent. They have come from diverse backgrounds, and I'm sure their experience, passion, enthusiasm, and energy will leave a lasting impression on the audience and also have a positive impact on the society. So youth is really something that a country should invest in because they are the future. And therefore, I am very glad that IIT Kanpur is organizing this Youth 20 Summit. So thank you again, all of you. Thank you very much.
I would now request Professor Abhay Karandikar, Director, IIT Kanpur, to kindly felicitate Dr. Rajshekhar ji. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now I would humbly request Professor Abhay Karandikar, Director, IIT Kanpur, to kindly address the gathering. Good morning and welcome to IIT Kanpur. On behalf of Indian Institute of Technology, Kanpur, and on my personal behalf, I would like to welcome Dr. Rajshekhar, who has been a friend and well-wisher of the Institute, being the Divisional Commissioner here. All the delegates who are participating today and who have also traveled from across the world, dear students and distinguished speakers who have gathered here to deliberate on some of the important topics, a very warm welcome to all of you. As you are aware that, and it was also pointed out in the beginning, that India has now entered the next 25 years of what we call as Amrit Kal, and it is only fitting that we have assumed the G20 presidency. In light of this, we are holding consultations across the country on various topics which will culminate in recommendations which will be discussed in the heads of states meeting during G20, and it is only appropriate that an institute of national importance like us deliberates consultations with youths of different institutions, colleges, schools, and other delegates on topics which affect our life in future. It is in this context that today's discussion is focused on three very important topics which are likely to shape the future of work for all of us, and more importantly, the future of work for our youth who are going to drive the destiny of our nation and the destiny of this global world. Today we are discussing technologies for sustainable future, Industry 4.0, technologies which will affect the future of work and indeed the future of education as well. And also, more importantly, the future of health, as all of you know that the health is the most important wealth which will determine our destiny. I welcome all the distinguished speakers who have gathered here. We have really, the organizers have really arranged a very impressive list of speakers who are going to deliberate today's panel discussion. I also encourage you to participate and ask your questions and doubts. Let this be the interactive sessions so that we can have a meaningful conversations and interactions which can result in actionable recommendations which can be implemented for all of us by our governments
and our leaders. As you know, that IIT Kanpur was established in 1959. We are now 63-year-old institutes, and in the last 6 decades, Institute has been driving technology and innovation at the forefront. In fact, we have a very strong innovation and ecosystem, a very strong incubator, and we have spun off and incubated a large number of startups which are going to drive the future of work, which is increasingly now technology-driven and having technology interventions. In this context, I would also like to mention that even though we are a primarily science, engineering, and technology institutions, we also have a very strong ecosystem of healthcare research and biomedical innovations. And it is only therefore appropriate that today we are also organizing a panel discussion on future of health as well. After these inaugural sessions, you can also have a glimpse of some of the technology innovations and startups that have been incubated and that have come out of the research in the institute, which are important to the today's theme and today's topics. Once again, I would like to welcome you all to our beautiful campus. Apart from the discussions in today's panel discussions and this conference, I also encourage you to take a walk in the institute and interact with our students and staff and faculty members. I hope you will find these discussions enjoyable and enriching. Thank you once again, and looking forward to interacting with all of you. Thank you. Thank you, sir. I would now request Professor S. Ganesh, Deputy Director, IIT Kanpur, to kindly introduce our Honorable Chief Guest. Yeah, very good morning to all of you, and on behalf of the Institute, I welcome you all once again. It's my pleasure to introduce our chief guest today, Dr. Rajshekhar, Commissioner of Kanpur Division. He doesn't need any introduction to the audience here. Anyone from Kanpur and Kanpur district know about his stellar contribution to the city and the significant changes that the city has underwent in the last few years. And he has an impressive track record, and he has been a public servant for the last 15 years and contributing to the welfare of the country in different ways. He has been a DM of several cities, and currently is at Kanpur, and for his contribution to the country, he has been awarded or recognized with several awards. Some of them are a few that I would list out here is NASCOM Social Innovation Award 2010 for our e-governance initiative in Jhansi, another region, and e-World e-Governance Award in 2011, Best District Election Official State Level Award, and so on. So, I mean, it has been, privilege to have him here on several occasions, and once again, we thank him for being with us. And with this very, very short introduction, I request Dr. Rajshekhar to address the gathering. Dr. Rajshekhar. Thank you very much, Professor Ganeshji. Before coming to this particular session, I thought I will deliver my speech in English. But after coming here,
looking into the audience and also the participants in this particular Youth 20 consultation. I will keep my content mixed both in English and Hindi so that it will be more effective and you can take more effective. First of all, मैं डॉक्टर अभय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर जो इवेंट है यूथ 20 कंसल्टेशन, एक यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री का, इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद द यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा संगठन एंड अदर लाइन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. क्योंकि इसका बैकग्राउंड में उद्देश्य क्या है कि वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव प्लान्ड फॉर सच एन कंसल्टेटिव समिट्स, कंसल्टेटिव मीटिंग्स, पैनल डिस्कशंस. उसका पीछे का उद्देश्य ये है कि रिसेंटली यू हैव विटनेस्ड कि उत्तर प्रदेश ने इंडिया का सबसे बड़ा एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स प्राप्त हुए हैं. इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर यूपी आल्सो, फॉर इंडिया आल्सो, कि द ग्लोबल कम्युनिटी हैज शोन कीन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपी की इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा. क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि हम सिर्फ जो है चीज़ें बोरो करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो. अब वो कंसेप्ट को चेंज करके हमें सेल्फ सस्टेनेबल बननी है. सेल्फ सस्टेनेबल in terms of growth, in terms of service, in terms of employment generation and in terms of the wealth. Happiness index को बढ़ाना है. There are various ways and means to achieve that particular target. सब लोग ये कहते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सब लोग यही कहते हैं कि पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट कल्प्रिट. बट उसको आप अदर साइड ऑफ द कॉइन देखेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका पॉपुलेशन, स्पेशली यूथ पॉपुलेशन. मतलब आप ये जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन फंड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का जो विंग है, ये हर साल एक सर्वे करते हैं. लोग पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के पॉपुलेशन का एक सर्वे करते हैं. दे कम आउट विथ ए डाटा जहाँ पे कि पॉपुलेशन के डिफरेंट सेगमेंट को वो बाइफरकेट करते हैं. यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो रिसेंट सर्वे हुआ है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, उसके अनुसार इंडिया में 65% यूथ का पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है. ये स्ट्रेंथ है. अब इट्स अप टू अस कि हाउ वी मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस स्ट्रेंथ. जो यूथ का हमारा शेयर है, इसको हम कैसे बेटर बनाया जा सके. उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स प्लान लेके आए हुए हैं, जो इस यूथ के जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको एक ऐसा ग्राउंड दिया जाए, उनको एक ऐसा एम्बियंस और ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पे कि उनके टैलेंट्स को आगे बढ़ाया जाए. अब तक आप देखेंगे दो सिनेरियो है इंडिया में. एक सिनेरियो है जहाँ हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे कि हमें वेल्थ का हो या ग्रोथ का हो या टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, ट्रेडिशनली ये रहा है कि इंडिया इज ए जॉब सीकर. हम एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं, जॉब हम सीख करते हैं.
बट धीरे धीरे पिछले 7-8 ईयर्स में आप देखेंगे तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। राइट नाउ हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है या अदर जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम धीरे धीरे जॉब सीकर से सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स बन जाए। उसके लिए हाल ही में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में द स्पेशल इनिशिएटिव दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन इन लास्ट 1 year, they have brought out 25 न्यू पॉलिसीज, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी है, इनोवेशन पॉलिसी भी है, स्टार्टअप पॉलिसी भी है, MSME पॉलिसी भी है। दे हैव चेंज द लास्ट 2 decades का जो रूल्स रेगुलेशन था उसको अमेंड करते हुए, लुकिंग इनटू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, द प्रेजेंट डिमांड, द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, उन्होंने ये सब पॉलिसीज को चेंज किया है। नाउ द पॉलिसीज आर मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली, पॉलिसीज आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। इसे इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट जो लास्ट 2 decade में उत्तर प्रदेश ने किया है। इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि हमें इमीडिएटली ना मिले, इसका इम्पैक्ट डाउन द लाइन आफ्टर 5 years, आफ्टर डिकेड वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ दीज न्यू पॉलिसीज विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन। अब थर्ड ये है कि एम्प्लॉयमेंट में पहले हम जॉब सीकर्स थे, नाउ वी आर स्लोली मूविंग एज द सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स। अब थर्ड है कि वी शुड बी शोकेस्ड एज द जॉब क्रिएटर्स। सिर्फ हम जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक ये नहीं रहेंगे, हम जॉब क्रिएट करने की काबिलियत रखेंगे और उस पर हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। उसके लिए जो एनेबलिंग एनवायरमेंट है दैट द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग, और ये जो आज का समिट है ये उसके लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखेंगे, इंडस्ट्री 4.0 के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करेंगे, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, डिफरेंट पैनलिस्ट है, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ बहुत सारी चीज़ सीखेंगे आप, चीज़ें जिसको जाके आप ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि हम लोगों का कि पहले तो इंडिया सब चीज़ पे एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में जाना जाता था, चाहे वो हम सीरियल ग्रेन से शुरू हुआ इन 70s, उसके बाद धीरे धीरे इन 90s हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने लगे। अब जो है बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें विच वी कैन क्रिएट इन हाउस, जो हम लोग अपने कंट्री में कर सकते हैं विद द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT कानपुर, जो कानपुर के शहर के लिए भी गर्व है, उत्तर प्रदेश के लिए भी गर्व है एंड इंडिया के लिए भी गर्व है। बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस इनिशिएटिव जो यहीं से इसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, विच आवर सेल्फ एज द चेयरमैन ऑफ द कानपुर स्मार्ट सिटी वी हैव वेरी क्लोज टाई अप विद द IIT कानपुर। डजन्स ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे कि IIT कानपुर इज आवर एडवाइजर और कंसल्टेंट, जहाँ पे कि जो इनोवेशंस वो लोग यहाँ पे करते हैं लैब्स में, क्लासरूम्स में, दैट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, ट्राइंग टू रिप्लिकेट ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह के बहुत सारे दर्जनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूट्स है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग पहले इंपोर्ट टेक्नोलॉजी करते थे, सर्विसेज इंपोर्ट करते थे, अब धीरे धीरे हम लोग सेकंड फेज है कि जॉइंट कोलैबोरेशन। ठीक है, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इन ए पोजिशन कि हम उतना टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी से इंप्लीमेंट करते हुए हम एवरीथिंग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, बट द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम ऐसे टेक्नोलॉजीज जो इंडिया के ग्रोथ इंजन के लिए जरूरी है, वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए जरूरी है, जो हम इन हाउस आज के डेट में नहीं कर सकते, तो ऑल दोज सर्विसेज, गुड्स, टेक्नोलॉजी, उसके लिए हम जॉइंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड के बेस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स है, सेटअप है, कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं। तो सेकंड फेज हम जॉइंट कोलैबोरेशन करेंगे। एंड आप देखेंगे तो लास्ट 15-20 ईयर्स में
हर सेक्टर में जॉइंट कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा जो है अभियान चला हुआ है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे कि हम जॉइंट कोलैबोरेशन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कर रहे हैं। धीरे धीरे अब थर्ड स्टेज पे हम जा रहे हैं। अब थर्ड स्टेज में क्या है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, सस्टेनेबल बनेंगे, रेजिलिएंट बनेंगे और हम हर चीज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। वेदर इट्स एम्प्लॉयमेंट, कि हमारा स्किल्ड मैन पावर विच इज़ आवर स्ट्रेंथ, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसी तरह से हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे और उसी तरह से हम टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करेंगे। दैट इज़ द थर्ड फेज। ये सब चीज़ें जो है, ये जो अमृत काल की बात डॉक्टर अभय जी ने की, जो वी हैव कंप्लीटेड 75 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हम अमृत काल में गए हुए हैं। द नेक्स्ट 25 ईयर्स विल बी वेरी क्रूशियल इन द सेंस कि 25 ईयर्स में इंडिया वर्ल्ड के बहुत सारे सेक्टर्स में टॉप इस पे नॉच पे रहेगा। उसके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट हम सबको मिलकर करना है, एक जॉइंट एफर्ट से करनी है। उसके लिए ही जो है ये सब चीज़ें इनिशिएटिव लिया जा रहा है चीज़ों पे। तो वो एक जॉइंट एफर्ट से, जॉइंट कंसल्टेशन से, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बन पाएगा। और मुझे ये हर्ष का विषय भी है कि उत्तर प्रदेश शासन के यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड नेहरू युवा संगठन के माध्यम से यहाँ पे ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। मैं सबको तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ। दे आर रिप्रेजेंटेटिंग 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। हर डिस्ट्रिक्ट से एक मेल और एक फीमेल आए हुए हैं। उनको मैं मेल आइकॉन और फीमेल आइकॉन का संज्ञान देना चाहूँगा, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिंग मिलियंस ऑफ पीपल। क्योंकि ऑन एन एवरेज इफ यू सी, every district of Uttar Pradesh has on an average 3 million population. अगर उसमें से 2 लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं, so they are representing the 3 million, और उसमें 65% अगर यूथ का देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो जो है 2 मिलियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड उनका सिलेक्शन भी नीचे कॉम्पिटेटिव लेवल पे डिबेट, कॉन्फ्रेंसेस, इसके माध्यम से किया गया है। हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इस यूथ आइकॉन को सपोर्ट करने के लिए, उनको इस तरह का कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्ट जगाने के लिए और यहाँ पे कुछ सीखने के लिए और उसको नीचे जाके ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए 5000 रुपीज़ का एक स्कॉलरशिप आप कह लीजिएगा, एक अनुदान राशि कह लीजिएगा, एक सहायता राशि कह लीजिएगा, एक सम्मान राशि कह लीजिएगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है इसको। मुझे विश्वास है कि आज का जो डिफरेंट सेक्टर्स पे यहाँ पे डिस्कशन होंगे, डेलिब्रेशंस होंगे, उसका बेनिफिट सीधे हमें ग्राउंड लेवल पे मिलेंगे। मैं इस विशेष अभियान के लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष करके IIT कानपुर जो हम लोगों के पार्टनर हैं, हम लोगों के प्राइड है हर चीज़ पे, विशेष करके डॉक्टर अभय जी का, डॉक्टर गणेश जी का और डॉक्टर अर्णब जी का, जो इस पूरे इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड ऑल दी डिग्निटरीज, डेलीगेट्स एंड ऑल दी पार्टिसिपेंट, सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक यू मुझे इस चीज़ का एक पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं पिछले कल शाम से बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मेरा भी नॉलेज इससे बढ़ा हुआ है। उसके लिए भी आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Your speech was truly inspiring. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to inform you that we have exhibition displayed outside. The stalls include Research and Development stalls of IIT Kanpur, Startup Incubation and Innovation Center stalls, Science exhibition by students of Shiksha Sopan and Opportunity School, exhibition on going beyond our confines, Chale Seemaon Ke Pare. We request our dignitaries to proceed for the inauguration of exhibition outside, followed by refreshment. The exhibition will be inaugurated by our Honorable Chief Guest, Dr. Rajshekhar Ji. Rest of the audience, I request you to please continue to remain seated. We'll be showing you a few videos about IIT Kanpur.
I request all the audience to remain seated and dignitaries to please proceed for the inauguration. I would now request admin to kindly play the video about IIT Kanpur.
I hope you all enjoyed the video. So the next video is about Gangwal School of Medical Sciences and Technology. Gangwal School of Medical Sciences and Technology is an innovative and ambitious project of IIT Kanpur. This initiative envisions to bring a paradigm shift in approach towards medical research and medtech innovation in the country. So let's watch the video. I request admin to play. Deep tech startups and social enterprise. IIT Kanpur has a very Swasa N95 mask to the no-cart ventilator, which in fact entered the Limca Book of Records, and 3, the oxygen plants during the second wave of COVID pandemic. This series of successes encouraged us to set up and look very carefully at the medical device development ecosystem, because we have the skill sets and the infrastructure available to go for it. The school will have a 450-bedded Yadupati Singhania super specialty hospital and several centers of excellence. We wish to establish multiple centers of excellences, each looking at the issues that are very relevant to this part of the country. These centers of excellence will have faculty members working in different departments of IIT Kanpur, cutting across engineering and medicine, and working at the intersection of technology intervention in healthcare. We have a large number of faculty working in these areas, and the medical school would make a huge difference in terms of addressing these unmet needs of the country. This will help actually much better future, because the support of technology to medical science can enhance better treatment and affordable treatment to all people, and particularly in our country we require such things. It's a very proud moment for us at JK Cement to see our founder's vision transform into reality with the opening of the Gangwal School of Medical Sciences and Technology and the Yadupati Singhania Memorial Super Speciality Hospital in Kanpur. This collaboration with IIT Kanpur is an important milestone in our endeavor to achieve the nation's vision for healthcare for all. We would like to build a modern hospital which will redefine the way healthcare is delivered in India and across the world. The first, the hospital is going to be a major source of comfort for patients as well as people who are sick in that entire region of Eastern UP.
And secondly, this institute is going to focus on futuristic areas like telemedicine, on digitization of patient records, creation of cardiac devices and other devices, etc. One such project that we have initiated at our institute is called Hridayantra. This device is an assist device for the human heart, particularly when the patient has aged or has a weak heart that curtails blood circulation in the human body. We are hoping that in about a year, not just this device, but a whole family of technologies would be Outcome of healthcare totally depends on the interaction between the man and the machine. And sadly, we do not have both in sufficient numbers. We are desperately short of ICU beds, ward beds, hospitals, nurses, doctors, technicians, medical equipments, everything. IIT Kanpur has a very thriving ecosystem of biomedical research and medtech innovations. We believe that next generation research in healthcare will happen at the intersection of engineering and medicine. With this vision, we are establishing Gangwal School of Medical Sciences and Technology. This story started long time back when IIT Kanpur set up its bio incubator. And since then, there have been a string of successes, the highest one being during the pandemic, when within a very short time, we rolled out 3 products for national utility. 1, the Swasa N95 mask, 2, the no-curb ventilator, which in fact entered the Limca Book of Records, and 3, the oxygen plants during the second wave of COVID pandemic. This series of successes encouraged us to set up and look very carefully at the medical device development ecosystem, because we have the skill sets and the infrastructure available to go for it. The school will have a 450-bedded Yadupati Singhania super speciality hospital and several centers of excellence. We wish to establish multiple centers of excellences, each looking at the issues that are very relevant to this part of the country. These centers of excellence will have faculty members
working in different departments of IIT Kanpur, cutting across engineering and medicine and working at the intersection of technology intervention in healthcare. We have a large number of faculty working in these areas, and the medical school would make a huge difference in terms of addressing these unmet needs of the country. This will help actually much better future because the support of technology to medical science can enhance better treatment and affordable treatment to all people, and particularly in our country we require such things. It's a very proud moment for us at JK Cement to see our founder's vision transform into reality with the opening of the Gangwal School of Medical Sciences and Technology and the Yadupati Singhania Memorial Super Speciality Hospital in Kanpur. This collaboration with IIT Kanpur is an important milestone in our endeavor to achieve the nation's vision for healthcare for all. We would like to build a modern hospital which will redefine the way healthcare is delivered in India and across the world. The first, that the hospital is going to be a major source of comfort for patients as well as people who are sick in that entire region of Eastern UP. And secondly, this institute is going to focus on futuristic areas like telemedicine, on digitization of patient records, creation of cardiac devices and other devices, etc. One such project that we have initiated at our institute is called Hridayantra. This device is an assist device for the human heart, particularly when the patient has aged or has a weak heart that curtails blood circulation in the human body. We are hoping that in about a year, not just this device, but a whole family of technologies would be developed and commercialized. I think the project is unique. It has the ability to uplift the status of IIT Kanpur and certainly will contribute in no small way to the medical infrastructure in the state of Uttar Pradesh. This marriage between engineering and medicine will certainly deliver new innovative products to people who are in need. I am absolutely convinced that the school will achieve its goals and be a beacon of new development in medical technology in India. For a better future of India, those of us who have benefited tremendously from the incredible education at IIT Kanpur, we have a moral obligation to give back. Whatever we can, we must. We also have a new vibrant India under the leadership of Mr. Modi, and we, as children of India, must support in every way we can. We wish to build the hospital and other allied centers like COEs with generous support from the corporate and well-wishers, which can be a good example as to how a public-private partnership can bring about a difference in terms of healthcare delivery and also to nurture the entrepreneurship in meditech technology domains. Our dream is to change the way doctors are trained, nurses are trained, and paramedics are educated. Our dream is to produce machines which are extremely smart and which are affordable and which is available to everyone and every household. And we believe all these innovations, magical medicines and wonderful equipments will be developed provided the scientists, engineers, doctors, technicians, along with the patients, jointly develop these products.
Deep tech startups and social enterprises are widely regarded as the key to addressing developmental changes. With path-breaking innovation brewing at its incubated companies, the Startup Incubation and Innovation Center at IIT Kanpur aims to impact the bottom of the pyramid through its incubated startups. Established in the year 2000, SIIC is one of the oldest technology business incubators with many successes under its belt. The multifaceted, vibrant incubation ecosystem, nurtured over 2 decades, aims to convert world-class ideas into business. Startups at SIIC are exposed to a plethora of facilities that enable cutting-edge research and innovation. The Imagineering Lab is a central facility for concept design and product realization. The process of design, simulation, and manufacturing are integrated with the digital environment. It provides an infrastructure for sponsored research and industrial consultancy through 4 sections, which include 4I, Tinkering, Central Workshop, and MedTech. The 4I stand for Innovation, Integration, Incubation, and Implementation. The facility houses state-of-the-art CAD and CAM tools with the latest shape acquisition, modeling, and prototyping capabilities. With the decade-old experience in unconventional precision manufacturing, 4I Labs hold a reputation for working with giant firms like Hindustan Unilever, HAL, DRDO, and innovations with disruptive tech such as Swasa and Noka Robotics. Tinkering and Central Workshop are the complementary cousins that enable an innovator to turn an idea on paper into a product in the real world, from building the Supra models to CPR devices. The facilities are host to equipment ranging from high-quality lathe machines to various milling and fabrication machines like the planer, jigsaw, and drill press sheet metal jobs. MedTech facility, the latest addition to Imagineering Lab ecosystem, meets the industrial standard and regulatory compliances in the medical device industry by using high-precision reverse engineering combined with the latest 3D printing. The mark-forged Metal X additive manufacturing setup can produce metal parts with up to 100 microns accuracy with materials like stainless steel for heavy applications, Inconel for aerospace designs, and pure copper for efficient cooling systems. The National Center for Flexible Electronics, NCFlex-E, was set up as a Center of Excellence at IIT Kanpur in 2014 with financial support from the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, and IIT Kanpur. This center's vision is to catalyze the domestic industry's development by integrating intelligence in the form of electronics directly on flexible substrates such as plastics, paper, textiles, or metal foils. The center is actively working with many local, national, and international industrial partners to produce indigenous products. The center's printing equipment and labs are open to the center's industrial project partners and SIIC incubated startups. Under its umbrella of a robust R&D ecosystem, SIIC offers in-house lab facilities as well. The incubated startups receive technical and business mentoring, funding opportunities, and an unmatched alumnus connect. SIIC has developed the all-round expertise to foster innovations at ideation stage businesses aiming to scale up. The SIIC ecosystem provides critical ingredients in developing technology-driven, multidisciplinary innovations across domains of agriculture, healthcare, aerospace, energy, water, and education.
outcome of healthcare totally depends on the interaction between the man and the machine. And sadly, we do not have both in sufficient numbers. We are desperately short of ICU beds, ward beds, hospitals, nurses, doctors, technicians, medical equipments, everything. IIT Kanpur has a very thriving ecosystem of biomedical research and medtech innovations. We believe that next generation research in healthcare will happen at the intersection of engineering and medicine. With this vision, we are establishing Gangwal School of Medical Sciences and Technology. This story started long time back when IIT Kanpur set up its bio incubator. And since then, there have been a string of successes, the highest one being during the pandemic, when within a very short time, we rolled out 3 products for national utility. 1, the Swasa N95 mask, 2, the no-cart ventilator, which in fact entered the Limca Book of Records, and 3, the oxygen plants during the second wave of COVID pandemic. This series of successes encouraged us to set up and look very carefully at the medical device development ecosystem, because we have the skill sets and the infrastructure available to go for it. The school will have a 450-bedded Yadupati Singhania super speciality hospital and several centers of excellence. We wish to establish multiple centers of excellences, each looking at the issues that are very relevant to this part of the country. These centers of excellence will have faculty members working in different departments of IIT Kanpur, cutting across engineering and medicine and working at the intersection of technology intervention in healthcare. We have a large number of faculty working in these areas, and the medical school would make a huge difference in terms of addressing these unmet needs of the country. This will help actually much better future, because the support of technology to medical science can enhance better treatment and affordable treatment to all people, and particularly in our country, we require such things. It's a very proud moment for us at JK Cement to see our founder's vision transform into reality with the opening of the Gangwal School of Medical Sciences and Technology and the Yadupati Singhania Memorial Super Speciality Hospital in Kanpur. This collaboration with IIT Kanpur is an important milestone in our endeavor to achieve the nation's vision for healthcare for all. We would like to build a modern hospital which will redefine the way healthcare is delivered in India and across the world. The first is the hospital is going to be a major source of comfort for patients as well as people who are sick in that entire region of Eastern UP. And secondly, this institute is going to focus on futuristic areas like telemedicine, on digitization of patient records, creation of cardiac devices and other devices, etc. One such project that we have initiated at our institute is called Hridayantra. This device is an assist device for the human heart, particularly when the patient has aged or has a weak heart that curtails blood circulation in the human body. We are hoping that in about a year, not just this device, but a whole family of technologies would be developed and commercialized.
I think the project is unique. It has the ability to uplift the status of IIT Kanpur and certainly will contribute in no small way to the medical infrastructure in the state of Uttar Pradesh. This marriage between engineering and medicine will certainly deliver new innovative products to people who are in need. I am absolutely convinced that the school will achieve its goals and be a beacon of new development in medical technology in India. For a better future of India, those of us who have benefited tremendously from the incredible education and Professor T.R. Vishwanathan Young Faculty Fellowship in Teaching Excellence from IIT Kanpur. His research interests are personalized medicine, nanotherapeutics, sports medicine, etc. I would now like to invite moderator Professor Santosh Kumar Mishra to kindly come up on the stage and introduce the panelists. Thank you, Ms. Kumar, for introducing me to the audience. I welcome you all on behalf of IIT Kanpur community, as well as Y20, which is associated with G20 from Government of India. Today, we have a range of expertise for this particular panel. I'll start inviting one by one to them on this dais. So let me introduce you to Professor Arun Kumar Shukla, who is professor at the Department of Biological Sciences and Bioengineering, IIT Kanpur. He is known for his studies on gene-protein coupled receptors. Professor Shukla is a Wellcome Trust DBT Intermediate Fellow and recipient of the Swan Jayanti Fellowship from the Department of Science and Technology. The Department of Biotechnology of the Government of India also awarded him the National Biosciences Award for Career Development. And 2021, he received Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology in Biological Sciences from Government of India. So let's give a big round of applause for Professor Shukla. Now, I would like you to introduce to Dr. Aniruddha Joshi. He is a founder and CEO of Atreya Innovations with the vision of providing the most personal, predictive, and non-invasive health monitor based on data science-driven Ayurveda. His venture received the National Startup Award in 2021 in the Ayush category. A special mention in Mann Ki Baat by Honorable PM Modi ji. Added to this, Atreya received the Excellence in IT Award by Ministry of Ayush and DSIR recognition for the in-house R&D of this indigenous value. So let's welcome Dr. Joshi. Now I'll call upon Dr. Niti Kumar, who is Senior Scientist in Division of Molecular Microbiology and Immunology at CDRI, Lucknow, which is one of the best CSIR institutes in country. She is recipient of Swan Jayanti Fellowship and Women Excellence Award. Her research group is trying to understand critical quality control pathways in human malaria parasite as alternative sites of malaria intervention. They also participate in national and international open source drug discovery initiatives. Recently, her lab has also participated in capacity building for indigenous fluorophores, quenchers, oligonucleotide conjugates for research applications and RT-PCR-based clinical diagnostics. Added to that, she is a trained sports person in badminton category. So let's welcome Dr. Kumar. Now, I'll introduce Mr. Rahul Patel, who is co-founder of Primary Health Tech, a next-gen affordable, accessible, and predictive diagnostic company having R&D office at different IITs.
So Mr. Patel. Check. Now, last but not the least, Professor A. Thiagarajan, who is Professor and Head of Department of Arthroscopy and Sports Medicine at Sri Ramachandra Medical College and Research Institute in Chennai. He is also a consultant in Sports Medicine Center for Sports Sciences. So let's welcome Dr. Thiagarajan. Check. Okay, so now I'll take my seat so that we can start the conversation. So I hope it will be engaging, and the format is first 45 minutes, I'll try to engage panelists with different kind of questions, and another half of 45 minutes will be with the audience. So you can prepare your questions while we are having our conversation, and then you'll be given a chance. You can raise your hand. Somebody will approach you with mic, and you say your question. Try to keep it as short as possible so that many of your friends, fellows can get a chance to ask questions. Okay, so see you then. Okay, so now we formally start this session. Now, as we know that we are doing this panel discussion under umbrella of G20 and the specific category of Y20 consultation. Now, the overall theme for India has always been Vasudhaiva Kutumbakam. Now, it comes from Ayam Nizam Parovet Gadana Laguchet Sam Udar Charitanantu Vasudhaiva Kutumbakam. It says it in very few words, the crux of the story, which is one planet, one human, and all of us. Now, because all our panelists are from different fields, they have seen what is going on in this world, where we have reached, what are the scopes. They'll be able to tell us in few words. I'll be asking them to keep their first round answer in 3 to 4 minutes so that all of them can get enough time to say words, and then we move ahead in the panel. So first of all, I want to know what they think that some of the best things our world as a family has achieved through the expertise they also share with. So I'll request first Professor Shukla to say a few words about his field, what are the discoveries in his field currently, where we are, and where we are heading to. And then I'll move to other panelists. So Professor Shukla. Thank you very much, Santosh. Let me start by saying that it's a distinct pleasure to be a part of this panel discussion. And it's a wonderful sight to see such a large number of youngsters sitting here in the audience. It's such a pretty sight. I'm a professor here in Department of Biological Sciences and Bioengineering, and research program in our lab is focused on understanding the structure and function of a special type of proteins in our body known as G-protein coupled receptors. So these receptors are essentially membrane proteins, that is, they are integrated in the surface plasma membrane of the cells which are present in our body, and they are involved in almost every physiological process that goes on. For example, the way you are able to look at me is when a photon of light hits the retina in your eye, there is a GPCR that is activated, and that initiates the vision cascade that allows you to see things. The way you can smell the perfume of the person sitting next to you, because you have olfactory receptors in your nasal epithelium, which are GPCRs, and they allow you to smell.
There are GPCRs in your tongue epithelium that allow you to sense the taste, different types of taste, based on which you can tell if the tea or if the coffee is too sweet or bitter or sour. And these receptors are the largest family of drug targets. So almost half of the drugs that are there in the market today, that is the drugs or medicines that the doctors prescribe, they work by targeting one of these proteins. Now, these are very challenging proteins to work with. As some of you might be aware, structural biology domain, that is to look at proteins and biomolecules at high resolution to study their structure, architecture, has been a very strong domain in Indian science ecosystem. But this particular type of proteins that we refer to as membrane proteins, nobody dared to touch them in India until the last 10 years or so. And when I decided to move back to India back in 2014, this was one of my visions to establish this research direction in the country. It was challenging, there were many hurdles, but I'm very glad that our efforts have now established this line of research in the country. And it has inspired other people to return back to India, people who are doing science, for example, their PhD and their postdoctoral work abroad. They have come back to India to take up this research direction, and that is very satisfying. And I must say that this is a research direction where there is still a lot of opportunity and scope for novel drug discovery, and perhaps we will talk about some of those in the next 45 minutes. But I would encourage the youngsters to sort of read more and more about this exciting field of receptors, how our body or cells sense these signals, stimuli, and how it all sort of translates into physiological outcomes. Thank you. Thank you, Dr. Sukla. Now I'll request Dr. Joshi. Good morning, all. First of all, I would like to thank the committee, and I'm very honored to be part of this Youth 20 Summit. I'm working with my technologies in Ayurveda, which is our ancient science, and I'm here to talk about health for future, right? So how these two are connected to each other. Basically, I came into this field because of my father. He was not well, and he got treated well through the Ayurvedic treatment. So as engineers, we got fascinated, curious how this really happened, right? So it really started with the curiosity. Then I did my PhD, and now I've started the company. And I see that the way my dad got treated, there is a need that millions of people in India, outside of India, needs similar treatment. Right? The treatment is more holistic. So today's, we are post-pandemic, but the situation is same. We are going through a lot of stress. More than 70% of people are have issues with non-communicable disorders. The root cause of that is incorrect lifestyle. We all know that India, the whole world is moving towards mental disorders and so on. And the solution is simple, actually, that we get into discipline, we get into our roots, and of course combine that with the best of technology, best of Western world, and we make sure that the way we exported yoga to the world, we have to make sure that when the world is ready, when the world moves from yoga as a natural transition to Ayurveda or any other traditional medicine, we have to make sure that our ancient language is told or is deciphered into their language, which is today's language, which is of numbers, which is of reports, statistics, comparison, and so on. So I'm very happy that we are creating one evidence-based system for the world, and Honorable PM Modiji's vision is to bring Ayush at every home, Har Ghar Ayurveda. So I'm very happy that we are playing a very significant role in that, and just wanted to extend that the world needs that, and we have to make sure that India plays, Bharat plays significant role in that journey.
I'll talk more about it in subsequent sections. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Joshi. Now, Dr. Kumar. Okay, thank you for the invitation, and it's so overwhelming seeing such young people in the audience, and I am myself feeling very young. So I have a question to you all. How is malaria spread? Anybody? Yeah, just be loud. Biting of mosquito, right? And so when you are standing outside in the evening in the lawn, some people will have a lot of mosquitoes on their body, while few will not have mosquitoes on their body. And when we were young, what we heard from our elders is कि इसका खून ज़्यादा मीठा है, and that is why a lot of mosquitoes are around his body, right? So my lab yeah, please, thank you. You got full marks. So my lab in CDRI is working on the human malaria parasite. Now this is a very interesting pathogen, intracellular pathogen. It lives in the mosquito, it fights with the mosquito, microbiota survives there, then it comes in the human body, lives in the liver quietly, and then it comes in the blood, it grows in the blood, and then it forms gametes, and then taken up again by mosquito. Such complex life cycle traverses different hosts. One is a warm-blooded human host, and the other one is the cold-blooded mosquito vector. Now, the same mosquito is also transmitting viruses. Now, can you tell me which viruses? What is endemic in UP? Yeah? Somebody from that corner said something? Dengue, we have chikungunya, we have JE, encephalitis, which is also endemic in Gorakhpur. So the same mosquito is transmitting both a protozoan parasite as well as a virus. This is fascinating, isn't it? And we till now do not understand how does these co-infection exist in the mosquito vector, because we have overlapping phases of transmission cycle. The other problem with this mosquito, this pathogen intracellular parasite is that it is gaining resistance. And as we hear from other fields of microbiology also, that drug resistance is a problem. So my lab is trying to understand how the parasite is able to survive under different stress conditions. What are the mechanisms which are unique to the parasite, which gives a competitive edge over the human host or the mosquito vector? And also my lab is involved in drug screening. We are looking at molecules which can be effective against the drug-resistant parasite. And as you know, that drug discovery is not an easy task. It takes 10 to 15 years and only with 1 to 2% success rate. So why I'm telling you this is because you in the audience, you people are from different diverse backgrounds, right? And the country's hope is the young generation because they are dynamic, they are energetic, and they have idea of interdisciplinary science because the avenues for interdisciplinary science is a lot. So my team works with medicinal chemists, it works with pharmacologists, we work with formulation guys, we work with doctors, and that is how with this diverse team, we gain a lot of knowledge. And the principles of infectious biology is the same, whether you apply it for parasitology or you apply it for bacteriology or mycology. So, and the problems of drug resistance are the same across different infections. So I would be happy to answer questions if you have something and if you would like to know more in details of what we are doing at CDRI. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Kumar. Now I'll request Dr. Thiagarajan to speak. Good morning, everyone, and thanks for IIT Kanpur and the organizing committee for having us all here. So Kumarji asked you a question. Maybe I can make a statement and then ask you a question.
Okay, this statement may be very startling to you. Now, in the hall, if I say all of you are smokers, all of you are smokers, you carry the risk of being a smoker. Will you agree? Yes, because sitting for 2 hours continuously in a day is equal to smoking a pack of cigarette. Sitting is the new smoking, is what sports medicine and sports science has discovered. So this has got huge ramifications. That is why you can see people now standing up and doing the desk, sit and stand desks, being physically active. All these attain a lot of importance. So probably in future, all our civil engineer and structural engineer colleagues, we should design the auditoriums where there are no seats, probably a few seats for the physically not so able, and most people will be sitting down or standing or sitting on a Swiss ball or something like that. So we have to strategically think differently. Number 2, what do you think is the best medicine, one single medicine in the world? Paracetamol? Dolo 650? I don't want to get into controversy. Yes, please. Loud? Laughter. Yeah, you've gone one step beyond. Great. The concept now is exercise is medicine. And of course, with physical wellness, mental wellness is also very important. We can talk about that also. Exercise is medicine, and one single activity of yours. Yes, please. Indeed. Okay, so we will do that. Yeah, maybe Santosh can help us. Whoever speakers are comfortable in Hindi, they will speak. Okay? Sure. Point well taken. So the moderator has to develop as the translator also for a few unfortunate cases like I am coming. मत करिए, आप जो भी बोलेंगे मैं इन लोगों को समझा दूंगा. Zarur. So exercise is medicine, and walking for 20 minutes in a day regularly is considered to circumvent most of the diseases like hypertension, cholesterol, diabetes in the world. It has been scientifically proven. So sports medicine is not only about elite sports medicine, not only about injuries. It's about sports, exercise, physical activity to make sportsmen better, and also in the bargain to make the humans better also. Because all the technologies that are in your Maruti car now, like the ABS and all other high-end technologies, have come from sports cars, from all this steering-mounted controls. So something like that, sports and exercise medicine, all the advantages and inventions, we want to bring it to the common people. That is what is sports science and sports medicine about. So I am from the Center for Sports Science of my Sri Ramachandra University, which is a center of excellence recognized by Government of India. And I'm happy to be here to be interacting with you all. Thank you. Thanks, Dr. Thiagarajan. So, summary of whatever they have said, I'll be saying in few words once I'm done with all the panelists. तो जब सब लोग बोल लेंगे एक राउंड, तब मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा जिस्ट दे दूंगा, and then we'll have bilingual. आगे के questions दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे, और आप लोग question जिस भाषा में आप comfortable है आप पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ, thank you. So now we'll go to Mr. Rahul. So yeah, thank you sir. First of all, थोड़ी आवाज़ ख़राब है, मेरी गला ख़राब है, तो I think सुनने में दिक्कत होगी. So I'll repeat whenever you can't hear it. Being here and G20 का जो पूरा इस साल का theme है One Earth, One Family, One Future. Particularly with the whole COVID thing, the way we have seen the whole world came together and we fought probably the biggest pandemic in the century pretty well. That defines what Vasudhaiva Kutumbakam is all about. Being part of many such projects where we work with the ventilator in our device and many other things.
it's really a great privilege to be here in this panel. And similar to the team in my startup, Primary Health Tech, in this panel also, I am probably the least technically educated person. So in Primary Health Tech, what we are doing is we are building a device called Mobile Lab, which enables you and primary healthcare workers, community healthcare workers, and individuals to test out pancreas, liver, kidney, lung-related disease at your home with roughly 90% accuracy compared to your gold standards, which we do at labs. Why these things are important? We all have seen, the labs, the diagnostic labs, particularly Metropolis and the bigger labs, we have seen in metro areas, in urban areas. But I'm sure none of you would have seen any such labs in rural areas. And then the reason is not that people in rural areas cannot afford this, but the ROI simply doesn't work. If you set up the lab, you won't be able to find the trained manpower to run those labs. And that is why less complicated devices, which are similar accuracy, which are using AI and machine learning technologies to understand and give the similar results, are important. And that is what we are doing at Mobile Lab. So this is just the gist of introduction. Rest we'll continue during the panel. Yeah, thanks Mr. Rao. तो अभी तक जो कुछ हमने सुना उसका सार तत्व यही है कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हर अलग अलग फील्ड की एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य सारी क्षमताओं को रखने वाला नहीं हो सकता है, लेकिन सारे मनुष्य सारी क्षमताओं को एक साथ मिलाकर वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेते हुए एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर शुक्ला ने पहले कहा कि आपको पेन क्यों होता है, आप कोई मेडिसिन लेते हो तो उसका काम करने का तरीका क्या है, और उसके लिए जो तत्व या अवयव आपके शरीर के इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए और कैसे नए नए उन कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाए जिससे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज नई नई ड्रग्स डिज़ाइन कर सके। तो उनकी लैब उस फील्ड में काम करती है और उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं। आप अगर रिसर्च आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो पढ़ भी सकते हैं। ये आपको खुद करना पड़ेगा, जैसा कि अभी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि एक्सरसाइज इज मेडिसिन। सो मेंटल एक्सरसाइज, विजुअल एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन, दिस इज ऑल मेडिसिन। सो प्लीज ट्राई एंड यू विल गेट इट। थैंक यू। देन डॉक्टर जोशी ने कहा कि जब हम कभी आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो ये हमें लगता है कि हम दो अलग अलग वर्ड, अलग अलग विश्व की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। केवल कमी कहाँ रह जाती है कि हम हर चीज़ को अपने मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग उसी में है और इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आयुर्वेद, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन आज लोगों का कॉन्फिडेंस जीते और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका प्रयोग करें, तो उसके लिए डेटा ड्रिवन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक टूल्स, जो आज के मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स हैं, मैं केवल साइंटिफिक टूल नहीं कहूँगा, क्योंकि हर समाज हर परिस्थिति में हर काल में अपने अपने साइंटिफिक टूल्स रखता है। उनको कोई और नाम दिया जा सकता होगा, लेकिन आज के मॉडर्न टूल्स के द्वारा उनको हम प्रूव कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों में दे सकते हैं, जिससे कि वो इस मेडिसिन की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, ऐसा लोगों ने अभी तक पाया है। ठीक है, तो वो डॉक्टर जोशी ने कहने की कोशिश की। फिर डॉक्टर कुमार ने कहा कि जो सबसे अभी जो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली प्रक्रिया है, मच्छरों के थ्रू फैल रही है, उसमें जो है कैसे वो पैरासाइट या कैसे वो वायरस उस मच्छर के अंदर रहता है, फिर आदमी के अंदर जाता है, इन पे रिसर्च उनकी लैब में हो रही है। वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम
किसी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तभी हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर हमें वो प्रक्रिया समझ में ही नहीं आई है तो हम उसका बदलाव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है कि मच्छर कैसे इन चीज़ों को फैलाता है, कौन उसका कॉजिंग एजेंट है और इन चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, फिर डॉक्टर त्यागराजन ने बताया जो बिल्कुल टैग लाइन है, एक्सरसाइज इज मेडिसिन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, आप अपने किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकें, भले ही आपका काम, तो कभी कभी ये दिमाग में आता है कि मुझे तो क्रिकेटर बनना नहीं है, मुझे तो एथलीट बनना नहीं है, तो मैं क्यों एक्सरसाइज करूं? तो ये गलत है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, आप फोकस करना चाहते हैं, आप नया कुछ सोचना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए एक्सरसाइज आपको पॉजिटिव इनपुट देता है। आपके सोचने का तरीका, आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करने का तरीका ये बदल जाता है अगर आप एक स्वस्थ शरीर हैं। किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने, लेकिन स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और जैसा कि मिस्टर पटेल ने कहा कि ठीक है, बाकी चीज़ें हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन उसको कैसे हमें मार्केट में लेके आना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं पे वो कमी रह जाती है कि हम कैसे उन किताबों के कॉन्सेप्ट्स को हम ग्राउंड पे ले आए। कैसे वो छोटी सी चीज़ जो आपने कभी सीखी होगी, उत्प्लावन बल, है ना, बर्नौली की थ्योरम, और उसको किसी ने यूज करके एक हवाई जहाज उड़ा दिया। पढ़ा तो बहुत लोगों ने होगा, लेकिन कर कुछ ही लोग पाए। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले, जो भी आपको पढ़ाया जाए, हमेशा आप इस तरीके से लीजिए कि उससे आप कुछ न कुछ नया कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रखेंगे तो जैसे इन्होंने सक्सेस पाई है अपनी फील्ड में, कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। ईच वन ऑफ यू कैन बी इनोवेटर and make your contribution in the progress of our country. Thank you. Okay, so now we'll move to our second round. I hope I did not misinterpret any of the speakers, and if I did, that's my fault. I will take it on myself. Right, so now I will go for questions specific to the panelists, because they are working in diverse fields, so there could not be a very common question. Questions will allow in the last, है ना? पहले 45 मिनट हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, फिर क्वेश्चन बाद में लेंगे, नहीं तो फिर ये जो हमारा सिस्टम है थोड़ा इंटरप्ट हो जाएगा। मैं भी थोड़ा रट्टा मार के आया हूँ कि क्या क्या पूछना है। So question is from Professor Shukla and Professor Niti Kumar, because they are running lab, and it is very difficult most of the times to bring those discoveries to the market. So क्या challenges वो सोचते हैं कि उन concepts को market में लाने में क्या क्या challenges हैं, they will say in few words in 2 to 3 minutes. So we'll start with Professor Shukla. Thank you, Santosh. मैंने मास्टर्स के बाद अपनी पीएचडी और आगे का काम यूरोप में किया, फिर यूएस में किया। उसके बाद 2014 में मैं वापस इंडिया में आया। मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी हमारे लिए दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। आज जब आपने कहा खड़े होकर कि आप इंग्लिश में नहीं हिंदी में बात कीजिए, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। शायद मैं आपके स्टेज पे मैं ऐसे खड़े होके अपनी बात को, अपनी एक्सप्रेशन को नहीं रख पाता। आपने रखा, ये देख के मुझे बहुत खुशी है। और मेरा जो कन्विक्शन है कि इंडियन यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे हमारे कंट्री को, हमारे साइंस को ले जाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया आपकी बात सुन के। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस। जैसा डॉक्टर कुमार ने कहा, रिसर्च तो हम लोग लैब में करते हैं, बट उसको जैसे ड्रग डिस्कवरी की बात हम करते हैं, नई दवाइयाँ खोजने की बात करते हैं, वो एक बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। सब कुछ एक लैब में, एकेडमिक लैब में करना तो संभव नहीं है। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि एक
जो उसका फंडामेंटल नॉलेज है उसको हम डिस्कवर करें, उसके बाद हम रिसर्च पब्लिकेशन के थ्रू उसको पब्लिक डोमेन में डालें, पैटेंट करके ऑफ कोर्स आप उसका आईपी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद वाली जो स्टेप्स है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल होती है जिसमें चूहों में परीक्षण होता है, फिर क्लिनिक्स में होता है पेशेंट्स पे, या फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स जिसको हम बोलते हैं, वो सब एकेडमिक लैब्स में करना उतना इजी नहीं है अभी भी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारा सपोर्ट ऐसा हो रहा है जहाँ पे लीड कंपाउंड जो हम लैब में ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि पोटेंशियल ड्रग, पोटेंशियल दवा बन सकती है, उसको आगे ले जाने के लिए इंडिया में ही बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाला है, ये टाइम लेने वाली प्रक्रिया है। ओवरनाइट हम कोई चीज़ के लिए ड्रग नहीं बना सकते। आपने सुना होगा कोविड जब आया तो वैक्सीन बहुत जल्दी बन गई। आपको लगता होगा कि शायद ये तो बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन कोविड की जो वैक्सीन बनी उसका जो बैकग्राउंड का रिसर्च है, उसका जो बैकग्राउंड का काम है, बहुत सालों से चल रहा है। कोविड के ऊपर नहीं बट और सारे वायरसेस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज थी, उसको हम क्विकली ट्रांसलेट कर पाए वैक्सीन में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मैं कहूँगा। अभी जो मुश्किलें या हर्डल्स आप जिसको बोल सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स करने का जो सेटअप है, जो लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस का सेटअप है, ये सब अभी धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लिनिकल ट्रायल वाला, जो ओपन ट्रांसपेरेंट डेटा शेयरिंग का जो सिस्टम होना चाहिए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बन रही हैं। अभी हमारे एक तरह से बोलें लिमिटेशन ये है ड्रग डिस्कवरी के सेंस में, बट मैं बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड और रखने वाला और ऑप्टिमिस्टिक सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और हमें भरोसा है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस चैलेंज को लेंगे और आगे चल के चीज़ों को और भी बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर कुमार। ओके, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो पैंडेमिक के टाइम पे शुरू हुई थी। मेरी लैब, जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल रिसर्च भी करती है, ड्रग डिस्कवरी भी करती है, मैं पार्टिसिपेट करती है। बट ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2020 में, जैसे ही पैंडेमिक आया। एंड आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे रियल टाइम PCR किट्स भी बहुत मुश्किल से हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, एंड बीच में टेस्टिंग भी रुक गई थी बिकॉज वी डिडंट हैव इनफ किट्स। एंड उसी टाइम ही गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉल आया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का, एंड उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ के लिए कॉल आया था। बहुत लोगों ने डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स लिखे। हम लोगों ने इट जस्ट हैपेंड कि उस टाइम पे हम लोग लॉकडाउन में कैंपस में बंद हो चुके थे, एंड दूर दूर खड़े होके हम लोग खुद सोच रहे थे कि कैसे हम अपनी नॉलेज को इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड तभी हम 3 कॉलीग्स, एक मेडिसिनल केमिस्ट, एक स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट और एक मैं, मतलब हम 3 लैब्स मिली और हमने वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इंडिजिनस फ्लोरेसेंट डाइज एंड क्वेंचर। जो RT-PCR टेस्ट आप लोग कोविड टेस्टिंग में आपको पता चला होगा कि आप कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है, तो वो जो रिएजेंट्स जो होते हैं वो हमने खुद लैब में बनाना शुरू किया, नो हाउ डेवलप करा। वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, एंड ये सब तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस टाइम एक छोटी सी इंडस्ट्री ने हमारी कैपेबिलिटी में फेथ दिखाया। सो एज राहुल इज रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री सेक्शन, सो क्या होता है कभी कभी एकेडमिया और इंडस्ट्री में ना फेथ नहीं डेवलप होता है, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप होता है, ऑल्दो वो दोनों में कैपेबिलिटीज़ होती है। बट आप जैसे जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत फेल करते हैं। उस लॉकडाउन के टाइम पे जब रिएजेंट्स नहीं थे, वो छोटी सी इंडस्ट्री ने हमें फेथ दिखाया, हमें जो मिनिमल रिएजेंट्स चाहिए होते हैं वो सब प्रोवाइड करे, एंड देन वी डेवलप द टेक्नोलॉजी, वी डिड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वी हैव फाइल्ड अ पेटेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल पेटेंट। एंड वो जो जर्नी थी वो बहुत लर्निंग वाली जर्नी थी, बिकॉज हमने ज़ीरो से स्टार्ट करा था और हमारी टीम में हमारी लैब्स थी विच द मोमेंटम वाज प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स। बेचारे स्टूडेंट्स ने
वो 2 साल नो सैटरडे नो संडे वी ऑल वर इन द लैब, तो हमें पता ही नहीं चलता था कौन सा वीकडे है, आज संडे है या मंडे है, बट दे वर सो ऑप्टिमिस्टिक। और जब हमारे क्वालिटी कंट्रोल्स फेल हो रहे थे, हमारे इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स ने हार नहीं मांगी। तो मैं सारा क्रेडिट अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारी टीम मेंबर्स थे, और हमारी इंडस्ट्री पार्टनर को देना चाहती हूँ। तो जैसे कैसे एक लैब की एक्सपेरिमेंट एक टेक्नोलॉजी में जाती है, तो टीम बिल्डिंग एंड ट्रस्ट, फॉर मी दीज आर द 2 important पैरामीटर्स। थैंक यू। Thank you, Dr. Shukla and Dr. Kumar. So the 2 things which I could capture from these 2 points or 2 speakers. First thing what Dr. Shukla said, that we should focus on parallel innovations. We should not wait for disease to capture the space and then we go for the medicine. That will always take more time. So he explained that why it took less time for this vaccine to come to the market, because background research is already going on all the time, right? So we should be very futuristic in thinking about what could be the possible problem our society might face. So we should be ready for that. And the second part, the collaboration, which Dr. Niti Kumar highlighted very well. So again, if we collaborate, we can do really well in quick time with more focus and more benefits. So thank you to both of you. So now my pointed question is to Dr. Joshi, that inhibition of going in the space of traditional medicine or Ayurveda or any other form of medicine which is traditionally used, homeopathic or Unani, whichever you take. There is huge inhibition, but more inhibition is in the youth of the country. Now, what can be done to gain their confidence? क्या कर सकते हैं कि उनको ज़्यादा एसोसिएशन फील हो इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, जो कि ऑलरेडी I mean lot of work would have been done, because when our society started using it, that is like maybe 10,000 years already. So lot of use and benefit and loss comparisons would have happened. लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है. So क्या करना चाहिए कि वो ज़्यादा एसोसिएट कर पाए, और जब वो एसोसिएट करेंगे तो वो इस पे रिसर्च भी करेंगे, इसको यूज़ भी करेंगे, इसके फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स भी लेके आएंगे, and then we will be successful. Because in the very beginning, our chief guest also highlighted that we are a country which is 65% youth. Other countries, they might be low in number, but they also need youth to engage in their own traditional medicine, so that more and more benefit can be gained by the society. So, your words. As you rightly said, we have a great youth, लेकिन इस youth का impact तभी पड़ेगा जब वो youth is healthier and happier both. So it is very necessary that, और मैं youth को थोड़ा सा मतलब उसका age range थोड़ा बड़ा करता हूँ, because people in 30s and 40s are behaving like youth these days. So I'll combine them also. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम बोलते हैं को हम, मैं कौन हूँ, हु एम आई, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है. जैसे सेशन चल रहा था, किसी ने उठ के बताया कि नहीं मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे ही सेशन चले. कुछ थे उनको अच्छा लगा, कुछ थे उनको बुरा लगा, कुछ थे एसी चल रहा है बैठ लेते हैं, राइट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. वी कॉल दैट एज प्रकृति इन आयुर्वेद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हु यू आर and how you behave with respect to various things, whether it's with respect to social, economical and so on. Youth की अभी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो अलग अलग challenges है, but different types of stress. मतलब बहुत stress है youth को at the moment. So we are currently talking to almost 2,000 people every day, and
अलग अलग तरीके के स्ट्रेस है, सोशल है, जॉब ड्रिवन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है बहुत सारे तो उनको अच्छा एक्सेल करना है एंड सो ऑन. सॉरी माय हिंदी इज़ नॉट दैट ग्रेट, थोड़ा बम्बई हिंदी है बट मैं ट्राई कर रहा हूँ. ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ. सो बेसिकली व्हाट वी रियली नीड इज़ फर्स्ट वी शुड नो हु वी आर एंड वेयर वी वांट टू वेयर वी वांट टू गो. सो ये अगर क्लियर होगा तो सबसे अच्छा होगा. यूथ को दो ही चीज़ें पसंद आती है, एक या तो गैजेट या तो उसका कोई आइडल. ओके, दे डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स, दे डू नॉट लिसन टू एनी अदर पीपल. So we should make sure that we are interacting with our youth through either gamification or through gadgets, apps, mobile phones और वो. तो हम अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे कि there is a very interesting concept in Ayurveda, also in GP, tongue-based diagnosis, right? जिह्वा परीक्षा. तो हमने एक ऐप बनाया, हम लोग सेल्फीज लेते रहते. So what we asked our youth कि रोज एक टंग का सेल्फी लो, वी कॉल्ड इट एज टंग फी, राइट? और रोज उसमें देखना कि उसमें कौन से लेयर्स है, आपका टंग पिंक है, वाइट है, उसमें कितने क्रैक्स है, मेरा क्रैक कितना है, अपने दोस्तों का कितना है, एंड इट रियली वर्क, राइट? जस्ट बाय मेकिंग इट मोर लाइक अ गेमिफिकेशन वी वर एबल टू एक्सप्लेन देम कि हाउ योर टंग इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम. Similarly, our primary product is with respect to Nadi, pulse. So we have computerized the Nadi Pariksha, the pulse-based diagnosis in Ayurveda. We have a device, we have an app, we have report cards and so on. So youth is interested to see what is happening, right? So we are providing those kind of reports. तो एक है gamification, जिससे आप youth को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनको वश में कर सकते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन देम हाउ डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट. सर टॉक्ड अबाउट एक्सरसाइज, आई विल गो स्लाइटली बियॉन्ड. हाउ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, हाउ म्यूजिक इज इम्पॉर्टेंट, हाउ वाटर इज इम्पॉर्टेंट, हाउ फूड इज इम्पॉर्टेंट, हाउ फूड वर्क्स एज मेडिसिन. वी हैव अ लॉट ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड कि कौन से सीजन में क्या फूड खाना चाहिए, क्या फूड नहीं खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए. We tracked so many people across the year and we showed how our digestive system behaves different in the winter season, in the rainy season. Specifically on specific Ekadashis, on specific Chaturthis, on specific Amavas, the numbers are different. सिर्फ कल्चर में है इसलिए शायद आज का यूथ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. If we can tell those people completely data-driven results कि ये ग्राफ ऐसे जाता है और ऐसे आता है, तो जब ये नीचे है तो आप प्लीज़ कम कैलोरी वाला डाइट. So directly we cannot tell them कि पिज़्ज़ा मत खाओ, बर्गर मत खाओ. They will not accept this language. But if we can tell them कि इन दिनों में ये करो, उन दिनों में प्लीज़ मत करो. So that kind of system we are developing, and I mean, I have been traveling throughout the world. The problem is absolutely universal. The problem is absolutely universal. So whatever we are creating from the holistic point of view, I think the world is ready to accept. When we received the National Startup Award, I got a chance to be in one of the largest conference in the Europe, and I interacted there with a Germany-based company. And when I was presenting this particular slide, कि कैसे moon cycle has an effect on our body, those people got very fascinated. Wow, how is it possible? And they do not know about shlokas, Ayurveda and so on, but they know about graph. Okay, the graph goes up, the graph goes down. They know this language. So it's language pe I received a huge project in Germany. So I'm taking Ayurveda to the Germany now. So it's very important that youth accepts it more like a discipline. एक दूसरे से बात करें, अपने आइडल से बात करें, गैजेट से बात करें. सब लोग बोलते हैं गैजेट से कम बात करो, but you can talk to them in a very creative way. And first of all, know yourself, and then accordingly adapt everything, whether it's medicine, whether it's your education, whether it's your job.
currently we are working with Tata Consultation Services, TCS, and it's a product in corporate wellness, right? So again, TCS is entering into Ayurveda. So you can have a very bright future if you first understand who you are, what you are capable of, what could be your future, and work accordingly. So all the best to the youth. Thank you. Thank you, Dr. Joshi. So now I'll ask Professor Tyagarajan. So whenever it comes to different aspects of the healthcare, so there are two components, healthcare providers and the people who receive it. Now, innovation is required in both the domains. Whoever is giving the care and whoever is receiving the care. Now, in the receiving of the care, that okay, पहले क्या होता था, patients directly window पे जाते थे, पर्ची लेते थे, directly डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर उनको कुछ सजेस्ट करता था, कुछ मेडिसिन्स लिखते थे based on the symptoms and all. अभी बहुत ज़्यादा उसमें इंटरवेंशन ये है कि आप पहले एक रिपोर्ट लेके आइए, कुछ डायग्नोस्टिक करिए, उसकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे डॉक्टर आपको सजेशंस देते हैं. हेल्थ गिवर स्पेस में है कि आप हर चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं. यहाँ तक कि अभी फ्यूचर में कभी ऐसा भी हो सकता है, मुझे किसी की कही हुई बात याद आ रही है कि राइट हैंड का स्पेशलिस्ट अलग होगा, लेफ्ट हैंड का अलग होगा. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन जब इतना ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है, उसके बाद भी बहुत सी ऐसी फील्ड है जो अनटच्ड है एज पर इंडियन सोसाइटी, एज पर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम. जैसे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन. हम देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ IPL चल रहा है, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट लीग इन वर्ल्ड हो चुकी है. बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को जॉब मिल रहा है, लोगों को जीवन जीने का जरिया मिल रहा है. लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं या उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं. जैसे कि हैविंग अ वेरी वर्ल्ड क्लास फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि हर टीम को चाहिए होगा, जो कि हर खिलाड़ी को चाहिए होगा, जिससे कि वो अपना IPL का एक भी मैच मिस ना करे. हो सकता है उसी से उसकी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाए. लेकिन ये अभी भी इतना अनटच्ड क्यों है? इसके बारे में लोगों को एज ए करियर ऑप्शन क्यों पता नहीं है और क्यों इसमें ज़्यादा लोग अभी जा नहीं पा रहे हैं? तो दैट्स व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, दैट व्हाट कैन बी डन दैट दिस स्पोर्ट्स मेडिसिन थिंग doesn't remain as one corner, but it can take the center stage because it directly correlates with youth, and that will be driving the future for the country. Thank you, Santosh. I think many of you probably are hearing for the first time sports medicine. What has got medicine to do with the sports? Already sportsman is a healthy man, right? So why this hell doctor is there, physio is there to take care of the injuries. So actually thanks for bringing out this thing. It's not only about sports, as we spoke, it's sports and exercise medicine as called in many of the advanced countries. Now we are expanding the scope also into wellness, mind and body. So a lot of overlap is there with other specialties also. Sports medicine now, you can see, I can quote the IPL or the football teams. If you see the team, maybe 11 players are there. But if you see how much are traveling in the bus, probably 50 people. So the support staff, the physios, trainers, analysts, nutritionists, psychologists, masseur, sometimes that is a bigger team than the original team itself. So previously we had only one coach will travel at the most, sometimes no coach also in India. The teams travel separately and you have one coach for 4 teams. So that also happens, but let's not come to that. It's about human resources and awareness, funding. So all are an issue. So we are trying to solve because we have to have more human resources. As he said, the right hand, left hand, separate doctor. Like that, from head to toe, there are different specialists in sports medicine. Human psychologist. There is one specialist for foot alone, podiatrist.
And then you have exercise physiologist, biomechanist, nutritionist, game analyst. That's so fascinating this field is. Each one can contribute so much. You know, in a 100 meters race in Olympics, everybody is watching. The final 0.01 second makes a difference between the gold medal to no medal. All of us know the legendary story of P.T. Usha madam. She missed the Olympic medal by Avishkar, right? But she inspired the entire nation. But with sports science and sports medicine, probably we could have got a medal that time with P.T. Usha. That is the inspiration that made us to form this institute and have this as a hub to give off sports medicine and sports science related services, education, research, all are very important in this country. So we have started courses on sports sciences, sports physiotherapy. We have been collaborating with the National Institute of Sports, Patiala, and offering a super specialty course in sports physiotherapy. So these people will be probably better than the foreign physiotherapists because our physios knows our people better than foreign physios. And the skills are imparted also. So it is just a matter of vision and support and executing things. And Government of India has launched many such schemes like Khelo India and new sports science, sports medicine centers, universities. This is really picking up this field. And all my students who have done sports science are well placed now. Most of them are abroad or doing higher studies or research or placed in various IPL, ISL teams or working for Sports Authority of India. So it's a young nascent field. When you say young, you have advantage, you are attractive and all these things, but you are also inexperienced. So this field will definitely grow because it can touch sports people, it can touch anyone who wants to do exercise or physically fit. So we can do a lot of things. So only we have not even a half a cup empty, is almost 99% empty, but we can fill it up nicely. Thanks, I think I have answered part of your question at least. Thank you, Professor Tyagarajan. Yes. आपने बहुत ब्यूटीफुली इसको केवल इस बात पे नहीं रोका कि हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन में आगे बढ़ना है, हमें इंडिया सेंट्रिक स्पोर्ट्स मेडिसिन में बढ़ना है, क्योंकि बहुत से गेम्स ऐसे हैं जो जिसमें हम टॉप पे हैं, जैसे कि आप कबड्डी, खो खो, उसमें जो इंजरी होगी शायद उसके लिए स्पेशलिस्ट हमें कहीं ना मिले, हमें अपने स्पेशलिस्ट उसके लिए बनाने पड़ेंगे जो हमारे एथलीट्स की बॉडी को अच्छे से समझेंगे, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारा कुछ हमारे कल्चर से एसोसिएटेड है. तो ये केवल यही नहीं है कि हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन कल्चर आगे बढ़ाना है, हमें इंडिया सेंट्रिक स्पोर्ट्स मेडिसिन सिस्टम को आगे बढ़ाना है और ये आपने बहुत अच्छे से समझाया. थैंक यू फॉर दैट. Okay, so now we'll move ahead, and next pointed question to Mr. Patel I'll ask that what are the challenges in establishing new startups in healthcare space, and then what are the incentives can be given so that it becomes much easier, and why, from where my question is coming, आज दुनिया में हमारा देश one of the top most countries जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्टार्टअप्स हैं वो किन्हीं और क्षेत्रों में हैं. हेल्थ केयर स्पेस अभी भी हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए. तो व्हाट आर द चैलेंजेस और कौन से इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं कि जिससे उसमें हमें सक्सेस मिले. So, Mr. Patel. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर ये, और मैं दोनों साइड से आंसर कर सकता हूँ इसको. आई विल ट्राई टू जज इट, आई मीन प्रोवाइड माय इनपुट फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम एज a co-founder of a healthcare company, as well as since I work with IIT Kanpur incubator, so I interact with a lot of other startups as well. At the moment in India, government of India and every state government is providing ample number of opportunities
from funding, fellowship, access to labs and everything if you want to build a startup, particularly in a product space. Whether it's a healthcare product, agriculture product, but if it's a product, technology-driven product particularly, you can easily get up to 1 crore rupees funding if the product is good. That becomes, because that's entirely merit-driven structure. You have selection process, multi-tiered selection process. So random selections are not there. In terms of challenges in establishing a startup, in general जितने challenge होते हैं कोई भी company startup करने में वो सारे तो हैं. Access to funding, building a team, all of these are there. But healthcare में एक particular additional challenge add हो जाता है because your gestation period is very long. In our company in primary health tech, the research part started way back in 2015 in IIT Guwahati, in Center for Nano. In 2018, we took a technology transfer from IIT Guwahati for 2 patents. 2018 onwards, we started working on, refining the product to bring it to the market. The product is not yet in the market. It will take another 3 months before we get the CDSU final certification. And this whole journey, it's been 5 years now, and we have a big team of 35 people. I'm the only non-technical person in the team. The rest of the entire team is MTech, PhDs from IITs and ISCs. All of them, need sustenance. So sustenance ke liye you need money. Thankfully, there are n number of government grants available, n number of government schemes available, whether it's Department of Science Technology, Department of Biotechnology, Ministry of Electronics, koi na koi funding scheme sabke paas hai. So far, till date, we have access to around 2.5 CR funding from grants and debt or equity based funding, only from the government. And additional 50-60 lakh we have raised from the private investors. तो gestation period long होने का reason बहुत simple सा है जो already बाकी panelists ने explain किया है कि drug discovery, healthcare product delivery, since you are dealing with people's health, you need additional steps before you bring the product in market. अगर आप app develop कर रहे हैं, आप कोई एक food product बना रहे हैं, your steps are significantly lower. We have done already 15,000 clinical trials in last 4 years. Yet वो कम पड़ जाते हैं जब आप CDSU certificate के लिए apply करते हैं. They'll ask for 5,000 more. We did a double blind with Army very recently. It was 100+ test double blind which Army did. But the moment we went to the next battalion, they asked again for a double blind, which they'll do. So healthcare में ये challenge है, but अभी healthcare के अलावा you have allied healthcare के बहुत सारे domain, right? Because digital and AI technology is booming. All of you would have seen, देखा होगा कि AI ML पे बहुत सारे startups आ रहे हैं, बहुत सारा innovation है, because data बहुत सारा generate हो रहा है. आप सिर्फ अगर phone लेके चल रहे हैं तो through your GPS, gyroscope and many other sensors that the phone still has, your phone will provide you the data कितने steps चल लिए आपने, steps चलने में कितनी जगह आपको धक्का लगा, कितनी जगह आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, and all of this translates into a lot of data points. Very simple data point like आपने अगर सबने घर में I think शुगर की टेस्टिंग मशीन देख ली होगी अब तक, या नहीं देखी तो अच्छी बात है, बट आसपास देखी होगी एक्यूश्योर की या किसी न किसी टेस्टिंग मशीन. वो मशीन्स रफली 25 to 30% इनएक्यूरेट होती हैं, एवरी सिंगल मशीन. तो अगर आपका ब्लड शुगर का रीडिंग 100 आया है, द एक्चुअल रीडिंग वुड बी एनीवेयर बिटवीन 75 to 125, एंड दैट विल बी ट्रू फॉर एवरी सिंगल होम किट. बट फिर भी सारे लोग टेस्ट करते हैं, एवरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स दैट बिकॉज इट कैन गिव यू अ ट्रेंड इवन इफ इनएक्यूरेट. दैट इफ योर एवरी सिंगल टाइम इफ योर रीडिंग इज कमिंग 200 एंड अबव, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव अ डायबिटिक tendency. If your reading is up to 125, 110, you are pre-diabetic. तो AI और ML वाले पोर्टल, AI और ML वाले सेगमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. फंडिंग के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर वाला इसको भी अब फॉर्चुनेटली अब इंडिया में खुलने लगा है. वी हैव लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट फोकस सपोर्ट, जहाँ पे जो लोकल HNIs हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं. Yesterday only I had a discussion with ICICI Bank, local branch in IIT Kanpur, and they are interested to connect their HNIs with the prospective startups जिनके product market में आ चुके हैं. So opportunities are ample. All you need is to focus on a challenge जो आपको बड़ा interesting लगता है. हमारे वाले product में भी मेरा interest बहुत seriously आना शुरू हुआ
3 years down the line, randomly मैंने टेस्ट करवाया था अपने ब्लड का, and I got to know कि my SGPT is through the roof. Doctor told me कि भाई fatty liver का issue होगा शायद. I got it tested. It was a grade 2. Grade 3 हो जाता, it would have been irreversible. Fortunately, test किया. I started taking the precautions. Next 6 months, it is all fine. So that is where the most innovation is needed. Even if you are not building a product, use data and AI and build those. Great, thank you. Thank you, Mr. Padil. Yeah, so I'll request Dr. Joshi to add few points. एक ही point add करना था. I mean, he has covered all the points. Because we are sitting into the G20 summit, when we grabbed the Germany-based project, and it has started actually, but we have to do a lot of things. We have to repeat a lot of things again for Germany. I just want to make a very small challenge here that yes, we want to be global leader, but then we need a framework or ecosystem which makes it simpler for Indian products or Indian systems, or in this case, Indian medicine, to take to the world. So I think we need a framework. That's a small point I wanted. Yeah, correctly said. Framework is required because that helps in even devising the policies and other things so that we can move ahead in that direction. Okay, so with that, we'll move to next question, which is related to our G20 partners. So this Y20 event is happening in consultation with the G20, which is right now India is heading as president of it. So question to Professor Shukla and Professor Niti Kumar is that creating these cross-country collaborations, what else can be done? Currently, there is like lot of collaboration is going on. बहुत ज़्यादा यहाँ की labs, other G20 countries की जो labs हैं, उनके साथ collaboration होते हैं, research projects होते हैं. क्या और किया जा सकता है if both of them can say one point each? Professor Cloud or Abhi, what I have seen in the last decade or so is from the government side, of course, there are many funding opportunities, international collaborations करने के लिए, but बहुत सारे inter-institutional collaborations भी हो रहे हैं अभी. मुझे जो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ collaboration करें so that we get access to the technology platforms or infrastructure that is available abroad. हमें ऐसा भी develop करना चाहिए, अपना भी infrastructure ऐसे करना होगा that even people sitting in Europe or in States, they want to come and use our technology, our platforms, our setup. So it should be a two-way street. अभी बहुत सारा चीज़ों में ऐसे हो रहा है that collaboration कर रहे हैं just to get access to high-end facilities or equipments. That is completely fine. But going forward, we have to develop हमारा own capacity building करना होगा. हमें अपना infrastructure improve करना होगा, science and research के field में, so that बाहर के लोग भी यहाँ पे आएँ because उनके पास उस चीज़ों का access नहीं है जो हम यहाँ पे develop कर सकें. And if we can strengthen our own capacity, I think this will further catalyze additional collaborations across country, in addition to what is already going on. Thanks. Just to add on Arun's point, मुझे लगता है बहुत concrete steps की ज़रूरत है जहाँ पे different academic institutions across different countries, farmers and also philanthropic organizations जो कुछ projects को fund करते, they all have to come to one table and they have to systematically work together. जैसे एक छोटा example देते हैं, at least for we are fortunate in the case of malaria, हम लोगों के पास we have a consortium मतलब multiple people are working in it. This is Medicines for Malaria Venture. हम लोग different time zones में research labs हैं, chemist and biologist. हम लोग we have online meetings जहाँ पे हम know how share करते हैं, हम protocols share करते हैं. Plus अगर कोई data एक lab में
किसी मॉलिक्यूल के लिए जनरेट हुआ है तो उसका क्रॉस वैलिडेशन दूसरी लैब में भी होता है। उससे क्या होता है कि एक अगर कोई मॉलिक्यूल में दम है तो वो आगे लेकर जाते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल नहीं अगर वो मॉलिक्यूल प्रॉब्लमैटिक है तो उसको उसी टाइम ही ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। जैसे कहा जाता है ड्रग डिस्कवरी में फेल अर्ली इज़ बेटर, बिकॉज इफ़ यू फेल अर्ली you do not waste your resources and time on a failed molecule. You utilize that time and resources for a better molecule. So इसीलिए मुझे लगता है कि एक जो हमेशा जैसे मैं कहती हूँ trust, wherein people from different backgrounds they work together. The pharmaceutical company also comes on together with academic institutions and philanthropic organization. जैसे हम लोगों ने देखा है टाटा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, गेट्स फाउंडेशन फंड करते हैं, आजकल अभी फाइजर एंड ग्लैक्सो इज ऑल्सो फंडिंग. सो ऑल ऑफ देम अगर they come on the table, but systematic efforts chahiye. We need organizations which bring all of them together on one table so that they can contribute optimally. These are my thoughts. Thank you very much, Dr. Shukla and Dr. Kumar. So now let's give a big round of applause for all the panelists, what they have said. And now we'll open this session for questions. So audience, please raise your hand. And whoever I see first, because I might not say. So here I see one person. Please give mic to him. Oh, so somebody is raising two hands. That counts one. So please ask your question. My question is to all the panelists, and including the moderator, sir, and especially Neeti ma'am, since she herself is a scientist. We were talking about future of health. And I was hearing everything about the discoveries and breakthroughs in medicines and vaccines. But especially in my point of view, I don't think that these are the future of health. I think that building the immunity in such a way. So please, questions. So that, because that will help us to frame the answer. So you just, I think everybody, all the panelists are well versed in their field. So if you ask question, they'll give you answer. So just one line question that will help us to understand the question better. What advancement can we bring in the field of improving the immunity of human species? Great, thank you. We got the question. So any of you, whoever wants to answer, immunity, yeah. Immunity is my forte. So सबसे पहले तो you should feel the wellness, the well-being within. अंदर से पहले फील करना है आपको कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, क्यों है, and that immunity has to be holistic, physically, psychologically, mentally, and so on. और मेरी कंपनी उसी पे काम कर रही है, मतलब what we are working on is the same. We have app, we have product to improve the immunity of the person holistically. So we have a 6-fold product. So we check your pulse, we check your tongue, we check your different types of parameters, and we actually give a very personalized, prakriti-driven recommendation with respect to sleep, with respect to diet, kya khana hai, kya nahi khana hai, with respect to music, with respect to yoga, if panchakarma treatment is needed, and so on. And to increase the immunity, the current what we see on internet is या तो आप अलग-अलग supplements खाओ या multivitamins खाओ या आयुर्वेदिक काढ़ा लो या उस तरीके के हम देखते हैं. But actually you can increase your immunity very naturally. मतलब अच्छी नींद, अच्छी exercise और ठीक टाइम पे खाना, क्या खाना है, कैसे खाना है, and so on. That actually can improve your immunity, and that is enough. That is enough. So future of health. Right now, we all are into the illness kind of field, but going further, I think we want to go more into wellness or well-being. So completely thinking about wellness, completely thinking about immunity. Your question is absolutely right for the youth, क्योंकि हमें अपने आप को संभालना है और आगे जाना है. Thank you. Can I add a point? Yeah. So after Kumar. Just one point I want to add. इम्यूनिटी सिर्फ खाने पीने से नहीं होती है, इम्यूनिटी आपकी एनवायरनमेंट से भी होती है.
इम्यूनिटी अगर आपको इन्फेक्शन है और आपने अपनी दवाई का कोर्स पूरा कंप्लीट करा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जैसे वन हेल्थ कहा जाता है ना, उसमें आपको ये पता होना चाहिए हमारी इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे एनिमल्स, हमारे जो पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में आते हैं, जब तक हम उनको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, हमें इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स जो डॉक्टर जोशी ने कहा दैट्स इम्पॉर्टेंट, बट उसके अलावा वी नीड टू नो आर एनवायरनमेंट, आर पैथोजेंस ऑल्सो, कि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है सर। हम अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दवाइयाँ हम गलत तरीके से खा रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऑल दैट अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, उसके लिए आपको साइंस का स्टूडेंट या साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को टैम्पर कर रहे हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी कैसे ख़राब हो रही है। अगर हम गलत तरीके से दवाइयाँ को हम वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट वाटर में डिस्चार्ज कर रहे हैं, उससे कैसे हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा है, और हम पैथोजेंस को कैसे और ड्रग रेजिस्टेंट बना रहे हैं। सो इट ऑल कम्स ऑन वन हेल्थ। Thank you. Dr. Thiagaraju. I think our friend asked about the future of this immunity. COVID has taught us, like, it affected some people and it didn't affect some people. For example, I ended up with no COVID infection for the past 1, 2, 3, 4 waves. Most of my family members had. But you name some simple cold, I'll get it. So my probably genome is different, and probably Santosh's genome might be different. So the genome sequencing could be, is coming up to the mass level now. And based on the genome sequencing, maybe we can have an immunity profile of who's going to be affected, who can be affected. And probably we can make a custom designed vaccines for these kind of people. Okay, you are prone to this, and we'll have a vaccine for you for B, E, F, and G, something like that. I think genetic medicine, genetic sciences are going to play a large part in future. Right. So in summary, we can say we have to do active ways, passive ways of doing it, special attention, or you change your lifestyle. So basically, system and surrounding, both should be taken care of to gain the proper balance. Okay, now backside there. And also know your genes. Yeah, obviously. Back there. Yeah. So my question is to Dr. Joshi. So we have a common notion that Ayurvedic medicines do not have any side effect. So how far is it true? So if you allow, I have a personal experience if I can share. I was diagnosed with osteochondritis desiccation. And when I reached to AIIMS Delhi, so there I realized that it was the Ayurvedic medicines that could have been there could have been the side effects of Ayurvedic medicine, and because of which I was facing the issue of osteochondritis desiccation. So I want to know that, is it true that Ayurvedic medicines do not have any side effect? Very tricky question. So I'll not stick to allopathy, Ayurveda only, but homeopathy, all kinds of pathies. All pathies have pros and cons. So whether this pathy has side effects or not, that has a thought. So all pathies have side effects, first of all. Mr. Patel talked about the clinical trials, right? So कितने क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद कोई मेडिसिन मार्केट में आया है, वेदर इट्स आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, और वो कितने डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन पे टेस्ट किया गया, मतलब उसके बाद ही पता चलता है कि किसी पे साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा. Because Ayurveda has been in India for last 5,000 years, we feel and we, so I'm talking about as a data scientist now, we feel that it has been tested on so many people, and so it is regulated, and so it does not have any side effects. But again, the system is so personalized and so subject driven. There could be cases where there will be side effects. For example, Sir talked about genetics and so on. Similarly, in Ayurveda, there is Prakriti based. So if Vata person gets medicine of Kapha person by some mistake, then there will be side effects, right? I hope I have answered your question, that there will be pros and cons, and but you have to make sure that where you are going, I mean, AIIMS Delhi is the best, but where you are going, how you are treating yourself,
and as she rightly said, whether you're doing the course in a complete way. So taking the medicines on time, in quantity, along with all the pathya, and so on. So whether you're following it up or not, so that makes side effects happen or not happen. Thank you. Can I just add one point? It's a very large question, actually. It's sometimes it's not only about the medicine or the system. You have to look at the formulation, how pure is the drug, is there any impurities in the drug? So all these things matter. So while hunting for a water purifier, I came across in Amazon, there is, for 300 rupees, I have a TDS meter. So I'm going to use that and see whether my water is going to be pure. And similarly, the engineering fraternity, if it can bring innovations in checking the drugs purity at your, say, kitchen, at your dining table, so that would be great. So this is my request to the engineering faculty. Thanks. So I'll just answer it very simply, and adding to what Dr. Joshi said, right? Whether it's allopathic, homeopathic, or Ayurvedic, अगर आप पानी भी ज़्यादा पी लेते हो तो नुकसान करता है, पानी कम पियोगे तो भी नुकसान करता है, right? So what you are putting, and there is always a threshold of every single thing. Whether it's Ayurvedic medicine, काढ़ा या कुछ भी, आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा लोगे तो वो बॉडी को नुकसान करेगा. Next question. Next question. Yeah. Yeah, so students from international community, they'll be asking some questions. Please go ahead. Okay, so my name is Atanu Roy. I'm from Bangladesh, as I'm an international student over here. So my question is that as the future of healthcare solutions will be digitized in the future, and as we're moving more and more towards AI and machine learning to be used, so, and we're getting connected more and more to the internet, what is your plan as a startup and bringing out more devices in the future for monitoring solutions and other stuffs to ensure data and digital security, and what technologies can be used to prevent these security breaches and protect our privacy? Very pertinent question. Thank you for that. So data security in healthcare space. Yes, so ML driven, AI driven, and lots of data is getting created. I'll start slightly differently. So in the morning, I was just having fun with ChatGPT, and I asked a question about one of my friends who has received one award, right? So I entered into ChatGPT about him. I asked questions about him to ChatGPT, and it gave me completely different, some different person in the world. So, so when it is with respect to ML or AI, how you train that particular system makes a lot of difference. So the data which is used and so on. And so in our case, because we have a lot of data in the text format, we are trying to use that in different ways. And now we are getting data from the patients. We are using that in a completely different way, and we are running ML engine on that. So when we get data from different doctors or different hospitals or directly from common people, the data security plays the majority role. And now we are working with the EU region. So at their completely GDPR-based data security compliances we have to follow. The security happens at various levels. Maybe उसके लिए मतलब ये forum नहीं है कि किस तरीके का चाहिए. But when we go into medical domain, there are 3 to 4 types of users. One is a common user, which is a patient. One is a doctor, which is basically at a coaching level. One is more like an analyst, so which is taking data from many colleges or many hospitals or many locations and analyzing that. And then there is a managerial person who is making use of all this data in the commercial. Right? So, so making data available to each of these users in a very controlled and anonymous way, and so on. So if we see more like a HIPAA compliant system or a GDPR compliant system, then that it takes care of the complete data security part. So GDPR, ML,
and say, let's say that the whole system based on the AWS server that makes a complete system completely secured, simple, right from accessibility point of view up to the security part. So I hope I have answered in a simple. Thank you. Next question. Here. Hello everyone. My name is Abhishek Thakur. I am from DAV College, Kanpur. I want to ask question from Joshi sir. Sir, you told that we have to go with our roots, but in the modern generation or modern lifestyle, in corporates, we have to work for 12 hours, 14 hours of work, sitting in a computer table. So, and this lifestyle is a necessity, I think, and people are getting paid for it. So aren't you contradicting your statement that we have to go to the roots by working 14 hours and giving a certain time of our cycle? And So I think the question is clear. So please answer. I think Dr. Tyagarajan has already answered this question in a way, but I will still answer. Yes, so आयुर्वेद में बोला गया है कि नाड़ी परीक्षा सिर्फ सुबह करना चाहिए, empty stomach करना चाहिए, and practical नहीं है, because the doctor has to earn, so they are taking pulse in the morning as well as in the evening. Similarly, 8 घंटे का sleep होना चाहिए, but काम करना है, as you rightly said, 12 घंटे काम करना है, उसके बाद खाना पीना भी है, फैमिली के साथ भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ बात भी करना है, तो 12 घंटे प्लस 8 घंटे की स्लीप प्लस 4. So how do I manage? So basically that is exactly what is holistic. So you have to understand कि वो अगर 12 घंटे काम करना ही है, if that is the job requirement and if that job description you have accepted, तो वो 12 घंटे को आप किस तरीके से split कर सकते हो? Maybe 1 hour of work, 10 minutes of exercise, again 1 hour of work, again 10 minutes of break. Maybe break system can be implemented in between, maybe breathing exercises, in between small music. तो वो करना ही पड़ेगा. So you have to make sure that you are accepting the traditional ways in the modern way. That's Thank how you. we have to do it. So But we can due talk to offline. lack of time, we'll just have one more question from backside. Red shirt. Good evening, professors. Myself, Om Gupta, Vasudev Kudumbakam. G20 is a great innovation for world. Question. So can the G20 motto, one earth, one family, one future, under the new implications of machine learning and artificial intelligence, as it is both boon and bane, and second, under biotechnology field for future of health and all areas, will G20 fix one earth, one family, one future in the upcoming era? Sure. So I'll take one more clubbing question. One just. Here. That lady. No, backside. Yeah, that red. Give to that lady. Just let her ask one question. Okay. Hello, thank you, teachers. So it was very mindful discussion, but मुझे ये लगा कि the discussion was all about so much human centric, कि हम लोग humans की help कर रहे हैं. You talked about कि we are doing so many clinical trials, but एक thought आता है कि clinical trials is happening on those rats जो बोल नहीं सकते अपनी बात. So हम कैसे balance कर सकते हैं between the ethics कि animals भी अपनी life जिए जैसे We got the question, yes. So thank you. For that, I will start because I also work with animals. So what do? We go through a very rigorous process and we have to give response to committee, our ethics committee, that we are not using one single extra animal which is like just for fun. So exactly. So what we have to do, we have to be very careful about whatever resources, not only animals, even the plants. We should not destroy anything. So that's why the concept came system and surrounding. We have to create samanvay between both, and then only you can survive. So I think with this, I will try to close this session due to the lack of time. Panelists will be around. You can personally approach panelists during lunchtime, during the exhibition time, and they will try to answer your question. Thank you very much
for all the cooperation, and thank you. Big round of applause for all the panelists. Thank you. Okay, so now I'll request Ms. Kumar to take the proceedings. Thank you, sir. I express my sincere gratitude to all the panelists for their valuable contribution. This discussion has been incredibly informative, and we all have our takeaways. Thank you for sharing your expertise and enriching our understanding on this topic. I would now request Professor Santosh Mishra to kindly felicitate Professor Arun Shukla. Dr. Anirudh Joshi. Dr. Niti Kumar. Dr. K.A. Thiagarajan. Mr. Rahul Patel. Now, I request all the panelists to come forward for group photograph. That's fine. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, before we break for lunch, there are a few announcements. I would request everyone to visit the stall outside, which showcases research and development stalls of IIT Kanpur, startup incubation and innovation center stalls, science exhibition by Shiksha Sopan and Opportunity School students, exhibition on going beyond our confines, Chale Seema Ke Pare. Kindly pick up your lunch packets from the designated area outside and help keep the venue clean by disposing of all trash in the bins provided. Let's work together to maintain a safe and sustainable environment for everyone. Thank you for cooperation. Our next session will start at 2:30 p.m.
अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंक्लूसिव एम्बिशियस डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंक्लूसिव एम्बिशियस डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंक्लूसिव एम्बिशियस डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी.
Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit,
has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable.
The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air,
and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas.
The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe
comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, future of work, industry 4.0, innovation and 21st century skills. Number 2, climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. Number 3, shared future, youth in democracy and governance. Number 4, peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, health and well-being and sports, agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, future of work, industry 4.0, innovation and 21st century skills. Number 2, climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. Number 3, shared future, youth in democracy and governance. Number 4, peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, health and well-being and sports, agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas.
The 5 themes of Y20 India are: number 1, future of work, industry 4.0, innovation and 21st century skills. Number 2, climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. Number 3, shared future, youth in democracy and governance. Number 4, peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, health and well-being and sports, agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: number 1, future of work, industry 4.0, innovation and 21st century skills. Number 2, climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. Number 3, shared future, youth in democracy and governance. Number 4, peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, health and well-being and sports, agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: number 1, future of work, industry 4.0, innovation and 21st century skills. Number 2, climate change and disaster risk reduction,
making sustainability a way of life. Number 3, shared future, youth in democracy and governance. Number 4, peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, health and well-being and sports, agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5,
health and well-being and sports. Agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of
that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision.
भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव
or action-oriented. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family,
one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable.
The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड. Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air,
and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, Making Sustainability a Way of Life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, Ushering in an Era of No War. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, Making Sustainability a Way of Life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, Ushering in an Era of No War. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas.
The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, Making Sustainability a Way of Life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, Ushering in an Era of No War. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, Making Sustainability a Way of Life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, Ushering in an Era of No War. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this I belief, request all the Pancha students sitting Mahabhutas. on the balcony to please come down and sit in here downstairs. We have to vacate the balcony. All the students sitting in the balcony, please come down and be seated here.
Please take front rows. Students sitting at the back, please come in front and be seated in the front. Volunteers, please instruct the students to take front seats. Good afternoon, everyone. I request all of you to please keep your mobiles on silent or flight mode and avoid any kind of movement in the hall during the event. Also, please maintain silence during the summit to ensure that all attendees can hear and enjoy the presentations. I again request everyone to please come and take the front seats.
Ladies and gentlemen, let's move on to the next segment of the summit today. It gives me immense pleasure to inform you that we have our keynote speaker, Mr. Amit Agarwal, with us. I would like to welcome Mr. Amit Agarwal, who is founder and CEO of NoBroker.com, to kindly deliver his keynote speech and share valuable insight with us. He is alumnus of IIT Kanpur, who graduated from Civil Engineering Department in the year 2000. Sir, please. Can you hear me? So I am not sure whether should I use English की हिंदी, मुझे दोनों अच्छे से आती है, हिंदी ठीक है। तो हिंदी में ही बात करते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आके कुछ ज़्यादा ज्ञान व्यान देने का नहीं है। मैं खुद भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं बहुत बोर होता था जब बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाते थे लोग। तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा अपनी जर्नी के बारे में बताने का। And what I would look most forward to is any questions that you have, anything that I can add value to, anything that I can answer. So my story is as follows. My name is Amit Agarwal, as we just discussed, and तो मैं यूपी में बॉर्न हुआ हूँ और मैं स्टार्टअप चलाता हूँ। स्टार्टअप का नाम नो ब्रोकर है, एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट नो ब्रोकर। लेकिन जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि स्टार्टअप में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस का, या फिर आपके पेरेंट्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस का। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे मेरे फैमिली में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे फादर यूपी में गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरी मदर हाउस मेकर थी। तो और हम अलग अलग छोटे छोटे शहरों में यूपी में रहे हैं, गोंडा में, हमीरपुर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई ऐसा बड़ा स्कूल नहीं, कुछ नहीं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। तो अच्छी न्यूज़ तो पहली बात ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बैकग्राउंड क्या है। आप अगर फाइट मारेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद मैं पढ़ाई में अच्छा था और फिर मैं यहीं इसी इंस्टीट्यूट IIT कानपुर के अंदर में पढ़ा और उसके बाद मैंने MBA किया अहमदाबाद से। उसके बाद फिर मैंने वही किया जो सब लोग करते हैं कि जो जॉब मिल रही है, जो ज़्यादा पैसे दे रही है, वो जॉब आप ले लो। तो मैंने वही किया, जो जॉब पैसे ज़्यादा दे रही थी मैंने वो ले लिया। ये चिंता नहीं करी कि ये मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, और जुड़ गए। और मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग बेसिकली ज्वाइन करी, PwC की, और मैंने उसमें करीब 10 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने ANZ बैंक के अंदर ज्वाइन किया बैंक में, और क्योंकि वो ज़्यादा सैलरी दे रहा है, और ऐसी लाइफ चलती गई और मैं मिड-30s में आ गया। तो आप लोगों को तो बहुत एडवांटेज है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इन योर 20s। मैं तो बेसिकली मिड-30s में मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए क्या। तो द लाइफ वाज गोइंग ऑन। मैं एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहा था। फिर मैं एक स्टार्टअप का इंटरव्यू देने गया बेंगलोर, और वो स्टार्टअप वाले CEO ने मेरा इंटरव्यू लिया और सिलेक्शन उसमें हो गया। लेकिन जब मैं वो इंटरव्यू दे रहा था तो उस रूम में एक पोस्टर था, और उस पोस्टर पे कोट है, और शायद आपने सुना हो, मार्क ज़करबर्ग का, which basically says not taking risk is the biggest risk in life। आप अगर लाइफ में जोखिम नहीं लेंगे, वो सबसे बड़ा जोखिम, रिस्क ऑफ omission is far far bigger than the risk of commission। तो हम लोगों को लगता है कि अच्छा क्या अगर हम एक चीज़ करें, 20 चीज़ करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम कोई स्टार्टअप करें हमारे 1 साल वेस्ट हो गया तो क्या होगा। बात वो नहीं है। बात ये है कि आज से 20, 30, 40 साल बाद जब रिटायर हो गए और आप घर में बैठे हुए हैं, तो आपके दिमाग में ये तो नहीं आएगा कि काश मैंने ये चीज़ कर ली होती जो मेरे किसी दोस्त ने करी। तो रिस्क नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। और रिस्क केवल स्टार्टअप का नहीं है, रिस्क बेसिकली अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में रिस्क है, रिस्क जॉब चूज करने में है, घर खरीदने में, हर चीज़ में है। पर रिस्क नहीं लेना बहुत बड़ा रिस्क है।
So somehow this thought basically kept on going in my mind that why is it that I am working for him? Why shouldn't I try something of my own? लेकिन अब जब आप मिड 30s में हो जाते हैं तो फिर बेसिकली आपके पास होम लोन की EMI है, एंड माई वाइफ वी वर एक्सपेक्टिंग आवर सेकेंड किड, तो शी वांटेड टू बेसिकली टेक अ ईयर ऑफ, और अगर मैं स्टार्टअप करता तो उसका मतलब ये है कि वो छुट्टी नहीं ले पाती। फिर हम लोगों ने सोचा है कि अगर अब नहीं किया मिड 30s में तो कभी रिस्क नहीं ले पाएंगे, तो मैंने जॉब छोड़ दी, और बहुत अच्छी पैसे वाली जॉब थी और फिर हमने nobroker.com बेसिकली स्टार्ट किया। तो आई जस्ट टेल यू कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट, कितने लोगों ने नो ब्रोकर सुना है? Some people have heard. For all the others, nobroker.com is basically a platform which connects owners and tenants, buyers and sellers directly with each other. तो प्रॉपर्टी का जो ओनर है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो, और किराएदार जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो, और जो खरीदने वाला है वो, उनको डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया। कोई ब्रोकर नहीं आया, कोई बिचौलिया नहीं आया। तो आप साइट पर जाइए और आप बेसिकली डायरेक्टली डील कर लीजिए, और फिर उसके अंदर बेसिक फ्री है, पर कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए उसके अंदर पेड पैकेज है। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने सोचा। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? आया इसलिए क्योंकि हम लोग जब कभी भी शहर बदलते थे, घर बदलते थे, तो हमें लगता था यार ये ब्रोकर बहुत पैसे ले रहा है, और इसका काम केवल दो लोग कनेक्ट करना है, ये मेरा भला भी नहीं सोच रहा है, तो इसको अपनी डील फिनिश करनी है, तो जल्दी जल्दी डील फिनिश करना चाहता है ये। तो क्यों हम इसको बेसिकली इतना पैसा दे रहे हैं, जबकि आज इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इफ़ आई वांट टू सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू शाहरुख खान, आई कैन सेंड इट, ही मे नॉट एक्सेप्ट इट बट आई कैन सेंड इट। तो जब मैं टेक्नोलॉजी से हर किसी को कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी ओनर क्यों नहीं कनेक्ट कर सकता? जब लड़के लड़कियाँ टिंडर भी दूसरे से बात कर सकते हैं, तो मुझे इस ब्रोकर की ज़रूरत क्यों है टेक्नोलॉजी होने के बावजूद? सो दैट वाज आवर फंडामेंटल क्वेश्चन। तो हम लोगों ने सोच के हमने स्टार्ट किया कि यार इसको टेक्नोलॉजी सॉल्व करना चाहिए। और हमने जितने भी और साइट्स देखे, जो 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक्स, हाउसिंग, तो सबके सब जो है बेसिकली ब्रोकर लेड थे, मतलब उसमें ब्रोकर प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकता है। तो फाइनली कितना भी चमकीला साइट हो, फाइनली उसके एंड पे ब्रोकर बैठा हुआ जो आपसे पैसे लेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? तो हमने nobroker.com स्टार्ट किया। और मैं बताना चाहूँगा कि मुझ जैसे लोग जो यहाँ स्टार्टअप के बारे में आके बात कर रहे हैं, उनसे ना बहुत ग्लैमरस फील होता है स्टार्टअप, लेकिन है बहुत मुश्किल। तो फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट हिज स्टार्टअप शुड आल्सो नो दैट it's a difficult job, it's a arduous task, so you need to be prepared for it. तो स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट बना दिया, घर पे बैठे हुए हैं, बिस्तर बैठे हुए हैं पैर मोड़ के, और 5 साइट पे 5 कस्टमर हैं। अब और दिमाग में लग रहा है कि अरे यार अगर आज जो है ऑफिस चले गए होते तो इतने पैसे मिलते, जो कि अब नहीं मिल रहे हैं। जितने भी फ्रेंड्स हैं वो पहले कॉल करेंगे कि अरे वाह तुमने बहुत अच्छा किया, काश हमारे पास भी करेज होता, हमने भी जॉब छोड़ी होती, बहुत अच्छा किया तुमने स्टार्ट किया। और फिर वो बिजी हो गए अपनी लाइफ में, एंड देन यू आर ऑन योर ओन। और उसके बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टर को कि आप IIT के हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोग बराबर हैं इन्वेस्टर की नज़र में और कस्टमर की नज़र में। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इन्वेस्टर को ना कस्टमर को। उसको फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कितना उसकी बेसिकली मार्केट में डिमांड हो। फिर हम लोग इन्वेस्टर्स के पास गए, सोचते हुए कि भाई हमारा आइडिया तो अच्छा है, अनोखा है, तो हमें इसमें भाव मिलेगा। कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला कि यार ये हुआ कहाँ है, किस कंट्री में हुआ? तुमने कहीं अमेजोन का कॉपी किया है, तुमने किसी ऊबर का कॉपी किया है, किस कंपनी का तुमने कॉपी किया? कहीं तो होगा इसका इक्विवेलेंट वर्ल्ड में। क्या कहीं है नहीं, क्योंकि US में जिलो है जो कि 99 एकर्स की तरह ही है। तो हमने कहा हमें नहीं पता कि और कंट्री में क्यों नहीं हुआ। परहैप्स वहाँ पर ब्रोकर के एग्जाम होते हैं, परहैप्स वहाँ ब्रोकर का सर्टिफिकेशन होता है, परहैप्स वहाँ पर वो कैश में नहीं लेता, वो इनकम टैक्स पे करता है, वो रेगुलेटेड एंटिटी है। इंडिया में कुछ भी नहीं है ऐसा, तो इंडिया में नहीं है, हमें इंडिया का पता है। पर बहरहाल तो फिर housing.com करके बेसिकली आपने कई लोगों ने सुना होगा, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जो कि फाउंडर ने किया था, और उसको साउथ बैंक ने $90 मिलियन की फंडिंग दे दी थी। उसके बाद रियल एस्टेट में एकदम ही फंडिंग बंद हो गई। तो हम लोग 1 साल तक लगे रहे, और ये सब IIT IIM का जितना भी रॉब दाब था वो सब नीचे आ गया 1 साल में बिना पैसे के। बट द ओनली थिंग विच बेसिकली विच वी डिड वाज दैट वी केप्ट ऑन ट्राइंग। हर किसी मीटिंग में जाकर उतनी ही जोर शोर से इन्वेस्टर के सामने पिच करना जैसे कि पहली बार पिच किया हो।
चाहे मन में लग रहा हो कि यार यार घर जाके सो जाए, थक गए, अब क्या करें, लेकिन हर मोमेंट पे कंटिन्यूअसली फाइट मारना और ये अज्यूम करना कि यार एक ही तो चाहिए इन्वेस्टर, कोई एक ही तो, 19 लोगों ने ना कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो चाहिए 20 मीटिंग में से, एक ना कर दिया तो हो जाएगा। तो ऐसे करते करते फाइनली हमको एक इन्वेस्टर मिला, विच वाज सैफ पार्टनर्स, विच इज नाउ कॉल्ड एलिवेशन पार्टनर्स, और उन्होंने हमको $3 मिलियन उसने हमको फंडिंग दे दी। तो हमें बहुत खुश हो गए हम लोग कि ठीक है अब स्टार्ट, और फिर हमने स्टार्ट किया। पर उसके बाद फिर housing.com बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस बेसिकली इम्प्लोडेड, तो housing.com बंद हो गया। तो रियल एस्टेट का एकदम, रियल एस्टेट इन्वेस्टर रियल एस्टेट से एकदम दूर भागने लगता कि इस इंडस्ट्री को तो हम फंड करेंगे ही नहीं, तो हमें कोई फंड करने को तैयार ही नहीं। और बट फ्रॉम डे वन वी वर एक्सट्रीमली फ्रूगल। तो हमको ये था कि यार हम ना इस पैसे की बहुत इज्जत करेंगे जो इन्वेस्टर ने हमें दिए हैं, एक पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम कभी किसी और इन्वेस्टर से मिलने किसी और सिटी या किसी और कंट्री भी जाते थे, तो 3 एडल्ट 3 फाउंडर्स हम लोग mid-30s में, हम लोग एक्स्ट्रा बेड डाल के रूम में रह लेते थे, लेकिन 2 रूम नहीं लेते थे, जबकि हमारे अकाउंट में 18 करोड़ थे फंडिंग के। कभी गर्मी हुई तो हमने कभी एसी नहीं लिया, वाटर कूलर लिया, वो भी रेंट पे, कि 2 महीने की तो बातें चला लेते हैं। तो ये हम करते रहे कि हम बेसिकली बहुत ज़्यादा कंजूसी से हमने चलाया और बहुत पैसे की इज्जत करी। तो धीरे धीरे हमारे कस्टमर्स बढ़ने लग गए। उसके बाद एक दिन तो हमने पैसे बचाने के लिए, हमने बजाय इसके कि हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस लें, हमने एक घर ले लिया। तो घर के अंदर बेसिकली जैसे HSR लेआउट करके बेंगलोर में जगह है जहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो वहाँ पे हमने घर ले लिया था जो 3 मंजिला घर था, किचन विचन उस सब था, उसी में हम लोग काम करते थे। तो एक दिन हमने देखा कि घर के बाहर 70-80 लोग इकट्ठे हो गए हैं। लगा यार कोई ये प्रोसेशन हो रहा होगा, राजनीतिक कुछ पॉलिटिकल कुछ प्रोसेशन हो रहा होगा। फिर देखा तो वो सब लोग आके गाली गलौज करने लग गए और हमारे एम्प्लॉयज़ को मारने लग गए। तो मैं समझ में आया कि सब ब्रोकर हैं। तो ब्रोकर्स को बेसिकली पता चल गया कि भाई ये ब्रोकरेज हटाकर ये सीधे कनेक्ट करा रहे हैं प्रॉपर्टी ओनर को और टेनेंट को, तो हमारा बिजनेस चला जाएगा, कस्टमर का फायदा होगा पर हमें नुकसान हो जाएगा। तो 70-80 लोग आ गए और उन्होंने बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज़ को मारना शुरू कर दिया और एकदम पैनिक हो गया। ऑफिस में जितनी लड़कियां थी सब रोने लग गई और एकदम ह्यूजली पैनिक हो गया। उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि अंदर आकर कंप्यूटर सब तोड़ दें और ऑफिस बंद करवाएं। अब उनको ये क्लाउड का तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि आप तोड़ भी दोगे तो क्लाउड है, आप वापस लैपटॉप लेके वापस शुरू कर सकते हो, बट उनके दिमाग में था कि यार हम ये कंपनी बंद करानी है। तो आयरन ग्रिल डोर था, वो आयरन ग्रिल डोर हम लोगों ने बंद कर दिया। हमने अच्छे बच्चों की तरह हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस की जीप आ गई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस की जीप आ गई है, हमने पुलिस से बात करी है, हम जीप में बैठे हुए हैं, हम फाउंडर जीप में बैठे हुए हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और ब्रोकर वहीं है। तो हमें लगा यार एक मिनट, हमने बुलाया था ना लेकिन हम क्यों जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, ब्रोकर क्या हुआ, उसको पकड़ना था ना। पर आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत जगह लोकल ब्रोकर्स आर मच मोर पैली विद पुलिस। हमारी मतलब हम इंजीनियर की ऐसे स्टूडेंट्स का कौन सुनेगा कि जो है हमारा इतना कांटेक्ट था भी नहीं पुलिस में। और फिर पुलिस से हमें समझा रही है कि इनके खिलाफ कुछ मत करो, लोकल लोगों से दुश्मन लेने का फ़ायदा नहीं। बट तब हमने वो आयरन ग्रिल डोर बंद कर लिया और वो दिन चला गया। लेकिन उसके बाद हमें काफ़ी दिक्कत हो गई। तो बेसिकली ब्रोकर्स फिर अगर कोई भी हमारी वुमेन एम्प्लॉय जब घर जाती थी रात में, तो ब्रोकर उनको चेस करते थे घर की तरफ। बहुत सारी जो मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई थी वो उन्होंने डैमेज कर दी। तो बेसिकली हमें समझ आ गया यहाँ रह ही नहीं सकते अब। तो रातों रात हमको बेसिकली, तब तक हम 70-80 लोग हो गए थे, रातों रात हम लोगों ने बेसिकली उठाया लैपटॉप डेस्कटॉप सब छोड़ दिया और हमने ऑफिस छोड़ दिया, कस्टमर कॉल सेंटर लाइन वगैरह सब बंद कर दिया। तो वेबसाइट बेसिकली सस्पेंड हो गया कि अब क्या कर सकते हैं, और छोड़ दिया विदाउट नोइंग कि कहाँ जाएंगे अब इसके बाद। और फिर हम लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए क्योंकि और 30-40 लोग, एक कॉल सेंटर के लोग एक टेम्प्रेरी ऑफिस में, बाकी लोग किसी घर में करके हम लोगों ने अलग अलग स्प्लिट हो गए। और जब हम वो सामान भी डेस्कटॉप वगैरह और सर्वर वगैरह भी उठाने के लिए आए रात में, तो भी ब्रोकर्स ने चेस किया उस व्हीकल को जानने के लिए कि अब नई लोकेशन क्या है इनकी। तो हमें लगा कि फिर हमारा एक इन्वेस्टर था वो आया, वो जापानीज इन्वेस्टर था, स्मॉल इन्वेस्टर। उसने देखा, उसने कहा दिस विल मेक यू स्ट्रांग
And I'm like, man, how can this make us stronger? This is such a huge pain. ऑफिस का कुछ पता नहीं है, कॉल सेंटर का पता नहीं है, कहाँ जाएंगे पता नहीं है. लेकिन वही हुआ जो उसने बोला था. एक बार जब ऑफिस से निकल गए, सडनली टीम को बेसिकली लगा कि हम किसी कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, हम केवल कोई जॉब नहीं कर रहे हैं. कस्टमर जो कि कभी सोशल मीडिया पे लिखते नहीं थे, उन्होंने बेसिकली लिखना शुरू कर दिया कि नहीं, नो ब्रोकर बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड सो. एंड देन बेसिकली वी टुक ऑफिस एंड देन वी स्टार्टेड. लेकिन आज भी अगर आप हमारा एड्रेस ढूंढो गूगल पे तो हमारा एड्रेस सही नहीं है. उसके बाद से हमने कभी अपना एड्रेस पब्लिक नहीं किया. आज भी हमारी बिल्डिंग के बाहर नो ब्रोकर का बोर्ड नहीं है, अंदर है, बाहर नहीं है. तो हम कभी पंगा ही लेते हैं ब्रोकर से. बट ओवर ईयर्स रिलेशनशिप बेसिकली बिकेम मोर बेटर. पहले हमें बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे ब्रोकर. फिर उसके बाद जो हम कर रहे थे हम वही कंटिन्यूअसली करते रहे हर साल. तो और एक C2C नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है. देखिए, जब आप एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, तो काफ़ी तरीके से थोड़ा आसान है. कैसे कि आप कुछ इंजीनियर मिलके एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और वो बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करके कि टेनेंट्स जो कि यंगर होते हैं, जो डिजिटल फ्रेंडली होते हैं, कि टेनेंट्स आ जाए, बायर्स आ जाए प्लेटफॉर्म. और आप ब्रोकर के लिए फ्री कर दो तो ब्रोकर आके प्रॉपर्टी पोस्ट कर देगा, सच्ची झूठी जैसे भी प्रॉपर्टी पोस्ट कर देगा, तो साइट बन जाएगा आपका बहुत जल्दी और ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे और फिर आप ब्रोकर से पैसे ले लो. कस्टमर का भला नहीं होगा पर साइट बहुत जल्दी बन जाएगा. पर कस्टमर टू कस्टमर बहुत डिफिकल्ट है कि इस सड़क पर एक ओनर आ गया, अब मुझे इसी सड़क पर उसी टाइम पर उसी BHK का उसी रेंट और बाय अमाउंट का ओनर भी चाहिए, टेनेंट भी चाहिए, उसी सड़क पे उसी तरह का उसी महीने. So that's a very difficult problem to solve and it takes months and years to basically build a platform. So it's painfully slow, but once you have built it, then it's a very strong platform because फिर सब लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आने लग जाएंगे. तो यही हमारा इच्छा थी. तो हम शुरू के 5 साल तक हम जैसे भी हमें जहाँ से भी जो पैसे मिले हमने बेसिकली वो पैसे लिए और कंजूसी से हम नो ब्रोकर चलाते रहे. बीच के अंदर भी और बहुत बार लोगों ने क्वेश्चन किया कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी, ऐसी कोई कंपनी कहीं चली नहीं. बहुत बार जो और कॉम्पीटिंग कंपनीज थी उनको बहुत फंडिंग मिली, उन्होंने बहुत एडवर्टीजमेंट करे, उससे भी बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर आया कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आगे कैसा होगा. बट द ओनली थिंग विच वी डिड वाज टू जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी फेल्ट इज राइट. वी नेवर कॉपीड एनीबडी. तो अगर बाकी सब लोग 20 शहर 50 शहर में अपना प्लेटफॉर्म खोल ले रहे हैं, हमने केवल 2 शहरों में खोला, 4 शहरों में खोला, क्योंकि हमें लगा कि ज़्यादा शहर खोलेंगे पैसे खर्च हो जाएंगे, कस्टमर को भला नहीं होगा और केवल वैनिटी मैट्रिक है दिखाने के लिए कि हम बड़े हो गए, पर एक्चुअली में आप केवल बर्न कर रहे हो. तो हमने किसी को भी किसी कॉम्पिटिशन कॉपी नहीं किया. धीरे धीरे करके बहुत सारे वो जो कॉम्पिटिशन थे वो धीरे धीरे बंद होते गए और हम सर्वाइव करते रहे. तो वी वर लाइक कॉकरोच. आप सर्वाइव करो बस कैसे भी. आप इफ़ यू सर्वाइव लॉन्ग इनफ then luck will turn to your side, customers will start coming more and more, they'll recognize you and the time will basically become better. So that's what we did for the next 5 years. हमें जहाँ से पैसे मिले थोड़े बहुत, कभी किसी HNI से जापान के, किसी छोटे इन्वेस्टर से साउथ कोरिया में, किसी सिंगापुर के इन्वेस्टर से, जहाँ से हमें जो भी थोड़ा पैसा मिला हम लोगों ने उससे लिया और बहुत कंजूसी हम चलाते रहे. फिर धीरे धीरे हमने रेजिडेंशियल जो रेंटल प्लेटफॉर्म था उससे हमने एहसास किया कि हम केवल घर ही क्यों किराए पे दें और बेचें, पैकर मूवर कौन कराएगा. तो हम पैकर मूवर के एग्रीगेटर बन गए. बेसिकली हमारे पास ट्रक नहीं है पर हमने ऐसे वेंडर से टाइप कर लिया जिनके पास ट्रक है और हमारे कस्टमर हमें पे करते हैं, हम उस वेंडर से कनेक्ट करके मूवमेंट करते हैं. फिर धीरे धीरे 2019 में फाइनली जो हमारे नंबर अच्छे होने लग गए, तब everybody got up and noticed that we have become now a sizable size. Then General Atlantic and Tiger Global invested in us. And today, after I would say 9 years, 9 साल के बाद, आज हमारे पास, हम 6 शहरों में हैं, हमारे पास नो ब्रोकर के पास 6000 एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में. हमने अब तक करीब 2,25,000 करोड़ फंडिंग रेस करी है. हम लोग यूनिकॉर्न है.
हम लोग यूनिकॉर्न हैं, हम इंडिया में नंबर 1 है रियल एस्टेट में, हम इंडिया में नंबर 1 है पैकर मूवर एग्रीगेटर में, हम इंडिया में नंबर 1 है पेंटिंग में, नंबर 1 है हम लोन मॉर्टगेज में, और हमने क्लीनिंग सर्विसेज, एसी सर्विसेज, फर्नीचर रेंटल, इंश्योरेंस, हमने ये सब के अंदर भी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। सो दिस इज़ बेसिकली शॉर्ट क्विक स्टोरी ऑफ I would love if there is any, if the time permits, if the time permits, I would be happy to answer. Push it. It's Hello. So it was a very inspiring story. So I wanted to ask, like, when you started, like, you had the hurdle of people threatening you, all those things. Like, is the present scenario in India for startups, like, if you are bringing out any breakthrough innovations, like, is it still like that? And if it is still like that, why do not startup? Like, is it like there's a danger of relocating such startups out of India, right? So, what are your thoughts on that? I would say there is no danger of startups incorporation may happen in any country. लेकिन अगर आप अभी देखिए, and I'll answer in English and Hindi both if you don't mind. Yeah, I can understand Hindi as well. Yeah, is that you don't look at it from the perspective of कि कितनी फंडिंग हो रही है या कितने स्टार्टअप हैं, कितनी यूनिकॉर्न है, आप वो मत देखो, आप भूल जाओ एक मिनट के लिए। आप ये देखो कि एज कस्टमर हमारी लाइफ में क्या हुआ है पिछले 5-7 सालों में। 5-7 साल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी 6-7 साल पहले मैं अपने ड्रॉअर में पैम्पलेट रखता था रेस्टोरेंट्स के, मुझे लगता था क्या ज़रूरत है, हम फ़ोन करेंगे मंगा लेंगे। जब सबसे पहले जोमेटो स्विगी आया, मुझे लगा क्या ज़रूरत है इसकी, हम तो बस उसको पैम्पलेट निकालते हैं, फ़ोन करते हैं। अब घर में कोई पैम्पलेट है ही नहीं, कस्टमर जोमेटो स्विगी कर रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे देखा कि एक साधु बाबा एकदम भगवा वस्त्र पहने हुए बड़े चोटी के साथ वो मोबाइल निकाल के ऊबर ऑर्डर कर रहे थे। मेरे फादर सारे तरह के ऐप जानते हैं, वो ऐप ऑर्डर करते हैं। अभी कुछ साल पहले उनको मुझसे हेल्प लेनी पड़ती थी कि बताओ फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है। अब हम लोग कोई हमें किताब लेनी होती है, हम किताब की दुकान की जगह हम पहले फ्लिपकार्ट अमेजोन पे प्राइस चेक करते हैं। आप कस्टमर का बिहेवियर देखिए, कस्टमर के बिहेवियर में इतना भारी चेंज आया है 7 सालों में, क्योंकि कुछ भी पीरियड नहीं है कि इस वक्त आई वुड से फॉरगेट अबाउट फंडिंग, फॉरगेट अबाउट यूनिकॉर्न, लुक एट कस्टमर बिहेवियर, इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं उनको ये लग रहा है यार चाइना आगे बढ़ गया, अब इंडिया आगे बढ़ने वाला है अगले 5, 10, 15 सालों में, इंडिया की अपॉर्चुनिटी छूटनी चाहिए। तो अब वो टाइम है जब बहुत सारे मेरे NRI फ्रेंड जो है वो वापस इंडिया आ रहे हैं, उनको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि कस्टमर इंडिया के चेंज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपस में, ऐसा नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सब लोग मिलके अच्छा कर रहे हैं। अब रिलायंस जियो नहीं आया होता तो ज़्यादातर स्टार्टअप होते ही नहीं, क्योंकि रिलायंस जियो ने हर किसी के घर में फ़ोन पहुंचाया है। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू स्टार्टअप, इज़ द बेस्ट टाइम टू ब्रिंग चेंज एंड ब्रिंग डिस्ट्रप्शन। आप डिसाइड करिए मैम। And please Hello, stop sir. me whenever you think the time is over. Thank you for your wonderful speech and about the background you gave. So I have 2-3 questions parallelly, अगर आप सही लगे। जो आप काम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक कट कॉपी पेस्ट है जो एग्जिस्टिंग यूनिकॉर्न्स कह लें, एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं। तो जब आप इस चीज़ को मोल्ड अप कर रहे थे तो यू डिडंट फाइंड दैट देयर आर स्टालवर्ड्स ऑलरेडी देयर इन दैट स्टार्टअप्स। सो क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड कम्स इज आई वुड लाइक टू हेयर, या सब लोग हैं, जो स्टोरी ऑफ को फाउंडर होती है, क्योंकि आपके 3 पार्टनर्स हैं, कैसे आपने उसको ट्रैक किया, कैसे किया। थर्ड इज योर कंपनी राइट नाउ प्रॉफिटेबल? ठीक है, तो क्विकली वी आर नॉट प्रॉफिटेबल येट, बट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वी आर अपवर्ड्स ऑफ 800 करोड़ ऑफ रेवेन्यू ईयरली। तो रेवेन्यू फोकस बहुत ज़्यादा है। को फाउंडर बेसिकली हम 3 को फाउंडर हैं और तीनों के अंदर रिलेशनशिप दोस्त की ज़्यादा है rather than। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि आप ऐसा को फाउंडर ढूंढें जो स्किल सेट में मैच करता हो पर आपका दोस्त नहीं हो, वो बहुत ही रिस्की है।
अब मैंने इतने सालों में बहुत सारी और कंपनीज में को फाउंडर्स को टूटते हुए देखा है और कंपनी को बिखरते हुए देखा है। तो मेरा वोट इस बात के लिए ज़्यादा है कि को फाउंडर ऐसा चुनिए जिसे लड़ सकें आप, जिसको अपने आप मन की बात कह सकें। स्किल फिर भी सीखे जा सकते हैं, स्किल के लिए फिर भी लोग हायर किया जा सकते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है अबाउट अदर कॉम्पिटिटर्स, तो हमारा कॉपी पेस्ट तो नहीं था बिकॉज हमारा नॉन ब्रोकरेज था, बाकी सबका ब्रोकरेज था। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या और प्लेयर्स भी नॉन ब्रोकरेज लॉन्च कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन केवल एक ही है कि थ्योरी में लगता है कि लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ना इतनी स्टार्टअप की जर्नी में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं कि अगर आपका आइडिया ना आपने चोरी किया है और आप उसे जेन्युइनली भरोसा नहीं करते ना, तो आप बहुत 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद आप ना एक कमजोर मोमेंट आएगा जब आप उनको छोड़ो। जो जेन्युइनली भरोसा करता है आइडिया पे, उसके अच्छे चांसेस हैं, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, उसके अच्छे चांसेस। तो ओनली थिंग विच वी डिड वाज जस्ट फोकस ऑन आवर वर्क। हमने कॉम्पिटिटर की साइड भी चेक नहीं करी, करेंगे चेक करके, हमें तो अपना ही काम करना है। अगर वो अच्छा करने वाले होंगे तो कर ही लेंगे। तो देयर आर समथिंग जैसे बोलते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल, उसके बारे में चिंता करके क्या फायदा। तो वी जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग ऑन आवर ओन थिंग एंड इट बेसिकली वर्कड। हाँ जी बताइए। आई कैन हियर। Did you gain customer faith? Because property business is a very risky business, you know, the buyer as well as the customer, you know, the papers have to be clean. So usually customers are very reluctant to go via, you know, a virtual mode like yours. So how did you gain the customer faith? No, that's a very good question. So we started with rentals in which the complexity is lesser. किराए में घर देने में कॉम्प्लेक्सिटी कम है. So we start with that because there you're not buying a property. Later when we expanded into buy and sell, earlier it was only about transaction and how to eliminate broker. But then we quickly figured it out and customers told us that property में कागज सही है कि नहीं बहुत important हो जाता है. तो जब वो बात आने लग गई तो फिर हमने लॉयर नेटवर्क बनाया. तो आज हमारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन की सर्विस है जिसके अंदर हमारे हर सिटी में there are lawyers who are impaneled. And be it property title check, be it encumbrance certificate, etc. All of that work is being done by them. So we also figured it out slowly as to what the customer pain points are, and then we build solutions for that. So when did you develop the confidence कि हाँ अब हम team बढ़ा सकते हैं, like from rentals to this thing, because it requires economics also, right? I would say, yeah, वो confidence कैसे आया? I would say there is no right answer for this. We seeded a lot of businesses and did not burn a lot of money, but waited for it to grow on its own. So if we seed business A, it's growing very fast, which means customer demand is very high, so we'll give it more money. Someone is growing slowly, we'll give it less money. So हमने ऐसे different entrepreneurship करनी within no broker. One last question, please, as we need to start the next session. हेलो सर, थैंक यू सर. मेरा नाम रोहित प्रजापति है एंड मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में आते हैं कि जो हमारे ध्यान को भटकाते हैं, तो हम उससे कैसे बचें कि अपने जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर कैसे पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के हम उस पर काम कर सकें. ये तो देखिए आपके पैशन पे डिपेंड करता है. अगर बहुत मुश्किल लग रही है फोकस करने में, तो फिर वो पैशन नहीं है आपका, फिर वो छोड़ना पड़ेगा और पैशन ढूंढना पड़ेगा. फिर नहीं सर, छोड़ना नहीं, बट बहुत सारे लोग होते हैं ना. थैंक यू सर. माय नेम इज आर्यव्रत, आई एम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सहारनपुर. सर मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने देखा होगा कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना भी बहुत चाहते हैं, बट मोस्टली फ्लॉप कर जाते हैं. उनके फ्लॉप होने का क्या रीजन है, एंड आज आप इस मुकाम पर हैं तो आपके सक्सेस होने का क्या रीजन है, प्लीज कृपया मार्गदर्शन करें. नहीं देखिए, मेरे ख्याल से इसका कोई फॉर्मूला पता होता तो मैं सबको ही बता देता, पर आई थिंक द ओनली थिंग विच इज इन आवर कंट्रोल इज कि आर यू डूइंग इट फॉर द राइट रीजन.
अगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुझ जैसे 10 लोग आके बोल रहे हैं और आप केवल शौक में कर रहे हो, या फिर आपको बॉस ने किसी दिन डांट दिया इसलिए आप कर रहे हो, तो बहुत शॉर्ट टर्म है, फिर उसके अंदर आपका पैशन रहेगा नहीं। मेरा मानना ये है कि जितने अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं उसमें से 10 ही ऐसे होते हैं, 20 ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली पैशनेट हैं और वो छोड़ेंगे नहीं। तो जब आप आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में तो साल 2 साल सोच के आइए और बीच में बार बार डगमगाइए नहीं। उन 10-20 में बहुत हाई परसेंटेज है सक्सेस का। थैंक यू। Thank you, sir. Your passion, enthusiasm, and energy have left a lasting impression on all of us. And we are truly grateful for your time and effort and for delivering such an engaging and informative talk. We wish you all the best for your future endeavors. I would now request Professor Anna Bhattacharya to kindly felicitate Mr. Amit Agarwal. Thank you. Ladies and gentlemen, now let's move on to the second panel discussion of the day. Today, we have an esteemed panel of experts who will be sharing their insights and experiences on the topic of technologies for sustainable future. With climate change and environmental degradation posing significant challenges to our planet, there is an urgent need for innovative solutions that can help us transition to a more sustainable future. I would now like to invite the moderator of this panel discussion, Mr. Professor Amitabh Bandyopadhyay. Professor Amitabh Bandyopadhyay is the Kent Chair Professor of Entrepreneurship and Innovation at Indian Institute of Technology, Kanpur, and the current head of Biological Sciences and Bioengineering Department. He served as the professor in charge of innovation and incubation and ran the Technology Business Incubator of IIT Kanpur. He is also a member of National Startup Advisory Council. He has recently co-authored a book titled The Ventilator Project, How the IIT Kanpur Consortium Built a World-Class Product During India's COVID-19 Lockdown Period, chronicling the extraordinary journey of a group of young IIT Kanpur alumni developing an ICU ventilator in just 90 days. He's a member of several national committees advising the startup ecosystem of India, particularly the healthcare startups. I would now like to invite Professor Amitabh Bandyopadhyay to kindly come up on stage and introduce the panelists and address the gathering. So please. Thank you. So we will be talking about sustainable future. The way you may want to think about is that if you take the life of our planet Earth at the 24-hour clock, the time that humans have been on this planet will be less than 10 minutes. And we have done immeasurable damage to the same planet that we inhabit. So this human action caused damage is threatening the very planet that we inhabit in, such that our sustainability as a race, or I would say the species itself,
is in question. There are challenges everywhere. There was a time when we desperately needed to improve the quality of our life. We needed green revolution or its equivalent, ताकि agricultural productivity goes up. We needed electricity, we needed a lot of energy, we needed gasoline, ताकि हम गाड़ी चला पाएं, घर पे एसी चलाएं और सब कुछ. And all these activities, they have made an impact on our environment. आप सबको शायद पता होगा ये क्लाइमेट चेंज के बारे में. आप अगर तस्वीरें देखोगे of the two poles of our planet, the level of ice that was there has now gone down dramatically. Sea level is rising, though it may not look too threatening today, but it is rising nonetheless. And we need to solve these issues collectively. And I am extremely happy to tell you that because I have a bird's eye view of the entire startup ecosystem in the country, is that young Indians, among others, they are coming up with absolutely innovative ideas to reduce the impact of human activities on the sustainability of our planet. And that's what we will be discussing in the panel today. So to begin with, I would just a minute. I just want to make sure that I don't make any mistake. Yeah, to begin with, I would request on stage Mr. Akshay Srivastava. He is the founder of LCB Fertilizers Private Limited. Akshay is much more comfortable than me in Hindi, so वो हिंदी में बताएंगे अपने कंपनी के बारे में. वो बहुत ही बढ़िया किस्म के फर्टिलाइजर बनाते हैं. Akshay, please take your place. Actually, all the panelists are quite comfortable in Hindi, other than the moderator. Then the next panelist that I would like to introduce to you is Mr. Sarthak Gupta. Sarthak is a co-founder of a company called NovoEarth. NovoEarth has started on a mission to reduce plastic pollution from India and eventually of the whole world. It's a global solution that Sarthak has. Sarthak, please take your place. The third panelist is Mr. Mihir Mishra. Hi, Mihir. So Mihir is the co-founder of a company called Symmetricals. आप सब इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानते हो. मिहिर के कंपनी एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिमोटली चार्ज कर सकते हो. हाँ, मिहिर, प्लीज टेक योर प्लेस. I would next like to introduce Mr. Dishant Mishra. Dishant, where are you? I saw you earlier. Yeah, so Dishant is coming. He is a founder of Board Resources and a lead researcher for wind train and cavity storage technology. इनके कंपनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं बट बैटरी से नहीं, ग्रेविटी के रूप में. और दिशांत इसके बारे में बताएंगे हम आप सबको. एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय कलीग from Sustainable Engineering, Energy Engineering Department, Professor Sudarshan. Sudarshan, please take your seat.
and it looks like Ankit Agarwal is not here. So in his place, we have the Chief Technical Officer of Pool, one of the most successful startups of IIT Kanpur. And Pool के बारे में शायद आप सभी को पता है, ये एक कंपनी है जो मंदिर में जो फूल हम देते हैं, चढ़ाते हैं, उसी से प्रोडक्ट्स बनाते हैं. So I would request to come on stage. So that's the introduction of the panel. Now I will try to go there and quiz them. Thank you. So the first round, what we will do, अक्षय आपसे चालू करूँगा. आप अपने कंपनी के बारे में एकदम at max 2 मिनट में बताइएगा आपकी कंपनी करता क्या है, ठीक है ना? And the audience prefers Hindi, so you covered up for my limitation. Make it in Hindi. Hello. Hello everyone, this is Akshay from LCB Fertilizers. LCB Fertilizers one time use crop specific और 100% ऑर्गेनिक रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड डेवलप करता है. आपको खेत में सिर्फ इसे एक बार डालना होता है, इसके बाद ना ही किसी केमिकल प्रोडक्ट ना ही किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. इससे आपको सिर्फ इससे जो 3 फायदे किसान को मोटा मोटा मिलते हैं, विच इट रेड्यूसेस द डिमांड ऑफ इरिगेशन बाय 33%, इट इंक्रीजेस द यील्ड बाय 15 to 35%, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो किसान खेती में लगाता है वो करीब 48% तक मिनिमाइज कर देता है. हमने इसे करीब 25,000 प्लस फार्मर्स को सप्लाई कर रहे हैं इस समय पैन इंडिया में. हम 9 राज्यों में ऑपरेट करते हैं विद 2 प्रोडक्शन यूनिट, वन इज इन कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश, अनदर इज इन कोल्हापुर महाराष्ट्र. तो ये प्रॉब्लम आई कहाँ से थी? सो आई विल टेक 1 more minute कि सिर्फ केमिकल के फर्टिलाइजर के स्प्रे करने से हर साल मोर देन 10,000 प्लस फार्मर्स की डेथ होती है, जिसमें से गैसेस रिलीज करते हैं. बार बार आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं खेत में, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट खत्म होते गिरने लगता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की गिरने लगती है, विच एट द एंड रिजल्ट की 85% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर इंडियन एग्रीकल्चर में ही कंज्यूम होता है. बार बार फर्टिलाइजर, बार बार इंसेक्टिसाइड डालने से होता क्या है कि आपका नॉन प्रॉफिटेबिलिटी इंडियन एग्रीकल्चर में आ रहा है, और एज पर डाटा पर ईयर मोर देन 100 प्लस फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं. तो अगर किसी का पूरी खेती को हम मिनिमाइज करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज करते हैं, उनका इरिगेशन कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं और उनको यील्ड प्रमोट करते हैं, तो एट द एंड जो फार्मर का पलायन हो रहा है सोसाइटी से, वो वापस से गांव में आएंगे, और जो जॉब को सीख कर रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं, वो एट द एंड जॉब के लिए एक माध्यम बनेंगे कि आसपास के किसान और आसपास के लोकल एरिया के लोग उनके साथ जुड़ के इंडियन एग्रीकल्चर को प्रमोट करके जो पॉजिटिव जीडीपी था लॉकडाउन में उसको इनहेंस करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू अक्षय. सार्थक, अगर आप आपके कंपनी के बारे में बता दो. Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Sarthak. I'm the founder of Novo Earth. Novo Earth हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मिशन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करना है. एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो एक सिंपल सोल्यूशन से आपको एक ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आपने चलाया और वो खत्म हो गया. यू नीड मल्टीपल सोल्यूशंस टू टैकल दैट प्रॉब्लम. तो हम लोग 2 वर्टिकल्स में काम करते हैं. पहला जो कि हार्ड टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट है, ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जो रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है या फिर उसको हम लोग जनरली लैंडफिल्स में भेज दे रहे हैं या फिर इंसिनरेट कर रहे हैं. तो वी टेक दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और उससे हम लोग सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं प्लाईवुड बोर्ड के. सो प्रॉब्लम इज वन, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. एक, डिफॉरेस्टेशन हम लोग बचा रहे हैं, एंड हम लोग साइमल्टेनियसली प्लास्टिक वेस्ट यूज कर रहे हैं. तो जो बोर्ड्स हम लोग बनाते हैं दे आर कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू प्लाईवुड. एंड इसमें सिंस क्योंकि ये प्लास्टिक वेस्ट से बनते हैं तो ये वाटर प्रूफ रहते हैं, टर्माइट प्रूफ रहते हैं, एंड मल्टीपल वेरियस अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू प्लाईवुड बोर्ड्स.
The second vertical where I'm working on is development of compostable polymers. So ऐसा पॉलीमर जो कि आप मिट्टी में डालें तो वो मिट्टी में ही घुल जाए, उसको आपको वापस रिसाइकिल स्ट्रीम में लाने की जरूरत नहीं है. वो जैसे पेपर आपका होता है कि पेपर आपने डाला, पेपर कुछ टाइम पे बाद में जाकर वो डिकम्पोज हो जाएगा, माइक्रोब्स उसे खा जाएंगे. सिमिलरली ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट आप एक ऐसा पॉलीमर बना दें. सो अगेन वी टेक वेस्ट रिसोर्सेज, हम लोग उनसे प्रोटीन निकालते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी हम लोग उन प्रोटीन को पॉलीमर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो दैट इज द सेकेंड सोल्यूशन दैट वी ऑफर. सो ओवरऑल जब हम लोग एक नया ऑल्टरनेटिव मटेरियल ले आएंगे प्लास्टिक के लिए मार्केट में, और जो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक है उसको किसी तरीके से यूज करने की टेक्नोलॉजी को हम लोग कमर्शलाइज कर लेंगे, देन आई थिंक एक इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट कर पाएंगे सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए. दिस इज व्हाट वी डू. थैंक यू सो मच. थैंक्स सार्थक. निशांत, आप अगर आपने कंपनी. Yeah, hi, my name is Dishan Mishra. I lead a company called Pod Resources. मेरा काम थोड़ा मुश्किल है, let me be very honest. हम जिस विषय पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो शायद एक तो दिखती नहीं है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा चीज़ जिस वर्ल्ड कप की हम तैयारी कर रहे हैं वो अभी खेले जाने में अभी कम से कम 10 से 15 साल का समय. तो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल दैट वी हैव. दुनिया उसके लिए जब तक तैयारी करेगी तो फॉर दैट. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ अभी भारत में लगभग 10% बिजली जो है वो सोलर और विंड से आती है, और इसको उठा के हमें 50% तक लेके जाना है. नॉन रिन्यूएबल कैपेसिटी इज़ अराउंड 50% एंड रिन्यूएबल शुड बी अराउंड 40%. सो टू डू दैट वी नीड एनर्जी स्टोरेज, ताकि जो सोलर और विंड एनर्जी है वो हर समय अवेलेबल नहीं है. जिस तरीके से हम कोयला कभी भी जला सकते हैं, ये परेशानी अब जैसे जैसे हम रिन्यूएबल कैपेसिटीज़ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे और आएगी. अभी तक हम काम चला लेते हैं, कोयले के साथ दोस्ती अच्छी है, 70% जो बिजली है वो आज कोयले से आती है, बट ये संभव नहीं है भविष्य में इसको जारी रख पाना. इसके लिए एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ लगेंगी, और आज के समय में एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ अफोर्डेबल नहीं है. जो सबसे सस्ती जो एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो स्केलेबल है वो बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, जिसका आप सब लोग प्रयोग करते हैं, उसकी पर यूनिट कॉस्ट 9 रुपये से लेके 15 रुपये पर यूनिट आती है. जो जिस टेक्नोलॉजी का हम समाधान जिस तरीके से निकाल रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ग्रेविटी स्टोरेज. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. कोई भी चीज़ जो ज़मीन पे होती है उसमें अगर आप एनर्जाइज करें, उसको ऊपर उठा के लेके जाएं, तो वो एक एनर्जी स्टोर कर लेती है पोटेंशियल इन. So this is the basis of technology, and by doing this we are really offering a very affordable form of energy storage which can go as low as 1.5 to 3 rupees per unit. So we are trying to bring that down from 9 rupees to, and so this is what we are doing. It's exciting every day, but working it day and night in the labs is a story that continue to write itself. और शायद जब वो वर्ल्ड कप होगा जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, मे बी दैट स्टोरी विल कम आउट. Mihir. Hello. Okay, so my name is Mir Mishra and I am from Symmetrical. So अभी हम लोग एक EV के दौर पे बढ़ रहे हैं आगे. The problem is कि अभी लोग EV खरीदना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन लोग को ये लगता है कि उसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगेगा और हम लोग उतनी देर रुक नहीं सकते हैं. और बेसिकली और अगर हम लोगों ने चार्ज करा अपना व्हीकल तो कितनी दूर तक जा सकता है. तो ये सब अभी समस्याएं हैं. तो हम लोग एक सॉल्यूशन के साथ बाहर आए जो था वायरलेस चार्जर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. ऑल यू हैव टू डू जस्ट पार्क योर व्हीकल ओवर द चार्जर. आप अपने व्हीकल को चलाते वक्त भी चार्ज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक टेक्नोलॉजी. और आप लोग उसको रेड लाइट पे या ट्रैफिक में रोक के भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे आप इजीली अपने व्हीकल को चलते वक्त भी चार्ज कर सकते हैं. और इसमें आपको डिस्टेंस का ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा और आपका व्हीकल उस हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा. तो इसी से ही रिलेटेड हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया जो कि अभी बाहर भी है, आप देख भी सकते हैं जाके. और वो प्रोडक्ट हम लोग ने थोड़ा सा पावरफुल करा हुआ है, क्योंकि अभी ये इंडिया का पहला वायरलेस चार्जर है और ये अभी बाहर अवेलेबल है, और वो भी बहुत महंगा. ये एग्जांपल लाइक BMW, Qualcomm, दे आर मेकिंग इट. द प्रॉब्लम इज़ उन लोग के चार्जर अभी एक कार की कॉस्ट के अराउंड आ रहे हैं, अप्रॉक्स 20 to 30 lakhs. बट आवर चार्जर इज़ लेस देन 10,000 ऑल्सो.
and our charger is around 15,000 also. So thank you. Thank you, Mihir. Nachiket, if you tell about Pool. Hello. Hello everyone, my name is Nachiket. So I head the research and development division for Kanpur Flower Cycling Private Limited, also known by the brand name of Pool. तो एक लाइन में बताया जाए तो बेसिकली हम मंदिर से निकलने वाले वेस्ट फ्लावर से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ जब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि मंदिर में जो फूल चढ़ते हैं भगवान के ऊपर वो भी एक पोल्यूशन का ज़रिया है, वाटर पोल्यूशन का। ऑल वाटर बॉडीज़, अगर हम स्पेसिफिकली कानपुर की बात करें तो गंगा मैया की बात आ जाती है। एक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैसे? क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से मंदिर में चढ़ाए हुए फूलों को हम पानी में प्रवाहित कर देने की हमारी ट्रेडिशन है, पर आजकल फूलों पे काफ़ी सारे पेस्टिसाइड के रेसिड्यू होते हैं, तो वो टॉक्सिक केमिकल्स है, वो पानी में जाते हैं जब फूल पानी में जाता है। और फूल एक ऑर्गेनिक चीज़ है तो वो मिट्टी में जाएगा तो वहाँ पे एक रेगुलर नेचुरल डिग्रेडेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, पर जब वो पानी में जाता है तो वो एक्चुअली सड़ता है, रॉटिंग की प्रोसेस होती है और वहाँ पे बहुत सारा अननेसेसरी बैक्टीरियल कंटामिनेशन और ये सब चीज़ें क्रिएट होने की वजह से जो नेटिव वाटर इकोसिस्टम है उसके लिए ये रॉटिंग काफ़ी हैज़ार्डस है। तो इन दो रीजंस की वजह से ये मंदिर में चढ़ाए हुए फूल जो बाद में पानी में प्रवाहित हो रहे, ये एक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। अगली बात है क्वांटिटी की। हर कोई सोचता है कितने ही फूल होंगे, अकेले कानपुर में दिन का 3 से 4 टन फूल निकलता है। अगर हम और बड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात करें जैसे वाराणसी, वहाँ पे 10-11 टन की बात है। और ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 80 लाख टन पर ईयर, दैट इज़ द स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम लोगों को ये पता चला थोड़ा स्टडी करने के बाद, तो हमने ठान ली कि इस प्रॉब्लम का कुछ करना है। तो वी स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्लावर्स फ्रॉम टेम्पल्स इटसेल्फ एंड प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट से शुरुआत करी, जैसे अगरबत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, वो होली कलर्स हो गए। ये तीनों प्रोडक्ट्स मार्केट में है, fool.co वेबसाइट पे लास्ट 3 ईयर्स से कमर्शियल है। वी ऑल्सो वर्कड ऑन वी कॉल एज फ्लोरा फोम, एन अल्टरनेटिव टू स्टायरोफोम, मतलब पैकेजिंग जहाँ जहाँ पे हो रही है चीज़ों की, उस पैकेजिंग, बेसिकली स्टायरोफोम वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट पोल्यूटेंट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है। You either have to burn it, it turns into black smoke, or either it goes into landfill or ocean debris. So this flora foam is a biodegradable, sustainable alternative where you can use it for any sort of packaging. And the next product, that is our moonshot. We are striving very hard to, get it to a level where we can make it commercial. That we call as leather, F leather, flower leather, an alternative to leather that is made from flower. Animal free, fully sustainable, no hazardous chemicals, because leather industry is also one of the most polluting industry out there. The chemicals used to tan the animal leather are very much hazardous. Chromium is one of the heavy metals that is carcinogenic. So that's where we want to work. So our theme is basically not just to work on, the raw material. So our raw material is of course something that is a pollutant, but we are also trying to come up with such products so that the products can also give you a tough fight to the existing products which are pollutant. That's what we all, work around. Another small aspect around the company is we employ or we try to provide livelihood to more than 150 women now who come from surrounding villages where our unit is, where our factory is. These women are from very low social strata, and they do all the hand rolling of the incense sticks, and basically the products are being manufactured through these women, and that's how they get their livelihood. Thank you. So before I move to Dr. Sudarshan, I just want to make 2 points, and this is for the audience. आपने 5 आउटस्टैंडिंग कंपनीज के बारे में सुना। आपको शायद लगता होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है, आईआईटी वाले करते हैं। इन 5 में से Nachiket of course is an IIT Kanpur student, but the founder Ankit and of the other 4,
none of them are IIT Kanpur graduates. Okay. They are, and which is also a very, very bright thing to note, that they come from small towns of India. Okay, like Akshay is from near Gorakhpur, Sarthak is from Kanpur, and Ankit is also from Kanpur. तो पहली बात यह है कि जैसे कि अमित अग्रवाल जी ने पहले बोल के गया कि अगर आपको आपका पैशन है और जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो अगर आप सही आइडेंटिफाई कर लिए हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओ. There is absolutely no barrier. The second thing that I want to emphasize, and I am very proud of it as a member of IIT Kanpur, कि हमारा जो incubator है वो it is open for any Indian citizen. और हमारा काम ये है, हम हर महीने कम से कम 50 पिचेस सुनते हैं और सबके पिच सुनते हैं और हम चुन चुन के वैसे मोटिवेटेड इनोवेटर्स को हम हमारे इंस्टीट्यूट में लाते हैं. उनको पूरी तरह से सब सहायता दिया जाता है. आप बाद में इन लोगों से पूछ सकते हो कि उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है. तो दैट इज समथिंग फॉर यू ऑल टू नो एंड यू शुड लेट अदर्स नो. And the one thing that is not particularly good is, as you see this panel, particularly the innovators, there is not a single woman innovator. हमारे देश 50% capacity utilization नहीं कर रहे हैं. तो that should change. This is also part of sustainability. अगर हमारा जेंडर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा. एक तो आधे दिमाग भी आधा काम कर रहा है, मैन पावर भी आधा काम कर रहा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट particularly the younger girl students here to be bold, be brave, come forward, and there is an institution that will handhold you. आपको पूरी तरह से मदद देंगे, आप भी कामयाब बन पाओ. Thank you. So then I would like to go to Dr. Sudarshan. Of course, we know that energy security is very important, but at the same time, the price that we have been paying as the human race has also been very steep. Now, there are multiple options that are coming up in the form of solutions for sustainability, because you are highly knowledgeable. So I would like you to give a little bit of a broad brush that what are the different sustainability objectives that are trying to be attempted, and in your opinion, which do you think holds most promise as on today? Thanks, Professor Bandyopadhyay. Again, sincere thanks to the organizing committee for having me on this sacred dais. It's been a great honor and privilege to be as part of this this forum, and very happy and very inspiring to see so many young future entrepreneurs in front of me, and probably educators as well, because I am from the education community itself. So anyway, Professor Bandyopadhyay touched upon a very interesting topic. We all know about before that, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मगर फिर भी जितना हो सके थोड़ी थोड़ी हिंदी यहाँ पे बीच बीच में इंग्लिश भी आ जाएगा तो माफ़ कीजिएगा. वैसे I'm an assistant professor here in this department called Sustainable Energy Engineering. So we all know about energy engineering. हमें पता है कि energy क्या है, engineering क्या है, मगर ये sustainability चीज़ क्या है. तो what is this sustainability? So our department is basically focusing on looking at technologies that are new, renewable, and sustainable as well. And we look at as a department, and something that was touched upon earlier. Historically, the advent of technology or the growth of technology has been such that
sustainability or the environment has always been an afterthought. अरे आज कर लेंगे, जो भी है कर लेंगे, बाद में देख लेंगे क्या होता है. So whatever energy we do, it's or whatever technology we developed is not organic. It's not necessarily sustainable. So our department is focusing on bringing the sustainability aspect to it, so that we can look at it from a holistic perspective, so that the energy that we or the technologies that we develop are organic, and they are something that you can rely on for a much longer period of time as well. So we are focused on developing educational curriculum, I mean, in terms of bachelor's, master's, and postgraduate courses catered towards some of these concepts. And these concepts can include a variety of things like energy generation in terms of solar, wind, hydro, power technologies. And then you have energy storage. So you have batteries, something that one of our co-panelists is well versed with. And we have hydrogen storage, then this carbon dioxide storage. So that's energy storage. Then you have energy utilization. We generate the energy, we store the energy, but how does it reach your home? आपके घर तक कैसे जाते हैं? तो ये सब करवाने के लिए you need an infrastructure, you need transmission and everything. So there are faculty members who look into these aspects as well. And finally, all of this, again, bringing this aspect of sustainability. ये सब कैसे हम करें? So, and this has to be in tune with what we do for the environment, for the climate. So we keep into account energy policies, climate change, environmental policies, and so on. So इसमें अभी देखा जाए तो there are many technologies that come to the forefront, like in terms of energy storage. Of course, lithium-ion batteries have really changed or transformed our lives to the better for the most part. But then, is it a really sustainable future? It's a very questionable aspect as well, because there are इसमें बहुत से challenges हैं, बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि lithium कहाँ से हमें मिलती है? अभी रिसेंटली हमें पता चला कि अच्छा जम्मू कश्मीर में थोड़े हमारे रिसोर्सेज हैं, मगर कितने हैं और कैसे माइन करें, कहाँ प्रोसेस करें, ये सब इट्स नॉट ईजी. ये सब दिस इज़ ऑल अ चैलेंज. सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज देयर इज़ मोर अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग बियॉन्ड लिथियम बेस्ड टेक्नोलॉजीज. और फिर एनर्जी जनरेशन देखें तो उसमें सोलर का तो है ही, इट्स बिकमिंग सो पॉपुलर नाउडेज. मगर सोलर भी करें तो 20-25 साल तो चलते हैं, उसके बाद उनका क्या होगा? वो वापस कहीं फेंक देंगे, कोई डंप यार्ड में फेंक देंगे, अरे हमारा क्या है? ऐसे हमारी सोच नहीं रहनी चाहिए. तो हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना है. तो ये जो मटेरियल्स, ये जो पदार्थ हम यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें बनाने के लिए, वो प्राकृतिक हैं या नहीं, हमें उसके बारे में भी सोच करनी चाहिए. So, I mean, during the course of the discussion, I can talk more about the department, कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी vision क्या है. So, thanks for the opportunity. Thanks, Sudarshan, because this is the second round. I will start with you again. आपने आधा बोला तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा प्रोवोक और करूँगा. ये जो सोलर एनर्जी है, is it really renewable energy? That's a very good question. क्योंकि like I said, as things stand, it ऐसा दिखता है कि solar energy is really renewable. मगर देखा जाए तो हम जो चीज़ उसको जिस पदार्थ को यूज़ करते हैं, that may not really be renewable. और ये भी है कि renewable energy का मतलब क्या है? ठीक है, हम सोलर पैनल लगा देते हैं, ठीक है, सूरज तो चलेगा ही, it is always there. But when the sun is not there, of course it is intermittent, क्योंकि कभी चलता है, कभी नहीं है. But then the question also arises कि how are these made? फैक्ट्रीज में ही बनते हैं ये भी. फैक्ट्रीज के लिए पावर कहाँ से आती है? It goes back to the power
to make some of these materials is not really renewable. Coal से चलती है, gas से चलती है, petrol से चलती है. So some of these have to be thought about. So in terms How of about that, disposal? How about disposal of exactly, the disposal is also a major issue. So once they are used, once their life cycle has completed, what becomes of them? उनका क्या होता है? So there has to be a method to recycle them, reuse them. कोई और application के लिए use कर सकते हैं. So we have to do research. We have to look into opportunities for bringing that into the fold as मतलब well. ये है कि अभी solar energy is serving a purpose, but it fully does not solve. There are problems, and for all of you, I often quote this, that this was in the context of medical devices. A very good friend of mine who is a doctor, उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया में हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और क्योंकि हम इंडिया में हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है. जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो जैसे कि आपको पता चला कि रिन्यूएबल एनर्जी टुडे, सोलर एनर्जी इज द मेजर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बट इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स. तो आगे चल के आप लोग सोच के इसका अगर दूसरे तरीके से सोचोगे, दूसरे किस्म के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करोगे, तो देन देयर आर enormous opportunities. I'll move to Nachiket now. So I'll give you the first two lines. I still remember ये 2018 के जनवरी था जब अंकित अग्रवाल फूल के जो फाउंडर हैं वो मेरे ऑफिस में आए और बोले एकदम दीवार के डायलॉग की तरह कि मेरे पास आइडिया है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मुझे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मुझे इंक्यूबेशन चाहिए. तो IIT कानपुर एक्टेड वेरी फास्ट. तो अगले दिन से उनको इंक्यूबेशन मिल गया. ये पहला चीज़ जो आपको बता देना चाहिए. और आप में से किसी को पता है ये फूल का एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं, देखा है किसी ने? हाँ, तो उधर से आलिया भट्ट से एडवर्टाइजमेंट करवाने तक की जर्नी कैसे पूरी की गई, आप अगर उसके बारे में थोड़ा बताओ. नहीं, बंदोपाध्याय सर ने एक्चुअली अभी जो बोला वो एग्जैक्टली मतलब वर्ड टू वर्ड सही है. तो अंकित इज एक्चुअली अ कंप्यूटर साइंस पर्सन. वो पुणे में पढ़े हुए हैं, वर्किंग विद सिमेंटेक. अच्छा खासा जॉब था, बट उनको कानपुर वापस आना था, नेटिव प्लेस है उनका, और यहाँ आके एक रेगुलर ट्रेडिशनल कुछ नहीं करना, इस सोच से वो यहाँ आए. उनको ये आइडिया कैसे पता चला फूल का प्रॉब्लम है, ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है. तो जब वो सीमेंटेक में काम कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, उनका सर्कल काफ़ी बड़ा है. तो ऐसे ही उनका एक दोस्त है चेक रिपब्लिक का, यूरोपियन दोस्त है, वो कानपुर आया हुआ था. ये तब तक शिफ्ट हो चुके थे, और ये दोनों ऐसे ही अभी कानपुर में मेन अट्रैक्शन तो यही है कि चलो गंगा किनारे जाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं. तो अंकित उनको लेके गया था. आज वो हम सबका दोस्त है. वी कॉल हिम याकूब. ही इज़ लाइक वेरी मच फैसिनेटेड टूवर्ड्स इंडियन कल्चर. उसका इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे तो वो आज योगी याकूब के नाम से उसने बना रखा है. ही लिव्स इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट हाफ द ईयर एंड ही प्रैक्टिसेस योगा लॉट ऑफ प्लेसेस. तो वो लोग गए और मकर संक्रांति का दिन था, तो काफ़ी ज़्यादा वर्शिपिंग हो रही थी. मेरे को याद है, मैं ऑलमोस्ट 7 साल पहले कानपुर आया हूँ. मैं एमटेक ज्वाइन करने के लिए आया था. तब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ. आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड अहमदनगर, 100 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे. पहला अट्रैक्शन यही था कि गंगा जी को जाके देखते हैं. तो उस टाइम गंगा जी की हालत सच में बहुत ख़राब थी. मतलब पानी बिल्कुल बह नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब पानी का कलर काला, हीरा, हरा ऐसा कुछ था. ये सब पान और फूल सब तैर रहे थे, ऑल ऑफ दैट. तो वही सिचुएशन में उन लोगों ने उस टाइम गंगा जी देखी, और उस समय उनके सामने ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल वर टेकिंग डिप्स. तो वो बंदे को ये सवाल आया कि यार इतना गंदा पानी है फिर भी लोग उसमें डिप लगा रहे हैं, ये क्या सिलसिला है. ऊपर से उनके सामने एक बहुत बड़ा ट्रॉली आया, उसमें पूरा फूल भरा हुआ था और उन्हें वो पूरा पानी में डंप कर दिया. तो that thing triggered that guy. He asked a lot of questions to Ankit, and that thing triggered Ankit
क्योंकि हम लोग तो बचपन से देखते आए, तो हम लोगों को इसके बारे में कभी सवाल आता ही नहीं है. वी नेवर क्वेश्चन आवर सेल्फ. तो दैट थिंग, देन वो स्टैटिस्टिक्स निकाला कि कितना फूल है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब चीज़ें. दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि इसके बारे में कुछ करना है. दैट गेव हिम द आइडिया. उसके बारे में उन्होंने काम करना शुरू किया. टेक्निकल सपोर्ट के लिए वो IIT आए. उस समय प्रोफेसर घटक है जो मेरे एमटेक के गाइड है, समहाउ वो लोग कांटेक्ट में आए हमारे लैब में. मतलब घटक सर ने मुझे पिक्चर में लाया कि इनको कुछ करना है, थोड़ा हेल्प कर दो. तो मैंने ऐसे ही मेरा प्रोजेक्ट संभालते संभालते थोड़ा बहुत मदद कर लिया. तो हम लोगों को होप्स दिखने लगे कि अरे इससे कुछ बन रहा है. दैट्स व्हेन अंकित अप्रोच बंदोपाध्याय सर. द रेस्ट इज हिस्ट्री. बंदोपाध्याय सर का बहुत बड़ा क्रेडिट है इसमें. ही वॉज हेडिंग SIIC दैट टाइम. इन्होंने बहुत फास्ट एक्शन लेके हम लोगों को लैब अवेलेबल करके दिया. बाय दैट टाइम आई वॉज येट टू कंप्लीट माई मास्टर्स. तो मैं फुल टाइम फुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता था उस टाइम एज अ रिसर्चर भी. मतलब बंदोपाध्याय सर ने ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हेल्प किया है, पर्सनल लेवल पे भी उन्होंने इतना हेल्प किया है. तो ही ऑफर्ड, उनके जस्ट ग्रेजुएट होने वाला पर्सन था संदीप. ही इज पार्ट ऑफ आवर टीम सिंस लास्ट 5 years. तो ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट फुल हैड. बंदोपाध्याय सर बोले चलो कोई बात नहीं, अभी अब तुमको पर्सन चाहिए, मेरा संदीप ग्रेजुएट हो रहा है, बायो टाइप का काम करना है, ये ले लो. तो संदीप ज्वाइन. हमने ये सब इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे कैंटीन वगैरह में बैठ के किया. एंड देन वी गॉट द लैब. द जर्नी स्टार्टेड. फिर मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया. आई ज्वाइंड फुल टाइम. उसके बाद धीरे धीरे एक एक इन्वेस्टमेंट आने लगा. हम लोग उस टाइम फाइनेंशियल एड के हिसाब से हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते थे. कोई भी छोटा कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो 10,000 रुपये का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे 25 लाख का हो, बस फूल वाले वहाँ चले जाएंगे. तो ऐसे IIM कैलकाटा के जो, तो एवरी IIM होल्ड्स अ बिजनेस कॉम्पिटिशन. IIM कैलकाटा के कॉम्पिटिशन के टाइम पे तो टाटा ट्रस्ट है. टाटा ट्रस्ट की एक छोटी विंग है सोशल अल्फा. रतन टाटा जी के इंस्पिरेशन से एक्चुअली वो बना है. सो मनोज सर है, उनको रतन टाटा जी ने बोला था कि ये मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, इनके लिए कुछ फंड क्रिएट करो. तो उसी वजह से सोशल अल्फा क्रिएट हुआ. तो हम लोगों को मनोज सर ने वहाँ स्पॉट किया. दे अप्रोच एंड दे लाइक कि नहीं मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है. तो दैट्स हाउ टाटा ट्रस्ट कम ऑन बोर्ड. हमें थोड़ा फाइनेंशियल एड मिल गया, रिसर्च और फास्ट आगे बढ़ा. देन देर इज अ DRK फाउंडेशन, रैपर्ड रिचर्ड कैप्लान, सिमिलर टू बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. दे जनरली invest in African countries more. We were among the very first investment of them in India. उन्होंने थोड़ा फंडिंग दिया. रिसर्च वेंट फर्दर. देन जैसे हमने ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू स्टायरोफोम बनाया, उसका थोड़ा न्यूज़ वगैरह हुआ. ऑफ कोर्स मीडिया के रिलेटेड भी वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम SIIC एंड IIT कानपुर. यहाँ पे होना इज़ अ प्रेस्टिजियस थिंग. मतलब ज़्यादा बताना नहीं पड़ता है. वी आर IIT कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी, दैट्स इट. तो उसके बाद वी गॉट सम पायलट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम सम बिग ब्रांड्स हु वांटेड टू चेंज देयर पैकेजिंग. तो वो पायलट्स हुए. ऑफ कोर्स हम अभी उस प्रोडक्ट को स्केल नहीं कर पाए क्योंकि बीच में कोविड हुआ. ड्यूरिंग कोविड टाइम ऑल्सो 1-2 महीने तक तो सब कैंपस ही बंद था, तो हम लोगों को बंद रहना पड़ा. यहाँ पे हम आ नहीं पा रहे थे. अगेन बंदोपाध्याय सर शुड सपोर्ट फॉर अस. हार्डली 1-1.5 महीना बंद रखने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोगों को परमिट दे दिया कि नहीं आके काम शुरू कर दो. तो कोई नहीं, उस टाइम सिर्फ मैं और संदीप कैंपस में रहते थे. कैंपस वॉज फुल्ली वैकेंट, बट वी केप्ट वर्किंग. बाय दैट टाइम हम लोगों को ये जो लेदर अल्टरनेटिव का आइडिया है वो एक मतलब काम करते करते मिला. ऐसा नहीं कि सब आइडियाज़ पहले से आए थे. स्टार्टेड विद द स्मॉल थिंग लाइक अगरबत्ती, कंपेरेटिवली स्मॉल. आज हमको वो स्मॉल लगती है, उस टाइम बहुत बड़ी लग रही थी. उसके बाद पैकेजिंग का आइडिया. अब पैकेजिंग का मतलब सिंपली थोड़ा सा साइंस बताऊं तो वी मिक्स वन पर्टिकुलर माइक्रोबियल कल्चर एंड फूल. तो वो माइक्रोब ग्रोज एंड द फ्लावर्स और एनी एग्रीकल्चरल वेस्ट यू कैन टेक एंड यू कैन शेप इट इन वॉट एवर फॉर्म यू वॉन्ट. अब वो जो माइक्रोब की आउटर लेयर बनती थी, उसका टच फील करके हम लोगों को ऐसे लगा कि यार ये फैमिलियर टच है. तो वो आइडिएशन वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड वी गॉट टू नो क्या चाहिए, लेदर जैसा लग रहा है, तो क्या ये लेयर आइसोलेट करके लेदर टाइप का प्रोडक्ट बनाया जा सकता है. तो फिर रिसर्च उस डायरेक्शन में डाइवर्ट हुआ. बंदोपाध्याय सर का और एक बहुत बड़ा सपोर्ट ये है कि ही कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायो साइंस. तो कदम कदम के मतलब ही इज आवर टेक्निकल एडवाइजर एक्चुअली. वी प्राउडली राइट इन आवर एवरी पिच डेक. देन सौरभ सर जो IIT कानपुर के बोर्ड पे है, वो आए थे SIIC विजिट करने के लिए. ऑफकोर्स बंदोपाध्याय सर ही उनको लेके आए थे. ही इज द पद्मश्री फाउंडर ऑफ NASCOM, बिग पर्सन. So he saw our products. I was the first person to proudly show them the products during SIIC visits.
तो उसके बाद उन्होंने अंकित को अप्रोच किया, नहीं वो नचिकेत ने मुझे प्रोडक्ट दिखाए थे, बहुत अच्छा लगा, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से वो सिलसिला चलता गया। उसके बाद ऑफ कोर्स वो स्केल आया, तो अब ये जो लेदर वाला प्रोडक्ट आया तो हम लोग दूसरे कॉम्पिटिशन में उस प्रोडक्ट को लेके जाने लगे। तो देयर वाज कॉम्पिटिशन इन मुंबई, एक्चुअली वो लैक्मे फैशन वीक का था, उनका फाइनल अवार्ड ये था कि वो आई जस्ट गेट 1 more minute till the journey how Alia got on board. Yeah. तो एक्चुअली उनको ये था कि उस प्रोडक्ट से कुछ आर्टिकल बना के वो रैंप वॉक वगैरह करवाना था, बट प्रोडक्ट बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे था, तो एज सच कोई बड़ा अवार्ड तो नहीं मिला। बट उस टाइम पे पीटा नोटिस्ड अस, तो पीटा गॉट ऑन बोर्ड कि नहीं इसके लिए काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, यू हैव आवर सपोर्ट, so what are your other products? So we showed us there are a range of incense, all the not just incense, we have gift boxes and everything. So they did the gifting that year। और पीटा का सर्कल पूरा सेलिब्रिटी सर्कल है, तो वो सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास हमारे प्रोडक्ट गए, एक बार होली के टाइम भी गए, दिवाली के टाइम भी गए। तो आई थिंक दैट्स हाउ आलिया रिसीव्ड द प्रोडक्ट। शी did a little more study on that, what is the company, what they are doing. She also liked the aspect of we trying to provide livelihood to the women flower cycler part, and that's who she approached, and she's like, I want to be part of it, so she came on board. So it all started here in IIT Kanpur SIC with the support of Bandyopadhyay sir. Of course Funny sir also was very active that time, and just keep happening then। मतलब वो ना कि किसी चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है वाला चीज़ हमारे साथ आई थिंक होते गया। बट द ड्राइव वाज वेरी स्ट्रांग टू डू समथिंग अबाउट एनवायरनमेंट। थैंक यू नचिकेत। मिहिर, थोड़ा कहानी लंबा हो गया है, सो यू हैव टू से इन वेरी शॉर्ट कि ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो इसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है और कैसे आप मिटिगेट कर रहे हो उसको? ओके, सो जब हम लोग ने ये स्टार्ट किया था वायरलेस चार्जर बनाना, तो मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मेरा फ्रेंड बालाजी वो हाई वोल्टेज से है, और हम लोग इस पे डिसाइड कर रहे थे कि इस पे वर्क कैसे करना है। तो हम लोग ने ट्राई किया, तो मैं अपने घर से एक इंडक्शन स्टोव उठा के लाया, क्योंकि बेसिकली वो टेक वही है, तो हम लोग ने उसको ट्राई किया सबसे पहले, और जो कि मैंने उसको 15 मिनट के अंदर जला दिया। तो मैं उसको घर पे भी क्या दिखाता, वो फिर ख़त्म हो गई उसकी कहानी। फिर हम लोगों ने खुद से बनाना चालू किया, उसको हम लोगों ने आइट्रेशन करते रहे, उसको बार बार चेक किया, उसकी हाइट बढ़ाई, डिस्टेंस बढ़ाया, सब कुछ ट्राई किया, बहुत बार किया, बहुत कुछ जला, बहुत कुछ फूका, बहुत बार बॉम्ब ब्लास्ट की तरह भी वो जले हैं सब कुछ। और फिर उसके बाद जब हम लोग इस पर करते रहे तो हम लोग ने सबसे छोटा मॉडल उसका 500 वाट का एक चार्जर बना दिया। फिर हम लोग फोकस कर रहे थे कि इसको और कितना स्केल अप कर सकते हैं। तो हम लोग को एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आई, जो हम लोगों ने एक जो चार्जर है ये 45 डेज़ के अंदर कंप्लीट करके सेल कर दिया है, वो भी 5 लाख रुपीज़ का, टू अ यूनिवर्सिटी। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था वो हम लोगों ने बार बार रीड किया, उसको यूट्यूब पे भी देखा, उसके बारे में पढ़ा भी, और हमारे मेंटर अंकुश सर ने भी उसमें हेल्प करी, बहुत बहुत ज़्यादा उस पर हेल्प करी, और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से उसकी हेल्प भी ली। तो इससे हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी पे संभव हो पाया हमारे। थैंक यू मिहिर। निशांत, आगे आपके पास जाएंगे। तो जैसे आपने बताया एंड एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी। बोलने में बहुत आसान है, हाँ समझ भी जाते हैं, लेकिन असल में इतना आसान नहीं है ना, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट हैंड। तो आप अगर थोड़ा बताओगे लोगों को कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे है। तो इन शॉर्ट आई विल ट्राई कि पहले कॉन्सेप्ट आपको बता सकूं। जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर जनरेशन का आपने नाम सुना होगा, मींस आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, पानी ऊपर से हम गिराते हैं और नीचे एक टरबाइन के थ्रू उसको रोटेट करते हैं और उससे हम जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हाफ साइकिल है, आधा काम जो है प्रकृति खुद कर देता है, पानी को ऊपर ले जाके पहाड़ों में जमाने का काम प्रकृति खुद कर लेती है। हम इस पूरी साइकिल को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों साइकिल्स, यानी कि नीचे से ऊपर ले जाना। यहाँ पे हम पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सैंड का प्रयोग कर रहे हैं। पानी जो है वो स्टोर करने के लिए बहुत बड़े रिजर्वॉयर बनाने पड़ते हैं, और पानी को स्टोर करना, पानी के एवापोरेशन लॉसेस होते हैं। ये सारी परेशानियों से बचने के लिए ग्रेविटी स्टोरेज जिस फॉर्म में हम बना रहे हैं वो ड्राई सैंड यूज़ करती है। उससे कॉस्ट बहुत कम, टिकट साइज बोलते हैं उसको, यानी कि
जिस साइज में हम वाइबल हो जाएंगे। पम्प्ड हाइड्रो 5,000 करोड़ के साइज में जाके वो आपको वो बिजली जो है जिस रेट पे चाहिए उस रेट पे मिल पाती है, बट हम यही काम 30 करोड़ पे करने की संभावना, बहुत प्रबल संभावना रखते हैं, और हमारा पहला प्लांट जो है वी आर वर्किंग ऑन दैट विच इज अराउंड 30 करोड़। दिस इज वन थिंग। द चैलेंज यू नो दैट आई वांटेड टू क्विकली टच अपॉन, दो तरीके के चैलेंज। एक फिजिकल चैलेंज है कि बहुत लंबे गोल होते हैं, इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, बट फिर भी एक चीज़ जो बहुत काम आती है वो चीज़ यू नो भगवत गीता में दी हुई है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो हर रोज सुबह आप उठें और कुछ भी चैलेंज आता है, मतलब एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रही है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंट्रोल सिस्टम्स, ये सारी स्टैक जो है, जो चैलेंजिंग स्टैक है, ये हम इसको रोज डील करते हैं और कहीं से भी परेशानी आ सकती है। बट एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो ये है कि जब भी परेशानी आती है टेबल पे रखिए, डिस्कस करिए, उसको सबसे पहले तो सवाल ही पूछ लीजिए। मेरा मानना ये है कि असलियत में अगर आप सही सवाल पूछ पा रहे हैं तो रिसर्च की सबसे बड़ी लड़ाई भी वही है कि आप सही सवाल ढूंढ पा रहे हैं, अपने विषय को सही से एड्रेस कर पा रहे हैं। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज फिजिकल इन नेचर, कि आप अपना, विच इज मेंटल इन नेचर, आप अपना जो ध्येय है उसके ऊपर। दूसरा है आइट्रेशंस, जो मिहिर ने जिसका जिक्र किया, आइट्रेशंस मतलब रिपीट कर पाना, एक चीज को इस तरीके से करना, इसको इस तरीके से करना, इसको इस तरीके से करना। रिसर्च में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जब आपके पास लिमिटेड फंड होता है, लिमिटेड मैन पावर होती है, तो आप उसको चाहते हैं कि आइट्रेशंस, यानी कि एक दिशा में जा सकते हैं, दूसरे में जा सकते हैं, तीसरे में जा सकते हैं, बट रिसर्च में 1,500 दिशाएं आपके सामने एक बार में प्रस्तुत होती हैं। अब आप उनमें से कितने 2 या 3, 4 का चुनाव कर पाएं, तो बहुत धैर्य चाहिए होता है, और कोशिश ये करनी होती है कि आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी अपनाएं, और वो शायद एक्सपीरियंस से आती है। तो ये हार्डवेयर में काम करने के इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं, और इसके टेम्पलेट बहुत पीछे से अवेलेबल है हमारे पास। ये जो हमारी जो पहली जो मतलब जो शुरुआत हुई है 150 साल की, जो हमारा इतिहास अगर एकेडमिक में लूँ या उससे पहले से भी मैं लूँ, तो ये टेम्पलेट्स पहले से अवेलेबल हैं, बट जितनी लेगेसी है उतने ही चैलेंज भी ज़्यादा हैं उस तरीके के। बट इट ऑल पेज ऑफ व्हेन यू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योर यू नो ऑब्जेक्टिव, आप क्लियरली डिफाइन कर लें और बस टिके रहें। दैट इज यू नो जिंदा रहने की लड़ाई है हार्डवेयर में। इफ यू यू नो कंटिन्यू टू इवॉल्व, देन डेफिनेटली यू विल सक्सीड। और एक छोटा सा चैलेंज जो निशांत ने बताया नहीं, बाकी सब कंपनीज को स्टार्टअप ग्रांट देने के लिए पूछते हैं तो 5 लाख 10 लाख से उनका काम चल जाता है। निशांत को पूछा, बोला कि मुझे 5 करोड़ चाहिए शुरुआत में, क्योंकि a small structure will not serve its purpose, and nobody is willing to bet on a new company with so much money, so that's another huge challenge. जस्ट वांटेड टू ऐड, मतलब हम अभी सिर्फ अभी ज़मीन लेने के लिए पिछले 1.5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा सबसे छोटा प्लांट है वो 46 एकड़ में आएगा, 46 एकड़्स, विच इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। तो ये चैलेंजेस हैं डेफिनेटली, बट आई थिंक इट बिकम्स ईजी, क्योंकि थोड़ा ग्लोरीफाई भी हो जाता है। अगर आप बड़े स्पेस में कुछ काम करते हैं, इट बिकम्स ईजी टू यू नो रीच आउट, पीपल नो दैट यू आर वर्किंग ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट। So thanks निशांत। सार्थक, आपसे सवाल ये पूछूंगा कि फॉर दोज ऑफ यू हू डू नॉट नो, वो उनका जो नोवो बोर्ड बना है उससे अभी स्कूल के फर्नीचर्स वगैरह बन रहे हैं। तो सार्थक, ये वाला आइडिया कहाँ से आया? बोर्ड्स हम लोगों ने डेवलप कर लिए, एंड मेरा प्राइमरी फोकस कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट मार्केट जो मेरे बोर्ड्स के लिए है। बट अब जो नई जनरेशन आ रही है उसमें भी एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है फॉर सस्टेनेबिलिटी की, पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एंड टारगेटिंग स्कूल चिल्ड्रन, इसमें मतलब उन लोगों को दिखे कि ये देखिए वेस्ट से बना है और ये कितना अच्छा बना है, ये रिसाइकिल करके चीज से बना हुआ है। तो दैट वाज वन इंस्पिरेशन फॉर अस, कि जिससे हम लोग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल करेंगे, अपने एंड से करेंगे। तो दैट इज हाउ ये हम लोग जो स्कूल की डेस्क एंड बेंच बना रहे हैं, एंड मेनली टारगेटिंग प्राइमरी स्कूल, कि जहाँ पे ये जाए और लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा, बच्चों को स्पेसिफिकली पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। थैंक्स सार्थक, थैंक्स। अक्षय, लास्ट क्वेश्चन। वो रामकुमार सर मुझे टाइम दिखा रहे हैं। आप
थोड़ा अगर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करोगे कि आपका बायो फर्टिलाइजर कैसे काम करता है? बायो फर्टिलाइजर में हम 3 टेक्नोलॉजी का मेजर यूज़ करते हैं, बायोटेक, नैनोटेक और केमिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक में हम करते क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते हैं। हर प्लांट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, जिंक, सल्फर, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। आप इसको इस बेसिस पे देख सकते हैं कि 100-150 साल पहले कोई भी फर्टिलाइजर नहीं होती थी, फिर भी फार्मिंग होती थी। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं जो हवा से नाइट्रोजन तोड़ के पौधे को दे रहे हैं, जो मिट्टी से फॉस्फेट बना रहे हैं, और कई ऐसे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ये सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब दूसरा इसमें टेक ये इन्वॉल्व होता है कि कई ऐसे बायोमासेस भी अवेलेबल हैं, जैसे एल्गी हो गया, एल्गी में प्रोटीन 78% से ज़्यादा है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसा फॉस्फेट रिच बायोमास हुआ, पोटास रिच बायोमास हुआ, सल्फर रिच बायोमास हुआ, इन सभी का कॉम्बिनेशन, बायोमास का एक कॉम्बिनेशन और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन हम प्रिपेयर करके एक कंसोर्शिया डेवलप करते हैं, जो कि सोर्स ऑफ जनरेटिंग न्यूट्रिएंट एज वेल एज सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट दोनों का एक रेशियो होता है कि इसको जब आप खेत में डालेंगे, एक तो इनिशियल में उतना न्यूट्रिएंट भी देता रहेगा और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में जाके एक्टिव हो जाएंगे और फिर सारे न्यूट्रिएंट खेत में बनाना चालू कर देंगे। इसके बाद सर 1 मिनट मैं और लूँगा। इसमें कई और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लोग पूछते हैं कि बायो फर्टिलाइजर ऑलरेडी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते थे, तो इसमें आप नया क्या कर रहे हैं? वी वर्क ऑन अ नैनो पार्टिकल जो हम पराली से बनाते हैं, पुआल से, जो हमारे माइक्रोब्स की थर्मोफिलिक नेचर 78 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाती है। कितना भी धूप पड़ता है, मेन क्यों बायो फर्टिलाइजर नहीं चल पाता, आप जब खेत कल्टीवेट करते हैं, धूप पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरना चालू कर जाते हैं उसमें, क्योंकि वो कितना भी 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने नैनो पार्टिकल पे काम किया, जो हमारे माइक्रोब्स की 78 डिग्री सेल्सियस तक थर्मोफिलिक नेचर बढ़ाती है। और तीसरा टेक जो केमिकल इंजीनियरिंग से आया है, आप कभी भी पुआल देखे होंगे तो उसमें एक चमकीली परत होती है। पुआल जब काट के सुखाते हैं तो वो लिग्निन होता है। लिग्निन अपने वजन, उससे हमने सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बनाया जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पैटर्न पे है, जो अपने वजन से 268 गुना ज़्यादा पानी सोख सकता है और धीरे धीरे करके पौधे को देता रहता है। तो जब इस तीनों का आप फर्टिलाइजर को ऐसे फर्टिलाइजर जब रिलीज करते हैं तो खेत में जब ये जाता है तो सारे तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, जिंक, सल्फर ये खेत में बनना चालू हो गया। किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में बनेगा, जहाँ सिंचाई आपने एक बार कर दिया, बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ रही है, वो सिंचाई की रिक्वायरमेंट कम हो रही है और एट द एंड यही रिजल्ट करता है कि आपका सॉइल की क्वालिटी भी इन्हेंस हो रही है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल एग्रीकल्चर में वो भी मिनिमाइज हो रहा है। थैंक यू। ये जो आपने 5 इनोवेटर्स के सुने, ये डीप टेक सिर्फ नहीं है, ये हार्ड टेक है, बहुत कठिन। तो ये स्कूल में कितना पढ़ाई किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत पढ़ाई करते हैं। दे ऑल रीड रिसर्च पेपर्स एंड एवरीथिंग to make their product successful. So I just thought that you should know that this kind of innovation, it does not come from thin air. You need solid knowledge. And I know that few people are really keen to ask some questions. Yeah, go ahead. Is there any microphone that can be given through the lady? Yeah, please go ahead. She has asked me first. आप पीछे दीजिए। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है। सर IPCC एंड नासा 2023 रिपोर्ट नेक्स्ट 18 ईयर इंडिया की जो 12 सिटीज मेजर सिटीज हैं विल गो इनटू वाटर। तो आज की डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग इतनी इंक्रीज कर रही है कि सो हाउ वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग से हम इसको कैसे पा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को? I think Professor Sudarshan is the right person. Next 18 year goal order. I think Professor Sudarshan is the right person to answer that. Okay, sir. Thank you. वैसे भी it's not a very easy question to answer, क्योंकि ये इससे आपको भी पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो अभी की है। अभी ऐसा नहीं है कि हम टाल सकते हैं, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे। अभी इट्स अ प्रेजेंट एंड क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर जिसको बोलते हैं, अभी है। और जितना हो सके जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमें अपनाना पड़ेगा ही। और मतलब ऐसे बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब जो भी हम करते हैं घर से शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबिलिटी भी ऐसे ही है, जितना हो सके हम भी अपना जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं हम उसको भी घटा सकते हैं, जिससे प्रदूषण फैलाए, जो भी पदार्थ प्रदूषण फैलाए उसको भी हम जितना हो सके कम कर सकते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये सब 3 R's जो है
इसके ऊपर भी और देर आर टोटली 10 hours इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, तो there are ways to do it, but we have to tackle it right now. Yeah, front row. Hello, sir. Hello, sir. I'll come to you next. Okay, sir. So good evening. So my question is from Dishan sir. आपने अभी अभी बोला था कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, पर सर अगर हम बात करें कि हम एक मिडिल क्लास इंसान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि रिटर्न हमें क्या मिलेगा। तो सर आप कैसे बोल सकते हैं ये चीज़ कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर? सर मिडिल क्लास वालों से पूछिए इसका जवाब मैं देता हूँ। इंटरप्रेन्योर की तरह बाहर आना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। सर इसका जवाब मैं देता हूँ। I do not know your name. This you can take from me on my personal guarantee. अगर आप ऐसा कोई प्रॉब्लम सोच सकते हो जिसकी समाधान बहुत जरूरी है और उसका समाधान का आइडिया आपके पास है, मैं गारंटी लेता हूँ आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए पहले 2 साल में दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। आज सरकार के इतने सारे बढ़िया स्कीम्स हैं, CSR फंड्स हैं, आपको प्रोडक्ट बनवाने तक हम पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। लेकिन जो पहले अमित अग्रवाल जी ने बोला, सक्सेस सबके लिए नहीं है, तो आप रिस्क लोगे, कर्म करोगे, फल का चिंता मत करो, क्योंकि बाकी सब हम जुगाड़ कर देंगे। बट यू हैव टू हैव दैट किलर इंस्टिंक्ट। हाँ, वो बाद में बताएंगे आपको। उधर एक सवाल था। Hello, sir. My name is Shauhard Barnwal. I am from Sultanpur, sir. Sir, actually my question is to Ankit, sir. Ankit, sir, is doing a very great initiative for young generation and for our generation, actually. So we are that generation that should be empowered, because the plant that is planted by our ancestors, so we are using it. So we have to do something new. So, sir, through it, the recycle problem is actually doing in village. And actually, when I was usually go to the village, I was seeing that lots of dump of जो कूड़े के जो ढेर होते हैं, वो एक जो प्रश्न चिन्ह हम लोग के ऊपर बना दे रहा है अभी भी, तो वो हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं? जो एक रिसाइकल का जो एक समस्या है सर, कि उस रिसाइकल को हम गांव तो कैसे पहुंचा सकते हैं और उसे हम कैसे एक तरीके से अपने यंगस्टर्स को एक अवेयरनेस के रूप में दे सकते हैं सर रिसाइकल को? थैंक यू सर। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास 30 सेकंड है जवाब देने का। Okay, we can always follow the licensing model here is what I can think of. For example, in the manufacturing of Flora foam, we are thinking of this model only. Packaging का bulk बहुत बड़ा है, the requirement, industry requirement is too huge. वो हम अपने एंड पे तब से ऐसे भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे. We have patented the technology, we will license it out. तो हर जगह छोटे छोटे प्लांट डाले जा सकते हैं और वहाँ का लोकल जो कूड़ा है, मैं बाकी प्लास्टिक वेस्ट वगैरह के बारे में अभी बात नहीं कर पाता हूँ, बट जो एग्री वेस्ट है वो आप ज़रूर ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो या लाइसेंसिंग द टेक्नोलॉजी एंड सेटिंग अप स्मॉल प्लांट्स इज द आंसर फॉर दैट. नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज़ आपसे. एक्चुअली मैं कानपुर देहात से हूँ, जहाँ की 60% से ज़्यादा आबादी कृषि करती है और इंडस्ट्री 4.2 बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहा है. तो मेरा ये ओपिनियन अभी तक रहा. मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आने के साथ साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजीज आर इन हाई मच इन कॉस्ट. इन सच केस फार्मर्स आर हाउ कैन अफोर्ड दिस थिंग्स, एंड जिन चीज़ों पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया फार्मर्स की, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं? बिकॉज वी आर फार्मिंग कंट्री, हम इमर्स कर रहे हैं एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर हम एक फार्मिंग कंट्री की पहचान को नहीं हटा सकते. तो ये चीपेस्ट कॉस्ट को अवेलेबल कराने के लिए कैसे हेल्पफुल है? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बोथ टेक्नोलॉजीज आर इन हाई कॉस्ट. नहीं, Thank you, आप sir. जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि IIT कानपुर का एक टेक्नोलॉजी है भू परीक्षक, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है आपके सॉइल हेल्थ टेस्टिंग के लिए.
आईआईटी कानपुर का एक दूसरा टेक्नोलॉजी है जो मॉइस्चर सेंस करते हैं और सॉइल क्रॉप डेटा को इंटीग्रेट करके आपको सही किस्म के इरिगेशन के बारे में जानकारी देते हैं। वो 10 रुपए का है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेंसिव है, जानकारी रखना जरूरी है। जानकारी रखने के लिए जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं उस पर आप हिस्सा ले सकते हो, आपको पता चलेगा, फिर आप कर सकते हो। लेकिन उधर मैम खड़ी हो गई है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन मिहिर सर से है। सर मैं इतना पूछना चाहूँगी, सर ने बोला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, तो सर जो मिडिल क्लास है वो इस व्हीकल का कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो व्हीकल्स तो बहुत कॉस्टली है, सर ने बोला बहुत महंगे हैं, तो सर उसका मिडिल क्लास कैसे यूज़ कर सकता है? वो आज आपको महंगा लग रहा है, 2 साल बाद उसका प्राइस कम हो जाएगा। वो जैसे सेल्स बढ़ेगा प्राइस कम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। Thank you, everyone. I must thank all our panelists for a very lively panel discussion. Thank you. I express my gratitude to all the panelists for their valuable contributions. The discussion was highly informative and we have our takeaways. Thank you once again for your valuable insights. I would now request Professor Amitabh Bandyopadhyay to kindly felicitate the panelists. Mr. Akshay Srivastava. Students, please maintain silence. Mr. Sarthak Gupta. Mr. Mihir Mishra. Mr. Dishant Mishra. Mr. Nachiketa. Professor Sudarshan. Now I'll request all the panelists to please come forward for group photograph. Thank you, everyone.
We would now break for tea. Next session will start at around 4:30 p.m.
अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी।
Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. Number 2, Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life. Number 3, Shared Future, Youth in Democracy and Governance. Number 4, Peace Building and Reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, Health and Well-being and Sports, Agenda for Youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision.
की अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Once an inspirational phrase, sky's the limit, has become limiting in today's age and time. Youth of 2023 aspires beyond the skies. They want to do and achieve the unthinkable. The power to create is the most sacred power humans have been bestowed with. According to ancient beliefs, the universe comprises of 5 fundamental elements: earth, water, fire, air, and space. The design language of Y20 India also reflects this belief, the Pancha Mahabhutas. The 5 themes of Y20 India are: Number 1, future of work, industry 4.0, innovation and 21st century skills. Number 2, climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. Number 3, shared future, youth in democracy and governance. Number 4, peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. Number 5, health and well-being and sports, agenda for youth. With the world striving towards a more equitable, peaceful and sustainable development, Y20 India is making sure young people are at the heart of that vision. भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi declared the theme of G20 2023 as Vasudhaiv Kutumbakam, which means one earth, one family, Students, please take one front future. seats. Once an inspirational Please phrase, come forward. sky's the limit, has become limiting in today's age. Volunteers, please instruct students to take front seats.
Students, please take front seats. And I request all of you to keep your mobiles on silent or flight mode. Now, let's move on to third panel discussion of the day. Today, we have a distinguished panel of experts who will be sharing their experiences and insights on the topic, innovation in future of work. With technological advancements, globalization, and changing society values, the nature of work is undergoing a significant transformation. Our esteemed panelists bring a diverse range of experiences and expertise and would be contributing to the discussion with their valuable insights and perspectives. The moderator of this panel discussion is Mr. Kapil Kaul. Mr. Kapil Kaul is the CEO of IIT Development Foundation, a not-for-profit company established by IIT Kanpur to professionalize engagement with stakeholders like alumni, industry, foundations, and philanthropists, and to raise resources to meet institute's growth ambitions. A management graduate from Mumbai University, Kapil has over 22 years of rich leadership experience across banking, not-for-profit, and higher education sector. He started off as a banker working with the likes of HDFC Bank, ABN AMRO, Deutsche Bank, and RBS. He then transitioned into not-for-profit sector as a fundraising professional. During his stint at Save the Children, he built the retail fundraising operation from scratch to one of the largest portfolios in the country. Over the last 9 years, Kapil has been a part of the higher education sector, leading the development offices at IIHS, IIT Bombay, and now at IIT Kanpur. Under his leadership, the IITK fundraising has seen a 500% jump in the last 2 years. I would now like to invite moderator of this panel discussion, Mr. Kapil Kaul, to kindly come up on stage and introduce the panelists. Thank you, Shweta. Good evening, everyone. I think सब लोग चाय पी के आ चुके हैं, थोड़े तरोताज़ा हो गए हैं. तो अब हम अपने अगले सेशन की तरफ की शुरुआत कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन पॉइंट है इनोवेशंस इन एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क. इसको देखने के कई नज़रिए हैं. हम बोल सकते हैं इनोवेशंस इन फ्यूचर ऑफ वर्क या फिर इनोवेशंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क. So just to give you some perspective, we're already in the third decade of 21st century. जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था या जब मैं आपकी उम्र का था, तो हम बोलते थे कि हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, और अभी 21वीं सदी के 3 दशक ऑलरेडी जा चुके हैं. और जिस स्पीड पे दुनिया बदल रही है, आज तक कभी नहीं बदली है इन दी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. एंड शायद आप अग्री करें नहीं करें, बट हम तो 90s में पले बड़े हैं, तो हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है आज. अब मुझे बहुत क्लियरली वो समय भी याद है जब ऑफिसेज में जब काम होता था तो केवल मैनुअल वर्क, मतलब हर चीज़ की फाइल बनेगी, हर एक टेबल पे जाएगा, सिग्नेचर होगा, सब चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी. वहाँ से चीज़ें निकल के गई टू अ पॉइंट. एक समय आया जब बोला कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और लोगों को ऐसा लगा अरे अब कंप्यूटर्स आएंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी. तो ये एक डर हुआ करता था. उस समय से फिर एक कंप्यूटर्स के इंट्रोडक्शन के बाद एक समय आया, बोला अरे अब Y2K आ गया तो सब रुक जाएगा, सब थम जाएगा. बट कुछ नहीं थमा. ये कारवां चलता गया, इनोवेशंस होते गए, हमारे वर्क स्पेसेस बदलते गए टू अ पॉइंट. पिछले 10 साल में या पिछले 10-15 साल में, विच इज़ बीन द इंटरनेट रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स, जिसने हमारी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल दिया है. हम जैसे सीखते हैं, हम जैसे पढ़ते हैं, हम जैसे काम करते हैं, हम जैसे ऑपरेट करते हैं, हर चीज़ में आज टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल. और अगले कुछ समय में
ये इसी आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये चेंज चलता रहेगा। हमने कोविड में भी देखा कि सारी दुनिया थम गई लेकिन काम नहीं थमा, everyone was working from home. So these are innovations which are regularly happening in this piece of work. So आज हमारे साथ एक बहुत ही डाइवर्स पैनल है who is going to discuss this future of work with us और उसमें क्या क्या innovations हो रहे हैं. They come from very different sectors, बहुत ही अलग अलग जगह से आए हैं, बहुत अलग तरह की कंपनीज रन कर रहे हैं, वो यंग लोग हैं, they are very very dynamic और एक यंग ऑडियंस को यंग लीडर्स से सीखने का ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है आज आप सबको. तो मैं शुरुआत करूंगा अपने पहले पैनलिस्ट को बुला के. उनका नाम है, हिज नेम इज मिस्टर तन्मय यादव. Tanmay is the co-founder and CEO of Trenchal Technologies Private Limited. He's a graduate from IIT Kanpur who graduated in the year 2021. और इतने कम उम्र में सोचिए, केवल 2 साल पहले वो ग्रेजुएट हुए हैं IIT कानपुर से. He's set up a company of his own and he's been working on the blockchain space for over 3.5 years and joined the National Blockchain Project in the year 2019, during which he developed and delivered several blockchain solutions to various e-governance divisions of the government across the country. Later, he founded Kruban Foundation in the year 2020 to pursue his interest in blockchain technology and to deliver benefits to the digital India ecosystem. He led the operations and execution of the Kaveri Blockchain Project, a government of Karnataka initiative where they digitized the land records of Karnataka state. And he's now driving a self-sovereign identity wave in India through his new venture, which is called Trenchal, a transition company from Kruban. During his graduation days at IIT-K, Tanmay was a core team member of various student bodies and possesses strong networking, collaboration, and management skills. He's a goal-driven executive who offers his executive expertise in business administration, achieving optimal growth, profitability, and strategic alliances. In addition, he's an empathetic leader and analytical thinker, able to inspire and cultivate productive working relationships with his co-workers and partners. So welcome, Tanmay. Our next speaker is Mr. Ashish Bajpai. Ashish is also an alumnus of IIT Kanpur. He's currently the Vice President of Products and Operations, looking after global loyalty, retention, and customer experience at OYO, a global technology company in hospitality space. Ashish has over 10 years of rich and diverse experience working in both multinational organizations and startups. After completing his BTech, MTech from IIT Kanpur, where he also received accolades like Academic Excellence Award, he joined Unilever as a management trainee and worked there for 5 years in various capacities, starting from factory operations, supply planning, and technology planning. Under his tenure, Unilever Nashik factory won Vasundhara Awards from Maharashtra government for making significant contributions towards sustainability and safety. After a successful 5-year stint with Unilever, Ashish joined OYO in 2017 when it was starting its expansion plans. In the last 5.5 years at OYO, Ashish worked on different capacities, starting from customer service excellence for India and South Asia to building digital and remote revenue management capabilities for vacation homes in Europe, and later on managing its global operations for OTA channels to recently looking after its loyalty and retention work streams. During his 10 years long period, Ashish has won numerous awards like Vasundhara Award from Maharashtra government, Refreshment Directors Award, Unilever Blueprint Award for Innovation and Sustainability. Yo, a product under Ashish's leadership, won numerous awards in the global platforms like Technology Excellence Awards by Quantic, Asia E-Commerce Award, Customer Service Award, and Wizard won Gold Awards in Customer Fest Show. Ashish is an avid reader and has a deep interest in scuba diving and traveling. Some of his favorite books are How Will You Measure Your Life?, Atomic Habits, and Fountainhead. Thank you, Ashish. I'd like to invite our next guest, Mr. Bhanu Pratap Singh Tanwar.
So Bhanu is also an IIT Kanpur alumnus, having graduated in the year 2016. He's an investment banking analyst turned entrepreneur. Bhanu started off, he co-founded Friend, FRND, in 2019. Friend is an audio dating and social discovery app targeted at India and other South Asian markets. The platform has over 5 million registered users and offers the service in about 10 Indian languages. In December 2021, Friend raised $6.5 million in a Series A round led by South Korean video game maker Krafton and existing investors India Quotient and Elevation Capital. Welcome, Bhanu. Our next speaker is Mr. Manas Seth. Manas is the founder and CEO of Good Grams, India's first health-conscious brand offering unique and innovative products sweetened using our traditional and 100% natural gur, which is the Indian jaggery. The innovative offering, Pinch, is a first of its kind product, a flavored jaggery dessert packed in a convenient small sachets. Taking a leap ahead, each Good Grams product has been fortified with an Ayurvedic herb that complements the taste and boosts the vital health benefits. Mr. Seth has been awarded an entrepreneur visa by the government of United Kingdom for his endeavors to battle waste management. He's a serial entrepreneur with extensive experience in plastics processing. He holds a bachelor's degree in commerce from NMIMS University, Mumbai, and a master's in international business and management from University of Strathclyde, UK. Welcome, Manas. Our next guest is Dr. Urbi Chatterjee. Dr. Chatterjee is an assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering at IIT Kanpur since 2021. Before joining IIT Kanpur, she completed her PhD from IIT Kharagpur in the year 2020. Her broad area of research is hardware security. She mainly works on physical unclonable functions, secure authentication, and key exchange protocol design for IoT, unmanned aerial vehicles, smart cars, etc. So I welcome all the panelists. So I'm looking forward to having a great conversation with you. I'll join you there now. This is more comfortable. Okay. So this is a rather open topic as जैसे मैंने आप सबसे बताया हम बात कर रहे हैं innovation and the future of work. हमारे लिए बहुत important है ये जानना कि हमारे वर्क स्पेसेस हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, उस हिसाब से हमें क्या स्किल्स डेवलप करने चाहिए और हमारा पैनल हमारी इस जर्नी में टू गेट दीज आइडियाज़ हमारी हेल्प करेगा. हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे पैनल को थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स में रखें सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम क्या आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड तो मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा टू कीप इट इन दैट फॉर्म. The process that we will follow with the panel, I will start with each panelist and they can basically talk about their thoughts on the topic that we are discussing today. And once we complete that whole round with each one of the panelists, हम सबसे जाके कुछ सवाल पूछेंगे जिस पे हम उनके विचार जानेंगे और उसके बाद हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पैनलिस्ट से इन मुद्दों पे कुछ सवाल पूछें ताकि हम एक अच्छा एनरिचिंग डिस्कशन कर सकें इस टॉपिक को लेके, क्योंकि ये आप सबकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आप हमारा फ्यूचर हैं. तो आई विल स्टार्ट विद तन्मय. Tanmay, please share your thoughts with us. Yeah. So hi everyone. Yeah, so as I can see the latest trends and most of you must be afraid about what ChatGPT, GPT-4, everything, and I think that must be creating some kind of insecurity that where it will lead to what is going to be there. But I would like to say that over the time technology has only bring in efficiency in the way humans operate, and human brains have evolved in a manner that
they keep on innovating and moving ahead. So don't underestimate what we as a human can do, and you can always evolve upon what is there in the market. So earlier when computers was talked about, so it was thinking that it will remove lot of jobs and in the banks and all, but it didn't happen. The other way around happened, that more jobs were created, more industries came up, more things getting developed over the time. So I believe that in the future of work, it will be more dynamic, where people are doing the work of their choice. They are working from the place of choice, and they can they will not do the redundant work. So when the innovation happens, they don't have to do any kind of redundant work, and they can actually focus on the things that really matters, and like innovating, solving the problem in a more efficient manner that the technology cannot do. So I open the house for the more thoughts on this. Ashish, your thoughts? Yeah. Thank you, Kapil sir. Thanks the team for having me and all of us here. I think काफी interesting topic है कि future of work में क्या innovation होने चाहिए या क्या innovation होंगे जिससे हम सभी लोग effectively आगे participate कर बढ़ सके. मुझे लगता है कि तो मेरे 3 विचार हैं इसमें. सबसे पहला what I think कि जैसे तन्मय ने बताया, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरल इवॉल्व हो रहा है. तो उसके इस डिकेड में एंड इन द कमिंग डिकेड्स हम लोग कैसे उसके साथ काम कर सकते हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. एंड अभी इस एज में जहां हम अभी कॉलेजेस में हैं, एज वेल एज जो लोग ऑलरेडी जॉब में काम कर रहे हैं, उन सभी को कंटिन्यूअस अपस्किलिंग की जरूरत रहेगी कि किस तरीके से हम नए नए डेटा के साथ में काम कर सकें, किस तरीके से हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें, सो दैट जैसे पिछले वाले पैनल में एक को फाउंडर ने बहुत अच्छे से बोला था कि क्या क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, राइट, वेदर वी आर थिंकिंग करेक्ट क्वेश्चंस और नॉट, वेदर वी आर यूजिंग डेटा करेक्टली और नॉट, आई थिंक विल बी अ वेरी वेरी बिग नीड फॉर फ्यूचर. एंड उस डायरेक्शन में इनोवेशन आने का रिक्वायरमेंट होगा, मुझे लगता है, बोथ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी एज वेल एज वर्किंग पॉपुलेशन में भी. सेकंड जो ट्रेंड हम सभी ने देखा है, राइट, कोविड आया, सर से आपने बोला काम चलता रहा, उस काम के दौरान लोगों ने सीखा कि हम हाइब्रिड होके कैसे काम कर सकते हैं. आप सब लोग तो अभी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज इन स्कूल, इन कॉलेजेस, बट वर्किंग पॉपुलेशन ने काफी नए इनोवेशन निकाले वहां पे कि कैसे हम घर पे बैठ के ऑफिस का काम करें. उससे 2 चीजें हुई. एक तो ये हुआ कि लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में ज्यादा टाइम दे पाए, तो वो एक बैलेंस थोड़ा अच्छा बना. बट उसका एक डाउनसाइड भी आया कि जो ऑफिस कल्चर है या जितना क्लोजली हम लोग घुल मिल पाते हैं अपने कॉलीग्स के साथ में, ऑफलाइन चैट कर पाते हैं, नए आइडियाज आ पाते हैं, वो कल्चर थोड़ा सा ब्रेक हुआ. तो सेकंड इनोवेशन मुझे लगता है कि जो हाइब्रिड वर्क कल्चर मॉडल है, जहां पर आप थोड़ा रिमोट भी कर सकें सो दैट पर्सनल लाइफ भी बैलेंस हो, प्लस फ्री फ्लोइंग आइडियाज भी हो सके, राइट, दैट इज द सेकंड अपॉर्चुनिटी. इसमें इनोवेशन ऑलरेडी काफी हुआ है, बट मुझे लगता है और होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर अवे, राइट. ये मेरा सेकंड विचार है. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट विच आई थिंक वेयर इनोवेशन इज नीडेड एंड वेयर ऑल ऑफ अस नीड टू थिंक, मोर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो नीड टू थिंक, कि जैसा अभी पिछले 1-1.5 साल में कोविड के दौरान एज वेल एज इकोनॉमी के डाउनटर्न में काफी हम लोगों ने खराब खबरें सुनी, राइट, मार्केट में, तो उससे ना थोड़ा सा एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व होने की जरूरत है अभी, राइट, कि कैसे फ्यूचर में जब हम लोग काम करेंगे तो हम अपनी खुद की भी वैल्यू क्रिएट करते चलें, while also having a sense of belongingness with the organization that which we are working. तो उसमें मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस को नए मॉडल, नए तरीके सोचने पड़ेंगे कि एम्प्लॉयज साथ में और बिलोंगिंग फील करें, राइट, rather than having the risk of
losing the job or what will happen to their future continuously. So that kind of safe environment will make them more productive and have a better future. I think these three are the thoughts which I have on the future of innovation of work. Thank you. Thank you. Manas, your thoughts? So, I am of a thought that आज से कुछ टाइम पहले वो क्रैडल टू ग्रेव वाली जॉब चलती थी 9 to 5. एक आपने एक स्किल, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे आपकी साइंस साइड हो, आपने जो नॉलेज गेन कर ली, फिर वही रह गई और आपने पूरी लाइफ अपनी उसी के थ्रू एंजॉय कर ली. Now the scenarios have changed, and as rightly said by the panelists, कि जो आने वाले टाइम में AI, जो एक चेंज मॉडल ऑफ वर्किंग, जो फ्रीलांसर मॉडल भी काफ़ी मार्केट में है इस समय, these are certain things which will decide how we will be moving forward with whole concept of work-life balance. And as again mentioned, कि अभी थोड़ी देर पहले एक पुराने पैनल में डिस्कशन हो रहा था, एक फार्मर कैंडिडेट ओवर देयर, उन्होंने बोला ये बात कि टेक्नोलॉजी इनोवेशंस तो हैं, बहुत हैं. द मेजर चैलेंजेस कि उसका अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिगर चैलेंज. इनोवेशंस तो आ रहे हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में यूज कर पाना, अब AI है आज की डेट में. इफ वी से वी हैव अ फार्म लैंड दैट इज इनेबल्ड विद सेंसर्स, ड्रोन्स एंड अ टेक इनेबल्ड फार्मर, he can give good returns for himself and to his family. But ये टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो जाए और अडॉप्टेबल हो जाए is where the major challenge lies in future. AI आ जाएगा, बिल्कुल आ गया है, सबके पास है, but are we able to implement it at ground level is where the biggest question in the future is. And I believe government and we as an institution holds a responsibility to come up with such innovations where the communication gets more clearer between the technology and the individual. 3 दिन पहले मैं आगरा में एक इवेंट में था, वहाँ पे the state government had organized an event for potato farmers. International buyers and farmers were sitting across the table, and I was also part of that event. I could see buyers को जो चाहिए वो farmers के पास होने के बावजूद नहीं है, because there are certain preconceived issues that are there and they can't manage it out because there's no proper communication. Even though buyer is ready to purchase from the farmer, farmer is ready to provide the product to them, but still the deal cannot happen because of something or the other, and we need these kind of issues to resolve. So I feel innovations are certainly there, it will always be there, but how well we can channel it down to the grassroots level to actually capitalize on these innovations is where the real challenge lies. Thank you. Thanks, Manas. Subhanu, your thoughts? हेलो कूल. तो थैंक्स, काफ़ी लोग यहाँ पे 5:30 बजे तक रुके हुए हैं, तो आई थिंक थैंक्स फॉर योर पेशेंस. आई थिंक यू हैव अटेंडेड लॉट ऑफ सेशंस सिंस मॉर्निंग. तो बहुत सिंपल चलते हैं, आई थिंक सबने टेक की बात कर ली. बहुत सिंपल चलते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस लेते हैं. हम फ्यूचर ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क कौन कर रहा है? आप लोग करेंगे, मैं करूँगा, तो वी आर द डेमोग्राफी. तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है काम से? डू वी एक्सपेक्ट कि मुझे एक पर्टिकुलर सिटी में रह के काम करना है, मुझे मेट्रो में रहना है? नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के पास रहना है जहाँ से मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप आया हूँ, या मुझे किसी रिमोट जगह रहना है, फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ में. तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि एट एन एज ऑफ व्हाटएवर एज यू आर, आई एम guessing the average age of this room, the audience is around 22, 21. So at 30, where do you see yourself in terms of कितना काम करना है एक दिन में? 8 घंटे भी काम कर सकते हो, 4 घंटे भी कर सकते हो, 18 घंटे भी कर सकते हो. There are all kinds of professions available. So I think very few times we actually question what kind of life we want to create for ourselves in the next 10 years, 20 years. So what I would want कि आप लोग आज जब भी घर जाओ, प्लेसमेंट में बैठोगे कभी या बैठ चुके होगे, जस्ट एक पेपर पे लिखना कि मुझे अपने नेक्स्ट 5 साल कैसे देखो. हाउ डू आई सी माई सेल्फ? मेरे पास जिम जाने के लिए टाइम होना चाहिए, मुझे सैटरडे संडे ऑफ चाहिए. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. एंड वाई आई मेंशन दिस इज द डेमोग्राफी इज चेंजिंग एंड द एक्सपेक्टेशंस जो आप लोगों की हैं एक वर्क प्लेस से वो भी चेंज हो रही हैं. So that's one lever which I think it's super important. Second, we have talked about tech, but there are few skill sets which
are not super tech heavy, but they are very important in India right now. So you will see, due to internet, post Geo Internet came in 2016, a lot of digital products are getting created. So apart from AI, ML, जिनकी बात हम कर चुके हैं, there are very simple skills like digital marketing, जो actually बहुत ज़्यादा need में है market में, but there are very few professionals who are expert in that. And it's very easy to learn digital marketing. आप जाइए, videos देखिए, there are so many resources, but very few people are, amazing in that in India. The second skill set is design. Why? Because there are so many apps being created right now. अब इन लोग design talent भी इंडिया में it's not huge. So basically it's important कि आप pick करें वो skill which is in huge demand but the supply is less. So that's the second point. And the third point, a lot of times we think of work as working in a company, yeah, working under a boss. But there is another way to think about work is which customer you're solving a problem for. So all of you in this room can eventually become entrepreneurs. And I think that is the mindset which we should have, is how to create more apps, more solutions for problems, micro industries in India, because abhi the bandwagon has just started. Post 2016, post UPI, the digital reach has actually increased in India, which and immensely. मतलब पहले जो कहते थे India 1 ही था जहाँ पे fast internet आता था, but now भारत जो segment है, which is India 2, India 3, Tier 2, Tier 3, Tier 4 villages, every place is connected. So now there are so many people who can spend over internet, who can consume content over internet, and the paradigm, जो basically canvas था, that has become very large. So what I'll say to you is not just think of this as a job, but think of as a problem जो अगर आपने solve कर दी एक customer के लिए, so you can essentially create an industry, and that is also a future of work. So yeah, that's my 3 points on this. Thank you, Banu. Urbi. Okay, so hello everyone, and thank you for having me here. So here everyone has talked about post-innovation changes. So I just want to go a little back, pre-innovation. See, innovations were happening for last 40, 50 years, and it will go on for next 60 or 100 years as our demands changes, okay? But as a student, as you guys are sitting over here, or as an educationist, I would say, do not make a distance from the basic. I mean, whether you are studying computer science or electrical or mathematics or physics, don't distance yourself from the basics of the topic that you are studying right now. The reason is that technology comes from science or applications of science, and innovation you can only do if you have the core knowledge of your base, okay? So if you have that, you can adapt the technology, you can be a pioneer of innovation, and you can go with the flow of the evolution that is coming on our way. Thank you. Thank you, Urbi. So I have a question with you. See, you're a faculty and a researcher in one of the leading academic institutions in this country, and very actively engaged. Students or industry, आपका सबसे engagement रहता है to you're meeting both the sides. You're essentially the bridge in many ways. तो ऐसे में आपको क्या लगता है, and looking at the way we have been evolving as a society, and as technology is becoming increasingly, we're becoming more and more dependent on technology, and it's becoming a part of our lives. और आगे future में हमारे students को, हमारे youth को, if they really excel, do well for themselves, and when they do well, the country also does well. तो किस तरह के skills हमको provide करने चाहिए? हमारे education system को क्या हमें change करने की ज़रूरत है? हम जो आज पढ़ा रहे हैं, क्या हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए या हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है? Course structures will be evolved.
depending on the kind of technology we are going to use, okay? Most of these institute like IIT Kanpur or other IITs and IIMs, what we do is that we keep a balance between the core courses that one should know, and we merge them with new courses, which would be very much important with the technologies that is coming up. So if you check our department, along with the normal CS courses, we now have a variety of courses from machine learning, deep learning, human-computer interaction, cyber security, hardware security, system security, and all. So we are also evolving depending on the technologies that is getting used by the industry. But yeah, so we need to evolve. We have to understand what is the current demand of the industry and accordingly train our students to get adaptable to that threshold that the industry demands. And do you think there is, are we moving at the right pace, or do we need to increase the pace at which we are, I would say, changing our curriculums, the way we deliver our education programs? Or I think more industry, academia interaction and collaboration would be helpful in future. The way it happens in USA or Europe, we might not have reached that level, but if we have more and more people from our area into the industry, if they go there and work in India and create a platform for Indian research and academia to contribute more into the Indian industries, that would be really helpful. So I'm taking a point that there is a need to increase industry academia collaboration in the country, which will very clearly lead to us being able to produce talent which is in line with what the industry needs. Yeah, Okay. from Thank both you. academia and industry, that brain drain has to stop. We have Thank to you. be here. Thank you, Urvi. That was really helpful. So Tanmay, I'll come to you as a young entrepreneur who's been doing some really, I would say, cutting edge stuff in I would say service delivery on the governance side. You've been doing some interesting stuff. What do you see that what opportunities कि हमारे जो यहाँ पे young लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनके लिए क्या opportunities है, वो क्या रास्ते choose कर सकते हैं in the space that you are in, and what future do you see there? So see, technology is just, चाहे cutting edge बोलें चाहे कुछ बोलें, technology is just one medium to solve a problem. So we as an individual are solving a particular problem statement. And solving a bigger problem statement, there are small problem statements that arise. So my request to the audience here is that focus on more, develop your analytical skills more, strategic skills more, problem solving skills more, and try to do things that involve logical reasoning more rather than focusing on the skills that has redundant standard operating principles. ना आप ऐसा कोई skill सीख लें जिसको बस ऐसे step follow करने हैं and algorithms that will go away, that will die out very soon. So you have to be an individual who have to solve problems that are in hand. Any technology that is coming, so as you see the evolution of humans, pehle they invented fire and all, they moved on. So they were solving the problems to survive more. So as an individual, we are tuned to solve problems more. So I would say ki try focus on the skill, as Bhanu sir said, ki design and creative thinking is something is lacking. It's not just in India, I believe it is lacking across the globe because अच्छे designers नहीं मिलते and all. And these tools can't do anything on that part because over the period humans perception change, over the period what लोगों को अच्छा क्या लग रहा है, कैसे screens अच्छे लग रहे हैं and all, etc. changes. And the flavor changes. So you can get into those kind of skills. Singing एक चीज़ हो गई, वो चाहे कुछ कर लो आप, singing जैसे skills you cannot do all those kind of things. So जहाँ पे learning वाली चीज़ें, sorry, I don't want to demean any subject like history, sociology and all, because internet is available everywhere. The communication, knowledge sharing, books are there. So learning वाले जितने भी jobs हैं जिनको बस learn करके काम करने वाले would not work in future. What will work in future is that
आप कितना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाते हो एंड उसको कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हो. तो ऑल दोज काइंड ऑफ स्किल्स, जैसे मैंने बोला डिज़ाइनिंग एक चीज़ हो गया, एंड मे बी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, बिजनेस प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे सपोज ओयो है, ओयो वांट्स टू लेट्स से इंक्रीज देयर कस्टमर एंगेजमेंट इन पर्टिकुलर एरिया, लेट्स से नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, एंड then you have to go and identify the on ground problems. You have to have the ability to ask the right questions कि मेरे को क्या questions पूछने तो मेरे को सारा data point मिल पाएगा. Data point लाने के लिए भी you need to have the ability to ask the right questions, right? So those kind of things can be done when you work more on the logical reasoning part of thinking rather than just mugging up and passing the courses and all. And as the ma'am will be taking lot of courses, so it will be my request that the course should be less focused on कि क्या याद करके वो कर सकते हैं, but it should be more focused on क्या वो problem को approach सही से कर पाते हैं. Thank you, thank you. So I'll just dwell upon that a little bit more. So what you're saying is essentially that focus on learning, on asking the right questions. तो मतलब सही सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है. एक स्किल जो सबको जानना चाहिए और आना चाहिए इज सही सवाल पूछना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ पाना, राइट? Over the period it will evolve. Yes, and another point on that, and because you talked about problem statements, and we're all looking at solving problems. Problems, in my experience, I have learned that problems are not disciplinary in nature. Problems in the real world are largely multidisciplinary. So how do our youth learn to deal with interdisciplinary? How do they develop those skills? Can you dwell on that? I would say since you should try to do certain activities in groups. है ना, मैं बहुत माइक्रो लेवल पे बता रहा हूँ, so that you will be able to handle then you will have a different point of view about the same problem statement. Then other disciplinary comments might come कि भाई ऐसे लोग ऐसे देखेंगे या ऐसे कर सकते हैं. So it's like that when you work individually, you are not, your thought process is not getting validated properly, and sometimes they are not getting improvised well. So the skill will be to work in groups, do projects together, do participate in hackathons together with your batchmates, team members and all. It will not only teach you a skill, it will teach you a soft skill, which is judging the people and how to make compromises, right compromises, है ना, हो सकता है कभी आपकी बात मानी जाए नहीं मानी जाए, and all those things. So basically you have to do things more in groups and develop this kind of skill, because at the end of the day humans evolved because they have the best capability to work together, as the book Sapiens says, and we believe in that. Yeah. Okay, great. Thank you, Tanmay. So, Manas, you've chosen to be in a very different space where you're focusing on creating products that not only focus on our health and well-being, but you're also creating opportunities, basically employment and scaling opportunities in the much neglected agri sector of this country. So what innovations do you think the sector requires for scaling up? And I would not say scaling up by becoming from small scale to large scale, but I would say many small scale units, right? So that is, how do you create? And this is, I felt at many occasions that how do we create more entrepreneurs at village level entrepreneurs who are small scale, but are able to earn their healthy livelihood out of that? How do you think we will be able to do that? To be an entrepreneur, we need to identify a product or a service that has a lot of buyers, right? Now, when we speak in agricultural sector, there are farmers that are cultivating some crop. Now, if I take an example of tomato, while farming tomatoes, there are different grades when they cultivate or harvest it. There are different grades. One एक लाल होगा तो कोई पीला होगा हल्का सा. जब हम कैश्यू नट की फार्मिंग करते हैं तो कोई बड़े साइज का होता है, कोई टूटा होता है. So the actual beneficiary of this is the person who processes these crops. As I said previously, that if we actually facilitate our farmers
or someone who want to grow in as an entrepreneur, you just need to find one simple problem, research about it a little, and you can certainly find a solution, because with the help of internet, you have answers to all the problems. So now when I say cashew nut and tomato, this value added proposition can be beneficiary for the farmer itself if it installs just one simple machine, which is color sorting machine. It's not an expensive unit. It's a very affordable machine. If it installs at his or her place and sorts his or her crop, they can get the value add benefit of it. Similarly, as I said, being an entrepreneur, you don't need to crack bigger challenges. Small issues around us can be beneficiary for many people around us. The reason I founded Gurugram's was of a problem for my father. He loves sweet, he cannot because of being pre-diabetic, and I curated these flavors to satiate his sweet cravings. The product, he liked it, I tested it, market approved it, and here I am selling flavored jaggery. The product does not need to be exceptionally great. It has to be unique and which can find masses as a customer. Thank you. Thank you. This is brilliant. So essentially, one thing which emerges very clearly is whether you want to be a professional or an entrepreneur, identify the problem statement. So that is a great skill, which so that's again a very key point that seems to be emerging. Coming to Ashish. Ashish, as a professional with over 10 years of experience, you worked with Hindustan Unilever, which is the foremost FMCG company in this country, and with OYO, which is most definitely one of the largest startups in this country. What skills do you think one needs to flourish in such a dynamic environment? Because both Unilever or OYO are very dynamic organizations. Things move very, very quickly. And how does one integrate innovations in the work culture of the company? Because innovation will only happen when it's a part of the work culture. Everyone believes in it. So only then will it thrive. So how do you think one? Thanks, Kapil sir, for asking this question. I will share basis my experience, right? What has worked for me and in general what my observations were. तो एक मुझे जो सबसे बड़ी चीज लगती है वो ये लगती है कि कितना बड़ा आप सोच सकते हैं. क्या आप कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम मिली, क्या आप उसका इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन सोच रहे हैं या आप 10x बिगर सोच रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कॉस्ट कम करनी है, राइट, मान लीजिए अभी कोई चीज मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, क्या मैं उसका 95 रुपीज में बेचने का सोचूं या मैं उसको 60 रुपए में बेचने का सोचूं या 50 रुपए में बेचने का सोचूं, which is like say half of it, right? So the people call it 10x thinking. So what has worked for me especially is कि whenever given a problem, think the bigger opportunity. कि भाई 10x कैसे मैं कर सकता हूँ इस चीज को, या मैं इसको डबल कैसे कर सकता हूँ, ट्रिपल कैसे कर सकता हूँ. जैसे अभी पिछले पैनल में somebody was asking कि कैसे हम लोग AI का यूज करके अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, राइट. तो इफ आई वर इन हर शूज, आई वुड आस्क माई सेल्फ कि कैसे मैं अपने खेत की प्रोडक्टिविटी डबल करूं, ना कि 10%. जब मैं डबल ट्रिपल सोचता हूं तब फिर हमको वी आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट वेज विच आर अनकन्वेंशनल एंड देन वी कम अप विद वेरी वेरी इनोवेटिव सोल्यूशन. तो एक तो मुझे वो लगता है. दूसरा, मेरे एक यूनिलीवर के एक्स बॉस ने, सीईओ ने, नितिन प्रांजपे, इफ यू नो हिम, he shared when I was a management trainee there. People work, typically there are two type of people. एक होते हैं जो पैशन के लिए काम करते हैं, पैशन फॉर एक्सेलेंस होता है उनके अंदर, कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, खूब जोश के साथ काम करते हैं. और दूसरे होते हैं जो जिनको डर लगता है, फियर ऑफ फेलियर होता है जिनके अंदर, कि भाई मैं करूंगा तो ये फट ना जाए, कि खराब ना हो जाए, चलेगा कि नहीं चलेगा. तो ही यूज्ड टू से कि यार अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप यू फॉलो पैशन फॉर एक्सेलेंस, कि जो आप कर रहे हो उसको एकदम परफेक्ट तरीके से करने का सोचिए. आई हैव
imbibed this learning since that age. It has worked for me beautifully. So I think that's the second thing which I believe we should sort of implement. एंड तीसरी चीज जो कई बार बोली है, पिछले पैनल में भी बोली थी, जब आप ऊपर के दोनों करोगे भी, जब आप बड़ा सोचोगे भी, आप अच्छा करना चाहोगे भी, बहुत कठिनाइयां आएंगी करने में, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो कितना परसिवियर कर रहे हो. Persistence and perseverance is the third thing which I believe is needed to foster the innovation in yourself and bring best in the dynamic environment that in which we are living in, right? And ये तो सॉफ्ट स्किल हो गई. और एक और मैं स्किल ऐड करना चाहूंगा, जैसे तन्मय ने भी काफी हाईलाइट किया, मानस ने भी हाईलाइट किया कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उसका सोल्यूशन, राइट? उसमें मुझे एक बहुत बड़ा लर्निंग मेरा रहा कि आप जब आप एक प्रॉब्लम समझें, या इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम भी है आपके पास में, आप 5 बार पूछिए वाई 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 वाई. ये जब मतलब अगर आपने घर में देखा होगा, बच्चे लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है. द किड्स आस्क दिस क्वेश्चन, ये कैसे होता है, पंखा कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, so on, right? Over the time we forget this, but Japanese have evolved this in a beautiful structure called 5W1H. You take a problem statement, ask questions 5 times, ki why. You will tend to understand the deeper connections. You will tend to understand the root cause of the problem, which will then help you implement, and the 3 soft skills which I talked about, which help you. Great. That was really insightful. Thank you, Ashish. So coming to you, Bhanu, that you've chosen to do in many ways a social media kind of a platform in a very crowded space of social media today, where everyone is so, right, everyone's phones are really clogged with different social media. How do you grow that? How do you basically chance upon this idea, and where did you see the opportunity in growing this? Where did you see the need, and how do you plan to widen the net of what you're doing? Cool. So why are we doing this? It solves for a very basic problem in conservative cultures, that is dating is broken. So if you live in a tier 1 city like Mumbai, Delhi, Bangalore, you have a lot of avenues to interact with the opposite gender. So you can go to pubs, you can go to cafes. Even if you go to a stranger and you compliment them, unko kuch context hota hai. I come from Kota. Kota is not a backward city, but in Kota there's only one pub, right? There are only probably 2 cafes. All the owners of these pubs and cafes know my family as well. So being a liberal and sort of a privileged kid in Kota, even I didn't have privacy. So the main problem statement is that boys and girls in mass market India, when you talk about non-metro cities, don't have privacy to meet each other in real life. And in internet ecosystem also, the avenues are very less. So how many of you in this audience use Tinder, Bumble actively? Raise your hands. How many of you have heard about Tinder and Bumble? Raise your hands. And how many of you have profiles on these platforms? So few, right? So few. So the fact is that everyone has heard about Tinder and Bumble, sabne sun rakha hai, but people are not creating profiles. If you open the app, I think boys majority dikh jate hain kafi zyada. You don't have women profiles because it's still tough for women to put their pictures on a dating app. And this is not just an India-centric problem statement. ये problem आपको पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, entire Middle East में है, conservative cultures like Indonesia में है. So places where meeting in real life in dating context is tough, that's one. And second, putting pictures on internet in a dating context is tough. Who is actually solving romance for these cultures? So majority जो internet की first wave आई है, इसने dating solve किए for tier 1. If you live in New York, if you live in Mumbai, Melbourne, life is amazing because you live in a liberal culture. You have Tinder and Bumble, which are face first dating products. But that is one way to look at the world. The another way to look at it is there are a lot of other ways to make people interact.
apart from showing their face. And how can that happen? So what happens on Friend, you actually don't have a picture, you have an AI generated avatar, and you have an audio streaming blind date. If people like each other, then they go into one-on-one conversation, right? So that's basically we found there is a very pinching pain point, and this is a pain point with a lot of people in India and overseas, and that's where we started solving it. That's one. So I hope that answers your question. That does. Thank you. I think it's time for us to take some questions from the audience. So we'll be happy to take a few questions. Can somebody just get the mic for us, please? माय नेम इज श्यामजी चौहान। मेरा क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी के विकास ने मोरलिटी जो नैतिकता है उसमें कमी की है। हम किस प्रकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जिससे समाज में नैतिकता बना रहे। समाज के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वह नैतिकता है, और आज अगर हम वर्तमान समय में देखें तो मानव मूल्य में कमी आई है और नैतिकता में गिरावट आई है। क्या इसका कारण टेक्नोलॉजी नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई मोरलिटी नहीं होती है। क्या इसका विकास मानव समाज पे नकारात्मक इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? तो इसका विकास किस तरह हम सकारात्मक में करें? समाज में नैतिकता को कैसे स्थापित करें? You like take that? Sure. See, I think एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था मैंने 2-3 साल पहले, वो टेलीग्राफ का था, यूके की एक न्यूज़पेपर है। तो उसमें था, वो आर्टिकल लिखा था एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरा आर्टिकल लिखा था, और उसमें उसने पूछा कि भाई पीपल कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या टेक्नोलॉजी दुनिया को खराब कर देगी, क्या ये कर देगा। तो उसने बोला कि देखो ये ना, मैं एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा कोई ये सोचना नहीं है कि मेरे को इसको खराब करना है या फिर इसको गिराना है या फिर युद्ध करवाना है। ये इंसानों की प्रकृति है, दिस इज आवर नेचर। टेक्नोलॉजी बनती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद में कैसे वी ह्यूमंस यूज इट, इट्स अप टू अस। देयर आर, every time a new technology comes, there are pros, there are cons. For example, when computer came, right, or when social media came, people were able to, लोग सालों सालों से जिनसे बात नहीं करा होगा उनसे कनेक्ट कर सके, उनसे बात कर सके। तो वो अच्छा साइड था टेक्नोलॉजी का, राइट। खराब साइड क्या हुआ कि वो एडिक्शन भी हो गया लोगों को, कि आप सोने से पहले आप बैठ के बस खाली you keep checking your Instagram page or Facebook page or WhatsApp, whatever you use. So I think this is it is up to us how we use the technology. It is not technologies for कि वो ethics लेकर के आए। Humans को, governments को, socialists को, we will have to define the boundaries wherever needed. That's one. And second, we also personally need to understand what is good for us, what is not good for us, and accordingly develop our own habits to use technology in favor of us, not against us, right? And I think overall globally काफी काम चल रहा है इसके ऊपर भी कि कैसे ethical use हो पूरी टेक्नोलॉजी का। सारी governments, institutions are working in that direction. So I am also hopeful that it will result into great outcomes. But at the end of the day, it is up to us. How do we want to use it? Thank you, Ashley. Greetings to such an inspiring panel discussion. So I'm Prasiddhi, I'm 10 years old. I'm the founder of Prasiddhi Forest Foundation. I've planted 1 lakh trees and I'm Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskrit. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइफस्टाइल शिफ्ट लगेगा, और अभी हम सिर्फ 8.9% सर्कुलर हैं। इसमें इनोवेशन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, और इस सोल्यूशन को हम ग्राउंड पे कैसे ला सकते हैं? Manas will
throw some, because that you have expertise in that space. See, innovation has a limitations, right? And one thing is that we are the drivers of these innovations. So execution and implementation is in our hand. And obviously, governments has a role to play, organizations, NGOs has a role to play, but eventually that has to be done by individuals themselves. So to do all these things, it is the education and the responsibility of each individual to take an action towards it. One, standing up for an impact of all of the individuals of complete population is not possible. So I believe, it's more of us, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर एक वो step जो हम ले सकते हैं to build our future more safe for our kids, our future generations, is our own responsibility. And until unless this awareness is there, I don't think, no matter how much we talk, how much we debate, this is not going to be implemented ever. Thank you. सभी को मेरा नमस्कार। सर, जैसा कि ये देश के हम प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडस्ट्री 4.0 में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, यानी हम टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपने यहाँ इंक्रीज करेंगे। बट सर एक बात है, अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी तो बहुत सारे लोगों के सामने परेशानी जॉब्स की होगी, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात सर कि गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, हम स्टूडेंट से रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, धरातल पर हम कितना वर्क कर सकते हैं, इस बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। As I was saying, जैसे मैं बता रहा था पहले भी कि टेक्नोलॉजी अगर आप देखें, जैसे कि कई चीज़ें आई, गाड़ी आई, पहले बहुत कुछ आया है ना, तो क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? पॉपुलेशन भी बढ़ी, जॉब भी बढ़ी, है ना। तो टेक्नोलॉजी आती रहेंगी। टेक्नोलॉजी इंसान इसलिए बनाता है कि अपनी रिडंडेंट काम को ख़त्म करने के लिए, सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए, बट वो टेक्नोलॉजी भी एक इंसान ही बनाता है ना। वो अपनी गाड़ी भी उसने खुद ही बनाई। आज कार कंपनियां कितनी जॉब क्रिएट करती हैं कंट्री में, राइट? कार कंपनी, बाइक कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो ऐसा नहीं था कि वो आती तो लोग समझते यार जो बैलगाड़ी चलाने वाला था उसकी नौकरी चली जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी चलाने वाले की नौकरी जाती है। हर टेक्नोलॉजी नेगेटिव नहीं होती, ओवर द पीरियड ये अच्छा ही है। जैसा आपने बोला, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ नौकरियां भी आएंगी, जो और अपॉर्चुनिटी बनेंगी, हाँ डिफरेंट टाइप की बढ़ेंगी। इंसान को समय के साथ अपडेट रहते रहना पड़ेगा, खुद को अपस्किल करता रहना पड़ेगा, बट टेक्नोलॉजी हमेशा नेगेटिव नहीं होता। टेक्नोलॉजी एक जगह से ख़त्म करता है तो दूसरी जगह क्रिएट भी करता है। तो हमें दूसरी टाइप का स्किल जल्दी से जल्दी सीख के आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, अपस्किलिंग एंड ऑल। I will just add one point to what just Tanmay said. जो ये अपस्किलिंग की समस्या नहीं बोलूँगा, अपस्किलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये अब हम सबके, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मानना है मेरा, कि ये हमारे जीवन पूरे लाइफ लॉन्ग चलेगी। We will have to keep learning, not just so the learning will not stop when we graduate from college, right? We will have to keep upskilling ourselves as technology evolves. We'll have to keep on finding to keep up with that. Otherwise, we will lose space. Hello, sir. So we'll take one final question. I want to ask a question from Hanu, sir. Sir, I have created an application. It is about PCOD. It is still in pro stage, and I would like to launch it soon, but I am struggling on how to market my application, sir. Sir, please give me a solution for this. So the first step for any business model or any proposition is to test the product. So first of all, you'll have to identify the credibility of your app. If that is there, if you can test it, and if you're certain of the product, PCOD is a very common problem nowadays. And there's a specific dedicated market, be it online or offline, advocating this particular problem. So as I mentioned earlier, you'll have to test the credibility of your product, and if it has value, you have so being an IIT, you have access to numerous people who can get your app developed and tested in the market. So this is something that you'll have to get it developed, and before anything else, you'll have to test your product and check the credibility, whether your app or the proposition that you're building will actually be giving the correct details or output that you're expecting out of it.
Once that is done, it's only after that you can think of commercializing it. I want to add to this answer. There's a book called Traction. Read that book. It'll answer all your questions. It takes into account if you have capital, how can you deploy that capital? If you don't have capital and you start bootstrapping it, it'll answer all your questions. Read that book, and like that's the best advice. That's what I did when I started Friend. So one more question from someone at the back. Hello. Someone at the back, the person in the black shirt in the middle. Yes. One last question. सर लास्ट सर एक बहुत देर से सर हम सर मैं संदीप कुमार The other black shirt. मैं संदीप कुमार चौधरी चरण सिंह बीजी कॉलेज हेबरा इटावा सफाई सर एक छोटी सी क्वेश्चन है कि हमारा देश जो है नवाचार में अच्छा क्यों नहीं है? कौन कहता है हमारा देश अच्छा नहीं है? हमारा देश बहुत अच्छा है। नहीं सर, क्योंकि इससे पहले का हम एक देखे थे कि हमारा देश बहुत अच्छा है। वैश्विक सूचकांक के अनुसार 2022 में देखिए 132 देशों में मेरा भारत का 40वां स्थान था। इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन पूछा कि हमारा देश जो है भारत देश जो है हमारा नवाचार में अच्छा क्यों नहीं है और बेहतर से बेहतर क्यों नहीं हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन था। थोड़ा दूर रख के माइक से बात कीजिए। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि हमारा देश इंडिया इनोवेशन में अच्छा क्यों नहीं है? किस में अच्छा नहीं है? नवाचार में। अच्छा, इनोवेशन में अच्छा। क्योंकि सर मैं 2022 का जनगणना देखे थे, वैश्विक सूचकांक के अकॉर्डिंग 132 देशों में हमारा देश का स्थान 40वां स्थान था। तो मेरा कहना है कि तात्पर्य है कि उससे भी बेहतर होना चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए? Would you like to take that? Who is the CEO of Google? तो क्यों आप ये ज्यादा लोगों के बात सुना मत करो। That will actually destroy your thoughts. So if you want to make your country better, you have to act. Nobody else will come and act for you. मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, छोटा सा। Yes. मैम जैसे हमारे यूज के लिए फोन बनाया गया था, इसीलिए हमारे यूज के लिए हमारे काम को आसान करने के लिए फोन बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे हम उसका एडिक्शन लेने लगे, आदी हो गया। और फ्यूचर में एआई बन रही है, अगर हम इसका आदी बन जाते तो हम इससे कैसे बचें? इसका आप आंसर दे दीजिए मैम। हम एडिक्टेड हो जा रहे हैं। We are addicted to AI. In future, we're addicted to our phones. In future, if AI takes over, how should we safeguard ourselves? Okay. So yeah, I think this point we have earlier addressed. देखो, technology आएगा, but you have to understand कि तुम्हें कहाँ रोकना है, right? अगर हम 24 घंटे सोने लगे तो काम नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं होगा. That's why we wake up and go for work, right? So similarly that, we have to understand where to draw the boundary and act accordingly. Thank you. So with that, I think we're done. We're done. I think we're done with the questions. We're running out of time. So No, I think thank you. Sir, Thanks. selected me. Thanks to our panelists. Shweta. I would like to express my sincere gratitude to all the panelists for their valuable contributions. Thank you for your insightful हेलो मैम, perspective. जो अभी इन्हें बोला था कि हमारा इंडिया आगे क्यों नहीं है, क्योंकि हम गलतियां ज्यादा निकालते हैं और खुद में सुधार नहीं करते, ये सबसे बड़ा कारण। और मैम मैं 1 घंटे से यहाँ चिल्ला रही हूँ कि मुझे 1 क्वेश्चन पूछना है, वो ये यहाँ पे एक साथ डिस्ट्रिक्ट, कभी आप एक साथ डिस्ट्रिक्ट को नहीं घूम सकते। यह सबसे अच्छा ऑप्शन मिला है कि हम एक साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। प्लीज हम लोग को ये बताएं कि आपने हमें सिलेक्ट क्यों किया है। हमें पता है, हम आपके थॉट से बिल्कुल एग्री करते हैं। आपने हमें मैम सब प्लीज Okay, please. Just 1 second. There is a decorum that needs to be maintained. If you want to ask the questions, please stay back. The panelists are not going anywhere. Please ask them individual questions. This is not the way to hijack the mic and keep asking questions. Please, this is my request. Okay, let's end the channel. Thank you all.
Thank you, panelists. I would like to express my sincere gratitude to all the panelists for their valuable contributions. Thank you for your insightful perspectives and for sharing your expertise with us. I would now request Mr. Kapil Kaul to kindly felicitate the panelists. Mr. Tanmay Yadav. Mr. Ashish Kumar Bajpai. Professor Urbi Chatterjee. Mr. Bhanu Pratap Singh. Mr. Manas Seth. Now we'll ask all the panelists to please come forward for the group photograph. Thank you, everyone. Ladies and gentlemen, as we near the end of this event, I would request Professor Asami Khantikar to take this session forward. धन्यवाद श्वेता जी। कार्यक्रम समापन की ओर है और कृपया शांति बनाए रखें। धन्यवाद। और कार्यक्रम समापन की ओर है और मुझे समापन टिप्पणी देने के लिए बुलाया गया है और दिन भर के इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद आप लोगों की प्रश्न पूछने की ऊर्जा को मैं धन्यवाद देता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। आप मैं समझता हूं ये ऊर्जा आप लोग बनाए रखें, क्योंकि जो उद्देश्य था इस कार्यक्रम का वो इस ऊर्जा का संचरण हमारे युवा वर्ग में हो, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था। और मैं समझता हूं कि आपकी जो ऊर्जा मैंने देखी अभी, उसको देख के ऐसा लगता है कि कार्यक्रम सफल हो गया है। कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ जी हैं यहाँ पे?
सिद्धार्थ जी शायद नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ आइए, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। कोई बात। तो सिद्धार्थ जी जो हैं ये Xuron.ai का एक डिजिटल थेरापेटिक्स बेस्ड वेल बीइंग प्लेटफॉर्म रिलीव है, और इसका ये इनका जो प्रोडक्ट है उसको वो लॉन्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगा एक यंग एंटरप्रेन्योर का कि जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया। ये प्रोडक्ट जो है, एक नया शब्द मुझे आज पता लगा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, फिजिटल। फिजिटल, तो फिजिकल और डिजिटल को इन्होंने जोड़ के एक बहुत बढ़िया शब्द नया बनाया। नए नए शब्द बनाते रहने चाहिए। तो फिजिटल शब्द का ये क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका अर्थ है, और वो इनके प्रोडक्ट के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मैं आमंत्रित करता हूं सिद्धार्थ को कि वो समझाएं और प्रोडक्ट को लॉन्च करें। उसके बाद मैं समापन की टिप्पणी करूंगा और उसके बाद जो है कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। सिद्धार्थ। Hello friends. So most of you have seen, so I'm like very happy that most of you were there in the stall and have experienced it already firsthand, and I hope you all enjoyed it. But more importantly, I just wanted to take 2 minutes to tell why this product and why it is all about health, well-being, not only for India but for globe. We all must have heard about some 90-year-old running a marathon or a 100-year-old running a marathon in the news now and then, right? How do they really live so long and healthy? More than long, they are healthy, they are physically active and doing it. But these days, what has happened to us? We are at our 20s, right? Probably we are fit in the college, we go to a job, we become a couch potato, we start losing our health, and slowly we get diabetes, all other diseases. Thanks to medicine, we may live longer, but within 30s, 40s, our quality of life goes really down, right? And if you see the latest reports, we are estimated to stay about 140 years in next couple of years. But in this health condition, if we live for 140, I'm sure it is not worth living, right? With that in mind, we wanted to do something which can really, really be simple, elegant, and solve so many problems. For example, 500 million people and more are suffering from diabetes, right? 1 billion plus people are getting over 60 and are in multiple medical conditions that they have. So how do we solve all these things? We worked for 4 years. We started from during my PhD at IIT to build solutions for this. We worked, we did multiple iterations, multiple trials, but somehow things were not really coming together until the Eureka moment. We wanted to build something very simple for the users and in which they don't have to worry about what's happening. And that led to the whole launch of Relieve. I would just request you to put the launch video. So it's a 1-minute video, just giving you an idea of what Relieve is before I give you a demo. And the answer was a phygital game. You just enjoy, have fun, play physically in the digital world without any other gadget required except for your laptop with a webcam on it. You have fun with yourself and with your family. And rest we take care of you with brain function, cognitive analysis, all the other analysis that are required for us to tell you how are you going to live life longer.
So quick 1-minute demo of how the platform works. Most of you have experienced firsthand, but just for people who have not. Just log into the web app, just a URL. Once you log in, digital therapeutic platform. So as a first step, what will we taking time for logging in. Unfortunately, internet is still not great. Right now, I hope 5G comes very soon. So once you log in, you select the games. There will be multiple games coming soon. First game is launched today. It has more than 40 levels for you to play, explore, have fun while doing your brain function assessment. You select your music, you select the difficulty mode that you have, select how are you feeling. With all this input, a game gets generated. And voila, you just need to jump and you start playing the game. You duck, keep playing, raise your hands, keep your hands down, and there are other multiple actions coming together also. So overall, have fun, and while having fun, we do all the analysis that we want to do. And this product is not only for India, we are launching today for India, but soon we are going global. And you lower the hand, and you just keep taking all the turns that you can. And with this, we are officially launching our public program. Please visit Xeron.ai. Spread a word about to your people whom you know would need this game and could actually help us as well as them. Thank you so much. So congratulations, Siddharth. It's a wonderful idea. Thank you very much for launching this product today and making our audience aware of this interesting platform. Thank you very much. थैंक यू। तो अंत में मेरी जिम्मेदारी है कि दिन भर के कार्यक्रम को थोड़ा समापन करके कुछ टिप्पणियां करूं। जैसा कि आज सुबह राजशेखर जी ने एक बहुत अच्छा शुरुआत की कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने का एक तांता बांधा और सभी पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने अपने आप को इनोवेट किया हिंदी में बात करने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस श्रोता का जिन्होंने एक प्रश्न सवेरे किया था कि हम हिंदी में सुनना चाहते हैं आप लोगों को। धन्यवाद, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो कम्युनिकेशन है। जब तक हम जो चाहते हैं वो आप तक नहीं पहुँचेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए आज जो भाषा का बैरियर टूटा है तो मैं समझता हूँ कि ये तांता आगे भी चलता रहेगा। आज 3 पैनल डिस्कशंस हमने देखे और एक एग्जीबिशन देखा बाहर। तो जैसा कि आपको सभी को पता है G20 जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है 19 देशों की और यूरोपियन यूनियन की। और ये जो झंडे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये झंडे जो हैं ये करीब करीब 75 से 80% वर्ल्ड का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है G20 की जो साथ में आके इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। और इनमें करीब करीब 2/3 जो हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वो 2/3 जनसंख्या रहती है। और मुझे ये गर्व है इसका कि हम इस जो G20 का है इसका जो प्रेसिडेंसी है ये हमारे पास भारत के पास आई है। और जो युवा शक्ति हमारे पास है वो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये सारे झंडे फीके पड़ेंगे जब हमारा तिरंगा की युवा शक्ति जो है आगे जाएगी। लेकिन जैसा कि आज 3 पैनल्स में हमने डिस्कस किया कि जो हमारा फ्यूचर है उसमें कई चैलेंजेस हैं। और एक प्रकार से जो फ्यूचर ऑफ हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और जो फ्यूचर ऑफ वर्क, ये तीनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनमें आपस में एक सामंजस्य था। तो इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए आज हमारे पैनलिस्ट ने प्रयास किया, आपके सामने अपने विचार रखे। तो उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। एक जोर से एक तालियों की गड़गड़ाहट से उनको सबको आप धन्यवाद दीजिए। जो मुख्य चीज इसमें जो वसुधैव कुटुंबकम से हमने आज सुबह का कार्यक्रम शुरू किया, तो मैं IIT कानपुर के जब मैं 20 साल पहले आया तो वार्डन बना, शुरू में वार्डन बन गया था। तो एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा
वसुधैव कुटुंबकम का जो अपना जो मुख्य उद्देश्य है उसको किस प्रकार से हम इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब हॉस्टल में एक बच्चा आता है तो जब नए नए एडमिशन्स होते हैं तो केरल से, आसाम से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, सब जगह से बच्चे यहाँ आते हैं। उनको पता नहीं होता कि कौन सा रूम उनको मिलने वाला है, किस रूम में वो जाने वाले हैं। उनके पिताजी लोग बड़े यहाँ पे आते हैं आशा से, फिर एक दिन रजिस्ट्रेशन होता है। उनको ये भी पता नहीं होता कि उस रूम में कौन कौन पहले रह चुका है, इसके बाद कौन फ्यूचर में रहने वाला है। तो जब तक वो ट्रेन की जर्नी से यहाँ तक आते हैं उनको पता नहीं होता कहाँ रहने वाले हैं। यहाँ आने के बाद एक जब रजिस्ट्रेशन होता है उनका हमारा जो स्टूडेंट्स अफेयर्स का ऑफिस है वो उनको एक दिन उनको चाबी देता है कि हॉल नंबर 5 F ब्लॉक में 212 ये आपका कमरा हो गया। फिर वो सामान वामान लेके वहाँ कमरे में पहुँचता है। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक दिन पहले तक, 1 घंटे पहले तक, 5 मिनट पहले तक, जब तक वो चाबी नहीं मिली थी उसको, तब तक उस कमरे से उसका कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन जब चाबी मिल जाती है तो क्या हो जाता है, क्या होता है, क्या फर्क है? वो क्या बोलने लगता है? वो कहता है ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसको आ जाती है बराबर। तो ये जो भाव है ईंट गारे का वही रूम होता है, लेकिन जब उसको बताया जाता है कि ये मेरा है तो उसके सामने फिर कोई कचरा नहीं डाल सकता। उसके बाद शाम को उसके बाद उसके ऊपर कोई गलती से कुछ ने चिपका दिया तो वो डांटता है उसको। तो ये जुड़ाव की जो प्रक्रिया है, ये अगर हम इसको एक्सपांड करें कि ये मेरा हॉस्टल है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरी गली है, ये मेरा गांव है, तो ये भावना जब जागृत होगी तब ये वसुधैव कुटुंबकम का ये जो सिंबल है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये जुड़ाव अपने आप हमको दिखने लगेगा। फिर हम अपने आप काम करने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं ये मेरी गाड़ी है, वो शोरूम में रखी रहती है, चाबी मिलती है, मेरी हो जाती है। तो हम क्यों ना इस फ्यूचर को, जो हमारा भविष्य है, उसको यदि हम मेरा फ्यूचर माने, हमारा फ्यूचर माने, एक कलेक्टिव सोशल मूवमेंट की तरफ चलें, तब जाके जो इस यूथ 20 कंसल्टेटिव समिट का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। यहाँ से क्या निकला है? यहाँ से कुछ प्रेरणा निकली है, कुछ हमारे पॉइंट्स निकले हैं, कुछ उभर के आए हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन ये हमारा फ्यूचर है, इस बात का जब हमको अंदाज आ जाएगा तब फिर हम उस रेलवे की सीट को, जो कि RAC हुआ करती थी, जैसे ही कंफर्म होती है उसको हम साफ करने लगते हैं, उसके आजू बाजू सफाई करने लगते हैं, उसके आजू बाजू अपना बोलने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज पैनल डिस्कशन हुआ, इसका एक इसके पीछे एक भावना जो थी वो ये थी कि युवा शक्ति को अपने भविष्य के साथ अपनेपन से जोड़ना, ये एक उसकी मुख्य भावना थी। फिर उसके बाद उससे कई इश्यूज निकले, जैसे हेल्थ का इशू जब आया, फिर लास्ट में वर्क का इशू आया, दोनों जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि अगर हम 12 घंटे 15 घंटे काम करना चाहते हैं और हेल्थ नहीं है हमारी, तो अगर युवा शक्ति बीमार है तो देश कैसे प्रगति करेगा? देश है क्या? देश का क्या है? ये क्या है देश? ये तो कल्पना है ना। युवा शक्ति जो है वो है जो देश को आगे चलाती है। तो हमने कई विषय आज जो है हेल्थ में जब हमने देखा, कई विषय आए, मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा था। एक तो ये था कि नो सब्स्टिट्यूट टू हाई एंड रिसर्च, तो रिसर्च करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आया कि जो हमारी पद्धतियां थी, आयुर्वेद, योग, उसको हमारा अपनाते हुए, उसको विज्ञान के साथ जोड़ते हुए कैसे हम विश्व में उसको स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद 2-3 बड़े अच्छे पॉइंट दिए सर ने कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। छोटी छोटी चीजें बताई कि 12-15 घंटे यदि आप काम करेंगे तो अपना हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी जो जिस प्रकार से हमारे काम के ऊपर हावी हो रही है, तो वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है।
तो ऐसे डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, समाज सेवी संस्थाएं इसमें कैसे जुड़ सकती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए जो हमको फ्रेमवर्क चाहिए कि जिसमें भारतीय पद्धतियां, भारतीय सिस्टम, हमारे जो युवा वर्ग जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स या कंपनीज या हेल्थ के जो इश्यूज, जो ड्रग्स बना रहे हैं जैसे, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जाएं, उसके लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने बात रखी कि इंडियन सिस्टम्स, हाउ टू टेक दीज प्रोडक्ट्स टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसके बाद वेलनेस, समग्रता, होलिस्टिक हेल्थ, यानी केवल फिजिकल हेल्थ, अगर हाथ की केवल एक उंगली आगे बढ़ जाती है तो उसमें फिर वो दिव्यांग हो जाते हैं, उससे हम पूरा काम नहीं ले सकते हैं। तो हम किस प्रकार से समग्रता को, सर्वांगीण एक जो स्वास्थ्य की जो एक जो समाज में एक जो सोच है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमारे पहले पैनल में आया। उसके बाद कई और भी निकले, नवाचार, एंटरप्रेन्योर, हाउ टू ब्रिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन इंस्टीट्यूशंस क्लोजर, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मेडिसिन में, स्पोर्ट्स मेडिसिन में नए आयाम निकल रहे, स्पोर्ट्स मेडिसिन में सर ने बताया। तो इनको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को उसमें कैसे हम नए आइडियाज़ को लाके, इन नए आइडियाज़ को हम कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक ले जा सकते हैं, इसके बारे में उसमें चिंतन हुआ। टीम बिल्डिंग के ऊपर भी बात हुई, कोई भी काम जो है अकेले नहीं होगा, अब आने वाले फ्यूचर में ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ाव है इसमें, और मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मेरे को उतना ज्ञान है, लेकिन मैं टीम कैसे बिल्डअप करूँ जिससे कि नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज़, इनको मैं आगे ले जा सकूँ हेल्थ सेक्टर में। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, पेशेंस, परसिवियरेंस, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ड्रग्स बनते हैं, नए ड्रग्स बनते हैं, तो ये जो है ये एक दिन का काम नहीं होता, इसमें लगातार सालों वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ से इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये एक सामाजिक चेतना का भी विषय है कि कैसे हम टीम बिल्डिंग करेंगे, हमारे ईगोज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम कैसे लोगों को जोड़ेंगे जिससे कि जो है टीम्स के साथ ये बड़े प्रोजेक्ट्स हम ले सके इंटरनेशनल हेल्थ सेक्टर पे। दूसरा जो था वो था फ्यूचर ऑफ, दूसरा था मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजीज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसमें कई कंपनीज ही, उर्वरक में काम करने वाली कंपनियां, उसके हानि के बारे में हमको बताया गया, प्रदूषण के बारे में बताया गया, और सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सस्टेनेबिलिटी ये बहुत एक नया शब्द है जो आजकल हमारे पूरे जहन में है, क्योंकि यदि हम कोई चीज़ को, अगर पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी, अगर दूर से नासा का अगर आप फोटो देखते हैं, हमारी पृथ्वी, जब द ब्लू प्लैनेट, जब उसको देखते हैं तो दिखता है कि, हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि यदि गल्फ ऑफ मेक्सिको में कोई बटरफ्लाई यदि फ्लटर करती है तो उसका तूफान जो है इंडोनेशिया में आता है। ऐसा कनेक्शन है पूरा वर्ल्ड का, टर्बुलेंस का इतना ज़्यादा कनेक्शन है कि, तो ये जो जुड़ाव है कि इस देशों में से कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी तो उसका असर हमारे ऊपर आने वाला है। यदि कहीं न्यूक्लियर विकिरण निकलता है, यदि कहीं बॉम्ब स्फोट होता है, या यदि कहीं वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता है, तो हम सब जुड़े हुए हैं इस हवा के, इस एटमॉस्फेयर से, एक ब्लू अर्थ है। तो इसमें ये जो सस्टेनेबल फ्यूचर की जो बात आज हुई, वो बहुत बढ़िया पैनल था। और उसमें अभी इन्होंने बताया जो वृत्तीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी, उसमें कैसे जो है इनोवेशंस किए जाएं। उसके बाद इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हाउ टू डू दैट टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाउ टू सपोर्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। एक बहुत बड़ा विषय है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार लोग जो है गांव से पलायन करके जो है शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन इकोनॉमी ऑल्सो, बट इन पोल्यूशन ऑल्सो। So how to keep a balance between, and then finally of course renewable energy, और जिसको हम रिन्यूएबल कहते हैं वो वाकई रिन्यूएबल है क्या, इसके ऊपर भी चिंतन हुआ आज। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमने अपने घर के अंदर जो है वो सोलर लगा लिया है, लेकिन जहाँ से सोलर पैनल बन के आ रहा है वहाँ पे, जहाँ माइनिंग हो रही है सिलिकॉन की, क्या वहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी लग रही है, क्या वहाँ पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो उस सोर्स से लेकर आखिरी तक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखना है, इसके लिए क्या पॉलिसी हो सकती है। तो अभी इसके ऊपर जो है चर्चा हुई। तो और लास्ट में उन्होंने एक बड़ा अच्छा वो किया कि जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो प्रॉब्लम्स जो होती है, प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और हमने कई एग्जाम्पल्स देखे वहाँ पे जिन्होंने प्रॉब्लम्स को स्वीकारा, उसको पत्कार के उससे सॉल्यूशंस निकालने की तरफ उन्होंने सस्टेन्ड एफर्ट किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
और तीसरा जो अभी अभी पैनल हुआ फ्यूचर ऑफ वर्क का, तो उसमें भी कई बहुत अहम बातें जो हैं वो सामने आई। हाउ टू इंटीग्रेट AI ML मैन मशीन इंटरैक्शन। तो मैन मशीन इंटरैक्शन बढ़ने वाला है हमारे जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, वो आदि मानव से शुरू होते होते वो मानव बनता है और फिर कंप्यूटर पे बैठ के फिर आदि मानव बन जाता है। तो उस तरीके का एक फोटोग्राफ चलता है यूट्यूब पे, इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये मैन मशीन इंटरैक्शन जो है, इसमें एक तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हर बार मुझे भी याद है जब मैं छोटा था कि रेलवे का कंप्यूटरीकरण हो रहा था और उस समय बड़े तौर पे हड़तालें होती थी कि रेलवे जैसी बड़ी संस्था को आपने कंप्यूटराइजेशन कर दिया तो इतने सारे मजदूर जो हैं, इतने सारे लोग जो हैं वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि रेलवे के कंप्यूटरिंग के बाद भी रेलवे का एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी नहीं आई है। तो इसमें न डरते हुए ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, लास्ट माइल का जो पेनिट्रेशन है टेक्नोलॉजी का, वो उसको कैसे उसके ऊपर किया जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो वर्क कल्चर जो अभी नया बन रहा है फ्यूचर ऑफ वर्क में, इसमें एक इंपॉर्टेंट विषय आया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो अब आप अगर वर्क फ्रॉम होम, अभी परसों एक कंपनी के CEO मेरे से मिलने आए थे, तो उन्होंने अभी इंटरव्यू लिए, तो मैं भी कई बार उनके कंपनी में इंटरव्यू में लेने जाता हूँ। तो एक इंटरव्यू ने मेरे को, हम लोग को एक क्वेश्चन ये पूछा कि यदि आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा तो मैं आपके कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। So now these are the new challenges which we are facing, in which the employee wants 100% work from home. लेकिन उससे ये जो जुड़ाव की जो बात मैंने शुरू में की, वो जुड़ाव आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर एक गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। और कोविड पैंडेमिक ने भी हमको कई प्रकार के जो है चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, और हमको नए नए पैराडाइम्स दिए हैं जिसमें कि फ्यूचर जो है वर्क का आएगा। तो इस प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग का भी एक विषय छोटा सा आया, उसमें हाइब्रिड वर्क कल्चर की बात हुई। तो ऐसे बहुत सारे, तो आज ये जितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं, आपने कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 50-60 नए शब्द, 50-60 नए कीवर्ड्स और उनके आपस का संबंध, इसके बारे में आपने आज बहुत कुछ जाना। फिर जो एग्जीबिशन लगा उसमें भी आपने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट्स तक ले जाने के लिए कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 जो विषय थे, इसके ऊपर एक बहुत ही उम्दा डिस्कशन हुआ आज दिन भर में, और आप लोग सभी ने उसका जो है फ़ायदा भी उठाया। और भविष्य में जिस देदीप्यमान भारत की हम परिकल्पना करते हैं और उसका जो जुड़ाव ये G20 के माध्यम से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे मित्र हैं, जो एक फैमिली है, उनके साथ जो जुड़ाव है, उसमें आप लोगों की एक बहुत अहम भूमिका है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य हमारा सुनहरा रहे, और आप लोग जो नए नए विषय आपने आज सीखे हैं उसको आप निरंतर आगे बढ़ाते रहें। और मैं अंत में टीचर हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी नॉलेज लेने के लिए रुकना नहीं है, क्योंकि आप थम गए तो वहाँ मलेरिया का मच्छर जो है वो अंडे देता है थमे हुए पानी में। अगर आप बहते रहेंगे तो आप में ऊर्जा रहेगी, और आपके आजू बाजू वालों को भी आप ऊर्जा दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, आपको बोलना है कुछ? हाँ, बोल लीजिए। मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर ये प्रार्थना मांगते तुझसे, हम युवा पीढ़ी सुधर करके विवेकानंद हो जाएं, युवा पीढ़ी सुधर करके श्री रामचंद्र हो जाएं। और हम सब देश की ताकत हैं, हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाके मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर मानेंगे। कृषकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सस्तों वर्षों तक, क्योंकि नव भारत को ये दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। नव भारत को ये दुनिया वाले तो चिर युवा नाम से अंत में मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जिनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम जो है हम लोग को उन्होंने हेल्प किया बहुत। उसके बाद जो Y20 समिट के पूरे ग्रुप्स हैं,
हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट जो बाहर से आए हुए हैं, और इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डायरेक्टर साहब, और सवेरे हमारे मुख्य अतिथि साहब जो डिविजनल कमिश्नर राजशेखर जी आए हुए थे, और तमाम, आपने देखा इतना बड़ा कार्यक्रम करने में बहुत टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो मैं सभी के नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जितने भी पर्यवेक्षक भी बाहर से आए हुए हैं, हमारे रायपुर से अतिथि आए हुए हैं, हमारे कानपुर शहर से, नेहरू सेंटर से लोग आए हुए हैं, और जितने भी मिनिस्ट्रीज़ ने हमको हेल्प किया, सपोर्ट किया, उनका मैं सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और अंत में जितने भी आज यहाँ आए थे, जो आज उपस्थित हैं और जो घर चले गए हैं, उनका सबसे पहले मैं जो है करतल ध्वनि से मैं उनका सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पे आके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जनगण मन के लिए मैं सभी को, राष्ट्रगान के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि खड़े रहें। और राष्ट्रगान वीडियो पे होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सभी का आवाज़ उस वीडियो से ज़्यादा तेज रहे। राष्ट्रगान। तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे। जय जय। धन्यवाद। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हम लोग ने यहाँ पे ये किया है। तो 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कार्यक्रम 1.25 घंटे का होगा। उसमें 2-3 मुख्य कार्यक्रम है, भरतनाट्यम डांस, कर्नाटक शैली में गायन और उत्तर भारतीय शैली में गायन। आप सभी निमंत्रित हैं। धन्यवाद। तो बैठ एक किसी फटाफट आया लाइन लग जाएगी। डन। कौन? हर्षित लेना एक फोटो लेना।
check, check, check. Check, check, check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, hello. कोई मॉनिटर जाते हैं नहीं देखो. Hello. Check, check. Hello, check. Hello. Hello, hello, hello. Check, check. Hello, check. Hello, hello.
Check, check. Hello, check.
with a dance performance first. We just have to wait for another maybe 5 minutes or so, and then we start. Good evening, ladies and gentlemen.
It is my pleasure and privilege to extend a very warm welcome to all present here in the auditorium today. It is indeed a special occasion when we have an amalgamation of cultures of the North and the South of our beautiful land. Tapping talent from a diverse culture provides an opportunity to rediscover our roots and to remind ourselves of our tangible and intangible cultural heritage that has been in existence for generations. Music is an art that, in one guise or another, permeates every human society. It lends itself easily to alliance with words, as in song, and with physical movement, as in dance. It has the capacity to reflect and influence human emotion. Bharatanatyam is an Indian classical dance form of India, which was initiated in the Hindu temples of Tamil Nadu and eventually flourished in South India. The word Bharatanatyam connotes a dance that harmoniously expresses bhavam, ragam, and talam. It is a form of illustrative anecdote of Hindu religious themes and spiritual ideas emoted by dancers with special footwork and graceful gestures. We are delighted to have Vidushi Nagarekha Ji Rao perform today. She's a graded Bharatanatyam artist in DD Chandana. She started learning Bharatanatyam from a tender age and is currently under the tutelage of Professor M.R. Krishnamurthy, who is a direct disciple of the legendary Rukmini Devi Arundale. Nagarekha is a gold medal recipient in MA Dance from the Karnataka State Dr. Gangubai Hangal Music and Performing Arts University, Mysore. Gopalaka Pahimam Anisham is a popular kriti with lyrics in Sanskrit of Maharaja Swathi Tirunal set to Revagupti Rag and Mishra Chaputal. In this kriti, Krishna's leelas, such as showing the whole world in his mouth to Mother Yashoda, removal of Brahma's ego, blessing poor Sudama with wealth, are portrayed, and the dancer prays to Gopalaka to protect her. Ladies and gentlemen, Vidushi Nagarekha Rao.
That was indeed mesmerizing. Thank you so much, Nagarika ji. Exact definitions of music vary considerably around the world,
though it is an aspect of all human societies, a cultural universal. Music often plays a key role in religious rituals, rite of passage ceremonies, celebrations, and social and cultural activities. Hindustani music originated in the Vedic period, while Carnatic music originated during the Bhakti movement. Carnatic music is a system of music commonly associated with the southern part of the Indian subcontinent, with its area roughly encompassing the modern states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Performing today are Sri Sachin Sundarajan and Sri M.R. Rakshit. They will be accompanied on the flute by Dr. K.R. Guruprasad, on the violin by Dr. Venkat Narayanan, and on the mridangam by Sri D. Shankar Raman. Sri Sachi Sundarajan is a first-year MTech student in mechanical engineering at IIT Kanpur. He hails from Chennai, Tamil Nadu. He has been a student of Carnatic music since the age of 10 and was guided and trained by Sri Sudarshan and Srimati Radha Venkatraman. Sri M.R. Rakshit is a second-year BTech student of aerospace engineering here at IIT Kanpur. Rakshit started learning music at the age of 3 under Dr. Hamsini Nagendra, continued under Srimati Rukmini Raghunath, and is currently under the tutelage of Bengaluru S. Shankar. Rakshit also plays the Carnatic classical mandolin. Dr. K.R. Guruprasad is an associate professor in the Department of Mechanical Engineering at IIT Kanpur. He is passionate about Indian art, Indian classical art forms, and is trained in Carnatic classical vocal, flute, and Bharatnatyam. He's a graded artist in Doordarshan. Dr. P. Venkat Narayanan is a professor of mechanical engineering at IIT Kanpur. He started learning violin at the age of 15 from violinist Sri Nellai K. Vishwanathan of All India Radio Calicut, and continued learning Carnatic music from vocalists Professor Vechur Harihara Subramanya Iyer and Sri N.P. Ramaswamy. He has accompanied artists in many concerts in India and in the USA. D.V. Shankar Raman started learning Mridangam from a very young age from Mridanga Selvam Kumbakonam N. Padmanabhan, and received advanced training under the nationally acclaimed guru Kalai Mamane Thiruvarur Sri Bhaktavatsalam in the traditional Gurukulam style. He has performed in prestigious music sabhas in Chennai and at many other places across the country and the world. Sure. He is a graded artist of All India Radio and Doordarshan. So, ladies and gentlemen, let's enjoy this.
सबको प्रणाम. Good evening and welcome. Let me once again introduce. To my right is Dr. Guri Prasad, who will be playing the flute. Next to him is Sajin Sundar Rajan. And next to Sajin is Rakshit. And then our Mridangam artist, Sri Shankar Raman. So we will start the Carnatic recital with a Varnam composed by Rangaswamy Nattuvanar. This is in the language Telugu, set to Natakurinji Ragam and Adi Talam. The Varnam starts Chalamela. Varnam is a highly structured composition performed at the beginning of the concert. It serves as a warm-up for the artist. As we go ahead, I will announce the next song and so on. Ga
The next song is Isha Pahimam, a composition of Saint Tyagaraja in Sanskrit. This song is set to Kalyani Ragam and Rupaka Talam. Sachin will elaborate the raga little bit before we start the song. Tadari na 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 Isha Pahimam, Jagadisha 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 Pahimam. Asharagana Madharana Asharagana Madharana Asharagana Madharana Asharagana Madharana Asharagana Madharana Asharagana Madharana
संचार सोमाग्निधरणिलोचन कामादिकण्डन सुत्रामाश्रितपाद सामादि निगम संचार सोमाग्निधरणिलोचन कामादिकण्डन सुत्रामाश्रितपाद हेमाचल चापनि नुलिना मारवरु मुनि मनोदाम त्यागराज प्रेमावतार जगदीश पाहि मां सामादि निगम संचार सोमाग्निधरणिलोचन कामादिकण्डन सुत्रामाश्रितपादा हेमाचल चापनि नुलिना मारवरु मुनि मनोदाम त्यागराज प्रेमावतार जगदीश पाहि मां जगदीश पाहि मां जगदीश पाहि मां Next, we will present the song Baro Krishnaya. It's a composition of Kanagadasa, the language Kannada. This is a Raga Maliga, the ragas Mand, Mishra Pilu and Jaunpuri, and the song is set to Aditala. ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ಜಗತರ ಶೀಲನೆ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ಜಗತರ ಶೀಲನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಂದಿಗೆ ಪಾಡಗವು ಕಾಲಂದಿಗೆ ತಿರುಗೆಜ್ಜೆ
Next, we will present a bhajan, Pibare Ramarasam, composed by Sadasiva Brahmendra in Sanskrit. This is set to Ragam Ahir Bhairavi and Aditalam. So, with two more songs, our recital will come to an end. So the next item is Etillana or Tarana as it called in Hindi. It starts Geet Taku Niku Tagadhim. It's composed by Maharaja Saudi Tirunal in the Ragam Dhanasri set to Aditala. Gita Duni Kutakadina Dridritato
धुनि कुतक दीप नाच धृत धूप नाच रत तोरि तांदि तांते दिते विरह तांदि तांते दिते विरह तांदि तांते दिते विरह गीत धुनि कुतक दीप धुनि कुतक दीप धुनि कुतक दीप. We will now conclude with the Deshabhakti Geetam, Jayati Jayati Bharata Mata. It's a composition of Mayuram Vishwanatha Sastri in the Ragam Kamas, set to Aditala. जयति जयति भारत माता बुध गीता जयति जयति भारत माता बुध गीता निखिल मता वन निरता नत जन सुहिता निखिल मता वन निरता नत जन सुहिता जयति 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 सकल जीव समता साधु साधु विदिता सकल जीव समता साधु साधु विदिता अखिल लोक प्रतिता परमानंद समुदिता अखिल लोक प्रतिता परमानंद समुदिता जयति जयति भारत माता बुध गीता निखिल मता वन निरता नत जन सुहिता जयति 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 अगणित गुणशीला अतिदयाल बाला अगणित गुणशीला अतिदयाल बाला प्रकटित शुभ जाला प्रकटित काल लोला प्रकटित शुभ जाला पतित काल लोला जयति जयति भारत माता बुध गीता निखिल मता वन निरता नत जन सुहिता निखिल मता वन निरता नत जन सुहिता जयति 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 जयति. Thank you so much. Thank you. It was sublime. After this, I'd like to invite Dr. Devanand Pathak. He will present a short dhun based on Rag Pahari, on violin. Devanandji is a graded violin artist of All India Radio, Lucknow, since 2001. He's also an impaneled artist of ICCR New Delhi and has performed in the presence of the Prime Minister Shri Narendra Modi and foreign dignitaries in Hyderabad House. He started training from the age of 6 with his father, Pandit Umashankar Pathak. Later, he took up the formal discipleship of Professor R.P. Shastri of BHU in a Guru Shishya Parampara. He obtained his PhD in music from Indra Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh. Devanandji is a gold medalist in both MA in music and in Sangeet Alankar. He is also a Sangeet Visharad in vocal music.
He's also a recipient of the prestigious UP Sangeet Natak Academy Yuva Varg Prize. He was associated with IIT Guwahati as a visiting artist in residence from 2015 to 18. Currently, he's working in the Media Technology Center of IIT Kanpur. He will be accompanied by Shri Harish Jha on the tabla. Shri Harish Jha is a graded tabla player of AIR Lucknow. He's a disciple of Pandit Harish Chandra Dwivedi. He has performed solo as well as accompanied many great musicians like Padma Bhushan Girija Devi, Ustad Ghulam Mustafa Khan, Vidushi Veena Sahasrabuddhe, to name a few. At present, he's working as an associate professor at SN Sen PG College, Kanpur. ट्रेबल कम कर दीजिएगा, ट्रेबल कम कर दीजिए। इको Namaskar everyone. I am going to present Dhun in Rag Pahadi, composed in Tal Dadra.
अच्छा, उन्होंने उधर से माइक का साउंड ऑफ कर दिया था ताकि जो सीटी बज गई उसी से पता चल गया कि कितना पसंद किया गया है ये. So thank you, Devananji. That was really beautiful. For the Hindustani classical music performance today, we have with us Sushri Rashmi Chaudhary, who is the Assistant Director of Program at All India Radio Lucknow. She's an approved graded artist of AIR and TV in classical vocal and light music, and also in folk music. She has performed in many Sangeet Samarohs all over the country. She will be accompanied on the tabla by Sri Harish Jha, on the violin by Dr. Devanand Pathak, and on the harmonium by Sri Sanjay Mishra. Sri Sanjay Mishra was a disciple of Pandit Gopal Pathak ji and Sri Ram Sarup Katyar ji, and currently works as a music teacher at Dr. V.S. EC School at Shardanagar. Ladies and gentlemen, Sushri Rashmi Chaudhary. नमस्कार, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमन। मैं आभारी हूँ प्रोफेसर अभय करंदीकर जी का, निदेशक महोदय, और प्रोफेसर एस गणेश उपनिदेशक जी का, डॉक्टर समीर खंडेकर क्षमा कीजिएगा, और प्रोफेसर अर्णब भट्टाचार्य जी का। आप सभी ने यहाँ पे मुझे आमंत्रित करके मैं उनका सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया कि मैं
इस ऑडिटोरियम में आपके सम्मुख कुछ प्रस्तुत करने का अवसर जो दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं नमन करती हूँ माँ सरस्वती जी को, जो विद्या की देवी हैं। और मैं आज उस दिवस की बधाई देती हूँ क्योंकि आज चैत्र पूर्णिमा है। भगवान राम भक्त जी के जो भक्त हैं, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, आज हम सब लोग मना रहे हैं। और ऐसे पावन पर्व पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं सबको नमन करती हूँ और आरंभ करती हूँ राग हंस ध्वनि से। इसमें हम 2 बंदिश प्रस्तुत करेंगे और दोनों ही बंदिश पंडित रामेश्वर झा जी की है, जो राम रंग की मुद्रा से लिखते हैं। पहली बंदिश झपताल में है और आराधना है भगवान शिव जी की। शिव जी के ही अवतार हैं हमारे हनुमान जी। और दूसरी बंदिश गणेश जी की है और 3 ताल में निबद्ध है। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ, शुरुआत करती हूँ राग हंस ध्वनि से। थोड़ा सा तानपुरे की साउंड थोड़ा सा तेज कर दूँ। हाँ
जपता
बंदिश और बहुत पुरानी बंदिश है।
क्योंकि आज चैत्र पूर्णिमा है तो मैं एक छोटी सी चैती सुनाना चाहती हूँ। और मौसम भी देखिए वसंत का है, चूँकि कोयलिया हर जगह बोल रही है, ऐसे ही बंदिश में एक बोल है, चैत मास बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा। चैत मास बोले रे कोयलिया हो रामा। चैत मास बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा। चैत मास बोले रे कोयलिया हो चैत मास बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा। चैत मास बोले रे कोयलिया बोले रे कोयलिया चैत मास बोले रे कोयलिया हो रामा मोरे कोयलिया बोले हो रामा। चैत मास बोले रे कोयलिया कुहुका बोले कुहुका बोले काली रे कोयलिया। कुहुका बोले काली रे कोयलिया।
एक अंतिम प्रस्तुति है, दादरा है। बस छोटा सा एक दादरा प्रस्तुत करूंगी, भैरवी में।
आप लोगों ने बहुत धैर्य से इस कार्यक्रम को सुना, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और आप सब जो ऑडियंस हैं वही हमारे लिए ईश्वर होते हैं, क्योंकि उनके बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता। और ईश्वर की कृपा, प्रभु, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता सबकी प्रेरणा से और सबके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हम कर पाते हैं। इसके लिए मैं उन सबको नमन करती हूँ। Thank you so much, Rashmi ji. You have such a hypnotic voice and such effortless singing. Wonderful, really. Thank you so much. And thank you, audience. You've been really great. I would now like to invite all our artists of today on the stage, please. I request Professor Samir Khandekar and Professor Arnab Bhattacharya to please come up on the stage. Thank you so much for a wonderful evening today. A huge round of applause for them. Okay, now I request Professors Khandekar and Bhattacharya to please present a token of appreciation, a memento to all our artists. Thank you so much and good night. I think we should thank Jayashri ji also, who conducted the program. Thank you very much, Jayashri ji. she agreed on one phone call and it was done. So she took care of everything. Thank you very much.